from such hazards and environmental stresses is increasing, or the severity of these hazards threats is increasing many folds. And this is particularly happening in hill areas where a lot of developmental activities are going on. And you might have heard that in media, you probably quite often read that there are some people who attribute all these, increased risk from these hazards or these environmental stresses to such anthropogenic activities. But these anthropogenic activities, these developmental activities are very much required for the betterment of the quality of life of our people as well as for the overall development of our country. And moreover, there is, I do not come across any unquestionable, database to support that there is any positive correlation between this kind of disaster risk increase or anthropogenic activities. Nevertheless, no one can deny the fact developmental activities are very much required in our state, just like any other habitable part of the world. It is up to the level that basic facilities are available here for living a quality life, as well as for strengthening the better military establishment. And when there were several news regarding incidences of increased gas subsidence in Hiroshima and our state. Our Honorable Vice Chancellor discussed with us as to how we can resolve these problems. So we can plan a state. That responsibility of this is of the entire state. These issues with real experts in this field who have vast experience and in-depth knowledge of the subject, covering both the aspects of geohazard management as well as sustainable development. Subsequently, I discussed it with my colleagues in the department, and we decided that we should propose a brainstorming session, inviting eminent people from across the country who are aware of such issues. Honorable Vice Chancellor readily accepted our proposal and gave us free hand and enormous support, and because of that, this brainstorming session has been possible today. We then contacted the eminent people who are sitting over here, and we are thankful that all of them made it possible to be with us and to share their views despite their very busy schedule and very short notice. So today we are here to discuss the issues. This brainstorming session, in fact, is going to address two main pertinent questions. Number one, can we plan development of this area in such a way that it doesn't lead to disaster, rather it ultimately results in reducing the risk from disasters? And number two,
how could we plan sustainable of development of this region without putting further pressure on its natural environment and resources, and without increasing the vulnerability, disaster, or geohazard vulnerability of this region. So these are two basic pertinent questions that we all would be discussing here uh, during the next 5 to 6 hours. And we plan to compile the proceedings of this scientific exercise in the form of recommendations to be submitted to the state as well as the central government. We are privileged to have these eminent scientists with us, and I take this opportunity to introduce them to you. We have Dr. Kumaun Rotela. As I told, he is executive director of Uttarakhand State Disaster Management Authority. He is basically a geologist and has been recipient of National Geoscience Award. He has vast experience, and he is looking after the disaster management of this state for the past 2 decades. He especially specializes in capacity building, in disaster risk analysis, and for Professor S.M. Lab, where he's basically a zoologist, but he also specializes in understanding water-induced disasters in Himalaya. He has worked extensively in Nepal, Himalaya, and also in this region of Himalaya. Then we have us Dr. Anand Kumar Pade. He is a very senior geologist who has worked extensively in Uttarakhand and Himachal, Himalaya. And he is actually an expert of terrain suitability analysis for major projects all across the country. We talk about any, commissioning any major developmental project, and he will be there in that team of land suitability analysis. He has also monitored very closely land subsidence in Joshimath area, worked extensively there. He has also submitted some reports pertaining to the management of land subsidence in that area. Then we will be joined by Dr. T.R. Martha. He is an expert of remote sensing and GIS. He uses remote sensing and GIS for managing landslide hazards in different parts of the country. So we are honored to have you all here, sir. We are privileged to have you all here. After this, there will be the inaugural session, as Dr. Ritesh already told, by our Honorable Governor and Chancellor of our University, Lieutenant General Gurmeet Singh Ji. After that, we will have technical sessions. Each of these experts will deliver us a talk for about half an hour. And then in the last session, we will compile all their views in the form of recommendation and submit it to the government. I am seeing that a large part of the gathering consists of young researchers. You are the people who are, observing many things which probably our old eyes couldn't see now. So it's very important for you that you just not only listen to these eminent experts here, but also try to make the sessions interactive. There might be several queries from your side. There might be several observations from your side. So you should try to interact with these experts and give your input in finalizing these recommendations. So with this, I also again welcome you all. And thank you all for being here with us. Thank you so much, sir. So, thank you so much for your address. Our Chief Guest Secretary, Honorable Governor of Uttarakhand, will be joining uh, in a while. So, we are just waiting for his joining.
And as soon as you join, we'll start the program. So in this brainstorming session, as Professor Pradeep Musami sir already informed that we have speakers today. We have some speakers from other universities also. So we have two speakers, Dr. R.K. Sahu sir and Dr. Rupesh Rastogi. I will come from they are from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. Other than some other experts, they will be joining us through online mode, Google Meet link. They will be joining us in the technical sessions. This program is being uploaded university's YouTube channel and Facebook link also. So it is live. It is going live right now, and it is visible through these multimedia platforms. So that can be. So those are not easy. They can from that also. And after that, if you want to have a recap of that, so you can again go through those links of YouTube and Facebook, so you can have these discussions further through these multimedia channels. So as Pradeep sir already told you, speakers today with us, and they are going to share their experiences on the hazards or the things that we are facing. So we are to have our chief guest with us. Our chief guest, Captain General Gurmeet Singh, PVSM, UISM, AVSM, BSM retired, Honorable Governor of Uttarakhand and Chancellor of Kumaun Nainital will join us. I will come, son, and request you all to please stand up and read the welcome. जनगण दीनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ शिष्य मांगे गाहे तब जय गाथा रम दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय जय हे जय हे जय 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 हे. Please take your seats. I'd like to request Professor M.K. Jyoti, Honorable Vice Chancellor, Kumaun University, Nainital, for the welcome address. Honorable Vice Chancellor, sir. Start. And Chancellor of our university, Lieutenant Governor Gurmeet Singh ji, eminent scientists on the dais from different parts of the country, my colleague, media persons, and my dear researchers. On behalf of Kumaun, I welcome you all in this brainstorming session on geohazard risk assessment and sustainable development of Uttarakhand, Himalaya. We all are delighted to be all of us with us as key guests in this program. As the theme of India's G20 presidency, Vasudhaiva Kutumbakam and One
one family, one future, closely ties with disaster management. We all know that the entire Himalaya is quite vulnerable to different types of geological hazards and persistently brings the risk of big disasters. Almost everyone suffers heavy loss of life and property from one the natural disaster. If we take the examples from our state, we have suffered loss of several lives and huge damages from these disasters, such as 1991 Uttarakhand, 1998 Malparam slide, 1999 and 2020 in different parts of the state. But these are just a few disasters that cause heavy loss of life and property. Besides this, there are losses in constant threats to our lives, properties, and infrastructures in several parts of the state. Recent events of race, subsidences in Josimat, chronic country, Uttarakhand, Missouri, Pori, and many places in several stretches of many roads pose a serious risk of heavy devastation in future. As we know that Challenge district of Uttarakhand is one of the most disaster-prone district of Uttarakhand. At the same time, Challenge district houses one of the most Hindu and Sikh shrines, Buddhist and Hindu side. Also, sports destination include olive and valley of flowers. The district is therefore visited by pilgrims, tourists, and adventure enthusiasts in large number, which enhances the risk of hazards to which the district is exposed. Josimat is in this destination and Josimat is starting to subside at a fast pace in first week of January 2023. I must share that at Chancellor and University not only believes in the but also very concerned about it. For nation and valuation in our youth and recently launched a museum in Europe. Honoring in independence and conditions, but at the same time, he always emphasizes upon science and technology and activities and methods for the benefit of our society. I would also like to say that honoring raised the issue of Josimat when I met him in Lalgan, Nainital during the last month. He has always been quite concerned about all these issues that are directly related to the public of our state. And always the economy of the people of our state. He was deep in heart to see the eyes and sad faces of the residents of Josimat, whose homes were damaged due to land subsidence. He stressed about still is illness and with the plans, the district administrators, governments, and society to work out
strategies for disaster risk and development of a state. Many of universities, geology department, and are to organize this brainstorming session to discuss the intelligent issues of development and geological management in our state. And the geology department works hard to make it possible within a very short period of time. Sir, sir, we have invited eminent scientists from different parts of the country who have vast experience and deep knowledge of the geology, geohazard scenario, climate, weather, demography, culture, tradition, social, economic, etc. of a state, which are essentially required to form and future disaster management policy for developing a specific region. I am thankful to all of them for making it possible to be present in this program despite the busy schedule and in a very short notice. All these scientists will discuss the issues of our state and recommend measures for sustainable state so that the misery of people and they live a better and safe life. I am certain that the scientific discussion and debate in the program will result in recommendation to achieve sustainability of better activities in our state that is prone to geohazards. I wish the program a grand success and may I request our own to please bless us with your valuable words. Thank you very much. I request Honorable Sir to kindly address the Government. Jai Hind. At the outset, I must congratulate Vice Chancellor Professor N.K. Joshi, G, Department of Geology, and all the stakeholders at the Kumaun University for realizing the need for an urgent and detailed discussion on geohazard risk in Uttarakhand region. It's a pleasure to be taking in this conclusive convention amidst eminent scientists, academicians, planners, and young researchers. With all the abundance of flora and fauna, our state of Uttarakhand is prone to various geohazard risks owing to its hilly terrain and topography. Soil erosion, steep slopes, and seismic activities continue to increase the risk of landslides in the area, especially during the monsoon season. The devastation caused by 2013 flash floods still lurk in the memory. Being in a seismic area, we are susceptible to earthquakes and rock falls. The latter, which is also due to illegal construction and mining activities. Our Devbhumi is home to several glaciers which attract tourists from across the world. But we also have to remember that climatic conditions are adversely affecting these, resulting in glacier lakes, outbursts, floods, which in turn causes loss of life and infrastructure. To grow as a progressive nation, development is necessary. And to mitigate the risk associated with the geohazard, our state of Uttarakhand needs to have proper land use planning, early warning systems, and emergency measures in place. At no cost should construction be allowed in vulnerable areas.
To assess and accentuate these perils, we need a systematic and comprehensive three-pronged approach. Firstly, we need to identify the risk involved. Assessment by the experts, historical data mapping, and analysis needs to be deliberated upon to understand the threat to the topography as well as to the inhabitants. Secondly, alignment in preference of priority. What is the impact on human life, infrastructure, and the environment? Who is it affecting the most? These are the questions that need to be answered before moving on to the third vital step. The third step involves all the stakeholders in collaboration with the government, community, and private sector organizations. And ongoing monitoring and evaluation of the risk needs to be ascertained at various intervals. With the use of technology, we can safeguard ourselves and our homeland. When we speak of the development, we include infrastructure and efficient use of natural resources. The Indian Himalayan region spans across 7 states and union territories: Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Sikkim, and finally Arunachal Pradesh. This entire belt has witnessed an exponential rise in infrastructural facilities, roads, dams, tunnels, canals, and so on. With the new proposed highway that increases the connectivity to the NCR under 3 hours, with the advent of hydroelectric projects and the rampant construction across the cities of Uttarakhand, especially Dehradun, there has been a tremendous rise in environmental concerns, water and electricity shortages, and deforestation. The debate continues on both sides. Progress and development versus environmental concerns and risks. There is no denying that our geographical and meteorological conditions do not allow for a very conducive ease of construction. But that in no means implies that it is not possible. Always remember, where there's a will, there's a way. We have to be solution-oriented. We have spoken of the risk involved, and now that they are identified, we need to work towards the sustainable growth of our region. We need to work on a holistic and sustainable approach that includes dimensions of environment, society, and economy. Some key strategies to keep in mind while we implement this. These could be adoption of renewable energy and the green infrastructure. Our Devbhoomi has a significant potential for use of hydropower and solar energy. By extensively using these, we can reduce our greenhouse gas emissions and dependence on fossil fuels. Promotion of ecotourism and access to housing and healthcare. And I would say the healthcare will not only boost economy in the hill areas, but also ensure that regions' natural and cultural resources are kept at optimum use and employment avenues are generated. This will also greatly help in reverse migration, which happens to be one of my 5 main missions I'm working on for the state of Uttarakhand. I want to see an active community participation. The people of the state must be taken into consideration and involved in the discussions pertaining to sustainable development and initiatives. We need to grow together, and for that, the government, along with the private organizations and citizens, all need to have one common goal: the progress of Uttarakhand. The world over, we are continually seeing architectural marvels over oceans, mountains, and cities. And I believe that our country is home to some of the most acclaimed engineers, scientists, researchers, and academicians. I can see in this gathering, we have many of you. Together, we can sink in our energies, our ideas, and build upon a nation so great and so advanced
that every Indian born henceforth will aspire to study, work, and live in India. I congratulate you, each one of you, once again for the innovative thoughts to bring about a brainstorming session to highlight and execute development hazards in our region. I'm certain that with the proper scientific planning and analysis, we will be able to chart out an economically viable and environmentally safe growth path for Uttarakhand, thereby making it a safe and happy place to reside in. I wish you all very best. And I'm so happy that this event is happening when at the same time we are having a G20 meeting of the chief scientific advisors. They come from the world over, and we're also talking on the same plane on a scientific platform to carry out a research and find a solution. So I would recommend to each one of you to be on the pursuit of excellence, to be on the pursuit of finding solutions to the challenges and the problems that we have in front of us. Jai Hind! Honorable Chancellor, sir, we are truly honored by your presence and inspired by your words. Your address has been enlightening and it has given us a new perspective on the theme. Thank you, sir. Now I'd like to invite Professor Pradeep Gulfani, head of the Department of Geology, Commerce, and Nainital, to propose the following documents. Honorable Governor of Uttarakhand and Chancellor of our university, Lieutenant General Gurmeet Singh Ji, we are honored to have you with us in this inaugural session of this program. We are thankful to you for your thought-provoking address and blessings, and assure you that the issues that you have raised will be thoroughly deliberated upon, discussed, and debated in this brainstorming session. And we will certainly come up with some sound recommendations to ensure sustainable development of our state. I also thank Honorable Vice Chancellor of our university, Professor N.K. Joshi, for his guidance and enormous support, because of which this brainstorming session could be possible today. I thank all the eminent experts who are present here with us despite their busy schedule. I thank Dr. Divya Upadhyay Joshi and Dr. Ritesh Shah and entire HRDC team for making these logistic arrangements in HRDC. I thank Dr. K.K. Pandey, in charge ERP cell, for making arrangements, IT arrangements for this brainstorming session. I thank all the members of Kumaun University family who have been actively involved in this, in organizing this brainstorming session. And last but not the least, I thank representatives of media who are here to cover this entire session and then disseminate the information among masses. So I once again thank you all. Thank you so much. Jai Hind, sir. Jai Hind. Thank you, sir. And I again request you all to please stand up. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नाम वे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, sir. Now I'd like to request you all to kindly join us for high tea, and high tea will be served in a while. So please join us for high tea. And with permission of Honorable Vice Officer, we conclude this meeting session. Okay. And we will technical start for our first technical session. So first technical session will start at 11:45. So please take your seat in the hall for technical session. The experts will deliver their talk on the various aspects of urgent results. Thank you. basin with special reference to slope instability and dwindling water resources, and that is again a very important aspect, because the water resources, they are very important, and the water is the elixir of life, and without water we cannot think of life. So in the first session we'll be having these three topics. Then we'll take a break for lunch, and after lunch we'll have again three sessions. The first session after lunch will be Nainital, disaster loom large, looms large, and it will be delivered by Professor B.S. Kotalia, sir. Then challenges in predicting extreme weather events in Himalaya, implication for disaster management and sustainable development. It will be discussed by Dr. Anand Sharma, sir. Then landslide localization in regional landscape and shallow subsurface site response, understanding from Joshimath subsidence by Dr. E.K. Pandey, sir. Then after tea break, this session will be online. So Dr. A.K. Pandey sir will join us through Google Meet. Then we'll have a tea break, and after tea break, we'll have two resource persons, and they will be online. It will be on satellite data and geospatial model for landslide disaster management by Dr. T.R. Martha, and risk assessment and sustainable development of Joshimath, present status and future challenges by Professor S.N. Lau. Then there will be preparation of recommendations, and finally we will conclude this brainstorming session. For this session we have two rapporteurs, Dr. Manisha Sangudi and Dr. Molly Shri Joshi. So rapporteurs will take note of the sessions and submit their brief report after the deliberations. So I'd like
with permission of Honorable Vice Chancellor, sir. Shall we start, sir? Thank you, sir. So first of all, I'd like to invite Dr. Piyush Rotela, sir. And sir is going to deliver his talk on traditional source and disaster management practice or practices of people of Uttarakhand. Organizers, I'm especially thankful to Honorable Vice Chancellor and Joshi ji, Pradeep Goswami ji for inviting me, giving me this opportunity to talk. Say, there are a number of students, large gathering of students. So many a times we tend to say attribute everything to nature. Nature has been doing what it has been doing. The most disasters, they are our own creation. And disasters never happen abruptly. Earthquake आपको लगता है कि अभी आया 2 सेकंड के लिए और पूरा सब जैसा आपने अभी सीरिया में देखा होगा या दूसरी जगह. But it's our own creation. I'll just give you one example. 2003 में 2 earthquake हुए थे. 22 दिसंबर 2023 को there was a major earthquake in Santa California, San Simon earthquake बोलते हैं, and magnitude was 6.6, depth was 16 kilometers, 2 people died, 4 were injured. Just 3 days back after it, on 26th of December, on 26th of December 2003, there was another earthquake in Iran, bomb earthquake. Its magnitude was coincidentally similar, 6.6, and the depth was same, 15 kilometers. So the energy, yeah, please. Energy release was the same. The depth was the same. So the impact should have been the same. But in bomb earthquake, the people, almost 35,000 people died. 2 lakh were injured. 90% of the infrastructure surrounding bomb was destroyed. So neither was California rendered disaster resilient overnight. एक दिन में कुछ नहीं हुआ. और नहीं आपका जो बम था ईरान था वो एक दिन में वल्नरेबल हो गया. It's the people, policies and others which create disasters, and so most disasters, if I don't say all the disasters, they are man-made. They are slowly say happening. They are processes, not events. तो आप सब रिसर्चर्स हैं, इस विषय पे सोचिएगा. बात करने के लिए मैं यहाँ पे बात करूँगा कि उत्तराखंड में इस क्षेत्र में लोग क्या कर रहे थे, कैसे हो रहा था, और नेक्स्ट नहीं कहूँगा. आप सब लोग जियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, will not take much time. These are the causes. Yeah. Because of evolutionary history of the terrain, जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जैसा आपने कहा कि इंडियन प्लेट
अंडर थ्रेस की कोलाइड की उसकी वजह से हमारी जो रॉक्स हैं बड़ी वनलेबल है, प्रोन टू इरोजन है। अभी भी नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट चल रहा है, तो भूकंप के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। बारिश यहाँ पे अभी शर्मा जी हैं, वो बताएंगे कि बारिश उत्तराखंड में वेस्टर्न हिमालय में सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू हिमाचल, जे.एन.के। और उसी के साथ हमारा इवोल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है, जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन। ये गौना का चित्र है, अगर आप देखेंगे 1934 से 2012 तक, तो जहाँ पर लेक थी वहाँ पर आपका प्लेग्राउंड बन गया। और कई आपदाएं हैं जिनसे हम रोज दो चार होते रहते हैं। We are prone to landslide, earthquake, flood, flash flood and others. अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बात करेंगे, our objective is just to show कि उत्तराखंड के लिए आपदाएं कोई नई चीज नहीं है। आपदाएं यहाँ पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। और यहाँ के जो लोग थे वो आपदाओं को समझते थे, उनके कारणों को समझते थे, उनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। विरही गंगा में 6 सितंबर 1893 को एक लैंडस्लाइड हुआ। बड़ा लैंडस्लाइड था, जिसकी वजह से अलकनंदा का जो प्रवाह था वो कम हो गया। पानी जब कम हुआ तो इस क्षेत्र में उसमें जो टीएच हॉलैंड हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट सर्वेयर, इनको भेजा गया कारणों का पता लगाने के लिए किस वजह से अलकनंदा का पानी कम हुआ। इन्होंने सर्वे किया। इन्होंने बताया कि एक लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से लेक बन गई है। और लेक काफी बड़ी थी, 3 किलोमीटर तक फैली थी, 150 मीटर गहरी थी। और इन्होंने कहा जिस दिन ये लेक टूटेगी उस दिन बहुत बड़ी बाढ़ आती है। तो 1893 में पहली टेलीग्राफ लाइन हिंदुस्तान में 1884 में कलकत्ता आगरा के बीच में बिछी थी। उसके 10 साल बाद एक डेडिकेटेड टेलीग्राफ लाइन वाज सेट अप फ्रॉम नाइनीताल टिल हरिद्वार, including Chamoli, and one army official, Lieutenant Shank, was given the responsibility of taking daily observations, sending it. Based upon this, उन्होंने कहा कि 24 अगस्त 1894 को ब्रीच होगा। So जो पिलग्रिम ट्रैफिक था that was diverted। 6 ब्रिज हुआ करते थे, सस्पेंशन ब्रिज चमोली और हरिद्वार के बीच में, ऋषिकेश के बीच में, उनको खोल के अलग रखा गया। लोगों को लो लाइन एरिया से हटाया गया। उन्होंने जो बताया था कि 24 को होगा, उसके एक दिन बाद ब्रीच हुआ। ब्रीच वाज एक्चुअली टुक प्लेस 1 डे लेटर। काफी पानी एक साथ रिलीज हुआ। देयर वाज अ मेजर फ्लैश फ्लड on 15th of August 1894, and all the low-lying areas till Haridwar were devastated, but there was no life loss. Life loss was averted due to timely warning and नैनीताल आप सब जानते हैं। नैनीताल 1840 के करीब बसा, लैंडस्लाइड वगैरह यहाँ होते रहे। 18 सितंबर 1880 को एक बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ। शेर का डाला लैंडस्लाइड बोलते हैं, ऊपर वाला इलाका है, लैंडस्लाइड हुआ। 40 साल हुए थे शहर को बसे हुए, और इस लैंडस्लाइड में 151 के करीब लोग मारे गए, जिसमें से 43 वो यूरोपियन। इस लैंडस्लाइड के 4 दिन बाद कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ Renze, Sir Renze, who was then the commissioner. यहाँ ब्यूटी ये है कि इस कमेटी में जियोलॉजिस्ट भी थे, दूसरे लोग भी थे। इस कमेटी ने 19 दिन में, मात्र 19 दिन में पूरे इलाके का सर्वे किया, अपनी रिकमेंडेशन दी। उसने कहा कि यहाँ पे जो रॉक हैं
वो काफी फ्रेजाइल हैं, वेदर्ड हैं, और इनके अंदर पानी का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसको उन्होंने कहा कि ये दो कॉजेज हैं, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कहा, जैसे हम जियोलॉजी में कहते हैं अवॉइडेंस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, उन्होंने कुछ एरियाज को शेयर कर डाला जो हिल है उसमें एयरमार्क किया कि यहाँ पे कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी का इन्फिल्ट्रेशन कम करने के लिए जितने फ्लैट ग्राउंड्स हैं उनको बैन किया गया, कोई गार्डनिंग नहीं होगी, कोई टेनिस कोर्ट नहीं होगा, कोई इस तरह की चीज नहीं होगी। तो उसी के साथ साथ उन्होंने रेन वाटर डिस्पोजल की बात की। जितने नाले आज आप देख रहे हैं, चाहे बड़ा नाला हो दूसरे हो, वो इस रिकमेंडेशन पे बने हैं। उन्होंने कहा पानी जल्दी से डिस्पोज हो जाए। उसी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उस समय 1880 में उन लोगों ने रिकमेंड किया कि स्लोप की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर कहीं सडन ज्यादा मूवमेंट होता है तो लोगों को वार्निंग दे पाए या पहले बता पाए। तो सर्वे पिलर्स वर सेट अप, थियोडोलाइट से ऑब्जर्वेशन लेने के लिए ऑब्जर्वेशन वो बनाई गई। और आप अगर जो यहाँ पे रिसर्चर्स हैं, मैं अर्ज करूंगा कि आपके वहाँ जो म्युनिसिपैलिटी है उसके पास बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिश टाइम के, उनको आप कंसल्ट कीजिए, काफी कुछ आपको जानने सीखने को मिलेगा। 1912 से लेके 1995 तक का आपको 1997 तक का 1997 तक का कंटिन्यूअस रिकॉर्ड वहाँ पे हर साल में कितना मूवमेंट हुआ वो आपको मिलेगा। और उन लोगों ने उस समय एसओपीज वगैरह बनाई थी कि किस तरह से वार्निंग दें। और 97 में पीडब्ल्यूडी वाज रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग दिस observations and others. Some trees were obstructing the line of sight. तो पीडब्ल्यूडी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लॉपिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी, जैसा हमारे वहाँ सरकारी डिपार्टमेंट में होता है। फॉरेस्ट ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो 1997 में अब्रप्टली हमने इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया। उसी के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दुर्गापुर पावर हाउस आपने मिटिगेशन के लिए बनाया, परंतु नैनी लेक का ज्यादातर पानी हर रोज 81 लाख लीटर पानी दुर्गापुर पावर हाउस जाता था। और दुर्गापुर पावर हाउस 1922 में 1 सितंबर 1922 को ऑपरेट होना शुरू हुआ, और 74 में इसमें कुछ गड़बड़ शुरू हुई तो हमने इसे बंद कर दिया। आज अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे हमने उसे फ्लैट करके वहाँ पे जेएनयूआरएम की कॉलोनी बना दी है। तो जितना पानी, अगर हम कहें 81 लाख लीटर पानी पहले सीधे पाइप के द्वारा जाता था, वो बलिया नाला में नहीं बहता था। तो आप लोग जो यहाँ पे रहते हैं, बलिया नाला की प्रॉब्लम को दुर्गापुर को बंद करने से जोड़कर आगे रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसका कितना इम्पैक्ट था। तो ये रहा। उसी के साथ यहाँ 1 सितंबर ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। 1 सितंबर 1803 लखनऊ तक था, और इसके जो शॉक्स फील किए गए वो कलकत्ता तक फील किए गए। ये जगह मैंने इसलिए बताई जहाँ पे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, बाकी जगहों का हमें पता नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। और इसका जो मैग्नीट्यूड है 7.5 बताते हैं, और इसका जो एपिसेंटर है वो उत्तरकाशी के पास था। काफी मंदिर वगैरह इससे प्रभावित हुए थे, नुकसान हुआ था, उनका दोबारा पुनरुद्धार हुआ। उसी के साथ साथ इससे पहले की जो 1803 के पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। हम लोग हिंदुस्तान में हम कहानी लिखने में बहुत अच्छे हैं। We were good storytellers. We wrote vivid stories. जितनी vivid stories हमने लिखी शायद ही आपको कहीं मिल पाएगी, पर we were not good historians. हम हिस्ट्री राइटिंग नहीं करते थे, तो हमें ये पता नहीं है कि किस समय क्या हुआ। अगर हमें चंद्रगुप्त के बारे में जानना है तो हम
वायुयान की बात करते हैं, हर्षवर्धन के बारे में जानना हो तो इंसान की बात करते हैं, बात की बात हो तो अल्बरुनी या दूसरे के रिकॉर्ड दिखाते हैं। हमारी लिखी हुई हिस्ट्री नहीं है, मगर कहानियां हमने बहुत अच्छी लिखी हैं। आपको महाभारत से विविध कहानी कोई नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आप जो फिल्में देखते हैं उसमें एक दो कैरेक्टर होते हैं, उसमें पूरी कहानी निपट जाती है। आप महाभारत में देखेंगे तो कैरेक्टर का कैसे किया होगा अगर आप सोचेंगे, आप कंप्यूटर से भी नहीं कर पाएंगे। आप कंटिन्यूटी बनाए रखना। कर्ण अलग था, शकुनी अलग था, कृष्ण अलग था, है ना, अर्जुन अलग था। सबके डिस्क्रिप्शन उस डिटेल तक थे कि किसका धनुर्धर तो बहुत थे, मगर अर्जुन से कभी नहीं कहा कि धनुष उठा, उसने हमेशा गांडीव उठाया, ठीक है ना। कृष्ण ने फूका तो पांचजन्य फूका। तो हर चीज इतनी विविध है, उतना विविध आपको कोई कहानी नहीं मिलेगी, कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं मिलेगा। तो हम लोग हिस्टोरियंस नहीं थे, तो उससे पहले का हमें पता नहीं है। परंतु और दूसरी चीज जो साइकोलॉजी में बोलते हैं फेडिंग इफेक्ट बायस, हम बुरी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपसे याद करने को बोलेंगे बचपन में कोई घटना याद करो, आप अच्छी चीज याद करो। किसी से मिलना हो सकता है, किसी का जन्मदिन हो सकता है, कोई तोहफा हो सकता है। बुरी चीजें हम जल्दी भूलते हैं इसलिए कि हम आगे बढ़ पाएं। वो हमारा प्रकृति का इवोल्यूशनरी हमको गिफ्ट है कि हम बुरी चीजों को जल्दी भूलते हैं। हमारे साथ कितना ही बुरा हो जाए, हम साल भर में 2 साल में जो नॉर्मल बोलते हैं आपके साथ बहुत अच्छा होगा, तो आप 1 साल में दोबारा नॉर्मल पे आ जाओगे। बहुत बुरा होगा तो 2 साल में फिर वहीं पहुंच जाओगे आप जहाँ पे शुरू किया था। तो आप बहुत देर तक चीजों को लेके नहीं बैठते हो। जैसा हम जियोलॉजी में कहते हैं प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, तो जो आज हो रहा था वो पहले भी हो रहा होगा। जिस तरह की आपदाएं आज आ रही हैं वो तब भी आ रही होंगी। जिस चीज की आज पहाड़ों में कमी है, पानी की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, वो तब भी रही होगी। परंतु लोग यहाँ रह रहे थे और उन्होंने यहाँ रहने के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, वरना वो इस इलाके में नहीं रहते। जगह की कमी नहीं थी, छोड़ के दूसरी जगह रह लेते। तो पानी कहीं भी बसने के लिए, रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। पानी के बिना, पानी बिन सब सून बोलते हैं। तो आप जो हम कहते हैं कि चंद्रयान गया तो उसने पानी के एविडेंस देखे, तो इवोल्यूशन पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। जो लोग पैलेंटोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि जहाँ पे पानी था, है ना, वो क्रेटर्स में, वहाँ पे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। तो और पानी हमें लगता है बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे टोपोग्राफी की वजह से पानी बहुत जल्दी बह जाता है, हम यूज नहीं कर पाते। हमें लगता है हिमालय से नदियां निकलती हैं, बहुत पानी है, परंतु ग्लेशियर से जो रिवर निकलती हैं उनका पानी बरसात में और गर्मियों में पीने लायक नहीं होता है। बरसात में जो ग्लेशियोलॉजी पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि पूरा सिल्ट रोड जो है ग्लेशियर से आता है, और बरसात में चारों ओर से बारिशें आती हैं। तो शुरू में लोगों ने जो सीपेज हैं उनको यूज किया, जो सीजनल स्ट्रीम्स हैं जो ग्लेशियर से नहीं निकल रहे हैं उनका यूज किया और पानी का उपयोग किया। हम लोग धारा बोलते हैं, हमें लगता है बड़ा इजी है कि पानी है, आपने कुछ लगाया, और मगर पानी जो रिसता है बूंद बूंद करके रिस रहा है, इट डजंट ट्रिकल डाउन लाइक ए यूजेबल फ्लो। तो लोगों ने धारे को जो डेवलप किया है, एक अंडरग्राउंड कहीं पे उन्होंने चैम्बर बनाया है जिसमें पानी जमा होता था, फ्लो करने के लिए थ्रू स्टोन था, नीचे गंदगी ना हो तो नीचे पत्थर वगैरह की बात की। पास पड़ोस में कोई अच्छा पेड़ देखा, उसको नर्चर किया, उसका एक चबूतरा सा बना दिया, वहाँ देवी देवता आपने बिठाए। कहीं ना कहीं उसकी साफ सफाई, दूसरी चीजें बनी रहे, उस तरह का इंतजाम किया। इसके बाद भी इतना सब किया, धारा निकल गया, कुछ कर लिया, परंतु पानी जब जाड़ों में, जिस सीजन में, जिस साल में जाड़ों में कम बारिश हुई, पानी कम हो जाता था, कुछ धारे सूख जाते थे, तो लोगों की चिंता का विषय था। तो उन्होंने, जो हम हाइड्रोलॉजी आज बात करते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने कई कुछ चीजें हाइड्रोलॉजी के बेसिक्स थे वो सीखे।
पहली चीज कि पानी ऊपर से नीचे बहता है। आप हंस क्यों रही हैं? पानी ऊपर से नीचे बहता है। वैसे हमारा आदमी कह रहा है तो हम उससे बड़ी उससे देख रहे हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है। जब न्यूटन ने कहा कि सेब जो है नीचे गिरेगा, उस पे हमने शक नहीं किया, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा पानी ऊपर से नीचे बहता है। नीचे जो पानी निकल रहा है वही पानी है जो ऊपर जमीन के अंदर जा रहा है। जितना ज्यादा पानी अंदर जाएगा उतना ज्यादा हमारा नीचे प्रोडक्टिव होगा। अगर हम कुछ ऐसा करें कि पानी ज्यादा अंदर जाए तो हमारा ये ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। इस तरह की चीजें उनकी कुछ समझ में आई। उसके बाद उन्होंने पहाड़ में पानी को ऊंचे स्तर पे रोक पाना इज ए चैलेंज। यू कैन नॉट स्टॉप वाटर इन अ स्लोपिंग लैंड। तो उन्होंने ऊपरी स्थानों पे, जिसे आज हम साइंटिस्ट लोग कहते हैं रिचार्ज पिट्स बनाने शुरू किए, जिसे हम चाल या खाल कहते हैं, ताकि पानी ऊपर रुका रहे और उसे अंदर जाने का मौका मिले। उसी के साथ हम लोग यहाँ पहाड़ों में बोलते हैं कि बांज के जंगल में अच्छा पानी होता है, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं बांज की जड़ें जो हैं पानी सोख लेती हैं, रोक लेती हैं। बांज के जंगल में चले हो आप लोग? बांज के जंगल में लिटर, काफी लिटर होता है, थिक फॉलिएज लेयर इज देयर व्हिच एक्ट्स एज अ स्पंज। जब भी बारिश का पानी पड़ता है वो पानी को सोख लेती है और वहीं पे पानी काफी समय तक रहता है, उसे जमीन के अंदर जाने का मौका मिलता है। चीड़ में ऐसा नहीं होता, तो हमें कहते हैं चीड़ में पानी नहीं होता, कि पानी नहीं रोक पाता है। तो उन लोगों को ये पता चल गया कि फॉरेस्ट अच्छा होगा तो पानी अच्छा होगा। उन्होंने ऊपरी जो पहाड़ का ऊपरी इलाका है, उन्हें मालूम था कि ऊपर से पानी जाएगा तो नीचे हमारे सोते अच्छे रहेंगे। उन्होंने ऊपर देवी देवता के मंदिर बनाने शुरू किए। पास पड़ोस का जो जंगल था वो देवी देवता को समर्पित करना शुरू, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस तरह की चीजें आपको जो हम सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं, दूसरी चीजें हैं, यू विल फाइंड इट एट मैनी प्लेसेस। कुछ जगहों पे टोटली बैंड है, वहां से रिसोर्स ले लेना। कुछ जगह पे रोटेशन पे करते हैं, कुछ जगह एक साल एक से लिया, एक साल दूसरे से लिया। और कुछ जगहों पे आप रिसोर्सेज ला सकते हैं मगर इम्प्लीमेंट्स यूज नहीं करेंगे। हसिया, दराती, कुल्हाड़ी वो यूज नहीं करेंगे, हाथ से जितना लाते हैं वो ला सकते हैं। और इसी तरह जो ऊपर के इलाके हैं, हमारे जो अल्पाइन पास्चर्स हैं, जिसे बुग्याल बोलते हैं हमारे वहाँ पे ब्रह्म कमल खिलता है, जो कि कई हमें रिचुअलिस्टिक उसके लिए चाहिए होता है। तो वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं या जो लोग रहते हैं वो हाथ से नहीं तोड़ते हैं ब्रह्म कमल को। दे नील डाउन और मुंह से तोड़ते हैं जैसे जानवर तोड़ रहा हो, ठीक है ना। इट सिंबलाइजेस कि ये जो काम कर रहा है वो कोई आदमी नहीं कर रहा है, जानवर कर रहा है, जिसमें बुद्धि नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे ही व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता, देवी उससे नाराज नहीं हो सकती। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? चलिए।
शादी के बाद जो संस्कार है, बहू को लेके जाते हैं पानी की पूजा करने, तो दीज आर सिमिलर्स, ठीक है ना। जिस तरह से पानी जीवन दे रहा है, निरंतरता का प्रतीक है, उसी तरह से जो लड़की हमारे परिवार में आ रही है वो परिवार को जीवन दे, पानी का आशीर्वाद लेके उसी की तरह जीवन दे, आगे लेके जाए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मोटिव्स और ये बड़ी, हम इसे मजाक में ले सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग वाज a major discovery without which habitation would have remained restricted to areas where water is freely available. दुनिया में चाहिए फूड सिक्योरिटी इज अ मेजर इशू, तो हमारे लोगों ने ऐसी फूड वैरायटीज, ऐसी एग्रीकल्चर वैरायटीज डेवलप की जो कि पानी का उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर पाए, वो उखड़ धान हो, मंडुआ हो, कोदो, झुमरा, जो भी आप कहते हैं। लैंड होल्डिंग पैटर्न हमारा इस तरह का है। आज मुझे लगता है कि सारी जमीन मेरी एक जगह होती तो बहुत अच्छा होता है, परंतु हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जानबूझ के इस तरह का लैंड होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया। गांव में आप देखेंगे कितना ही समृद्ध परिवार ना हो, उसके सब सेरे नहीं थे, कुछ सेरे थे, कुछ उखड़ थे, सेरे भी अलग अलग जगह पे थे। वो इसलिए किया था कि एक जगह किसी वजह से अगर फसल खत्म होती है, खराब होती है, तो दूसरी जगह से हमें एश्योर्ड रिटर्न्स मिल पाए। उसी के साथ टेरेस फार्मिंग की कुछ इनोवेशंस किए। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, कितना जानते हैं। एक जो आज हम एग्रीकल्चर में बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग होनी चाहिए, और दूसरा है क्रॉप रोटेशन। दो की बात करते हैं तो हमारे लोग जो 12 नाजा बोलते हैं, हमारे वहाँ 12 डिफरेंट वेराइटीज को एक साथ उगाते थे, जिसकी वजह से वर्टिकल स्पेस का अच्छा यूज होता था। वन प्लांट वेराइटी यूज टू मेक फेवरेबल कंडीशंस फॉर अदर्स, न्यूट्रिएंट बना रहता था, है ना, सॉइल इरोजन इसकी वजह से कम होता था। उसी के साथ जो दूसरी हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की, यहाँ शादी करके एक प्रथा है जिसमें पूरे गांव की जमीन को 2 भागों में बांट देते थे, और जाड़े के सीजन में एक भाग फैलो छोड़ देते थे ताकि जानवर उसमें चर सकें। उससे उसको मैन्योर भी मिलता था, और 2 साल में 3 फसलें लेते थे। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट चाहे कंस्ट्रक्शन हो, ट्रांसप्लांटेशन हो, हार्वेस्टिंग हो, उसमें रहता था। और एनिमल स्पीसीज हैं, हमारा ब्रोइंग है, प्रिजर्वेशन की कई टेक्निक्स हैं ताकि खाना हमारा, अभी भी आप गांव में जाएंगे तो नींबू वगैरह लोग जमीन में खड़िया देते हैं, बोलते हैं हमारे वहाँ ना, कि वहाँ वो बचे रह पाए। आप अपर हिल्स में जाएंगे तो इवन मीट है, दूसरी चीज़ें हैं, वो सुखा के यूज़ करते हैं। वैल्यू एडिशन की कई चीज़ें हैं। और इन्होंने पानी के बारे में काफ़ी कुछ किया, परंतु उन्हें ये भी मालूम था कि अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो लैंडस्लाइड आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। तो एक चीज़ आपने देखी होगी, जो जियोलॉजी वाले हैं, पानी आपको मिलेगा स्लोप ब्रेक के बाद मिलना शुरू होगा। सीपेजेस जो है स्लोप ब्रेक पे मिलेंगी या नीचे मिलेंगी। तो हमारा पानी मिडिल स्लोप्स पे था या लोअर स्लोप्स पे था, खेती भी मिडिल स्लोप्स पे और लोअर स्लोप्स पे थी, परंतु लोग बसने के लिए ऊंची जगहों पे गए। रोज पानी और खेती के लिए वो 2-4-5 किलोमीटर चलते थे। दे यूज्ड टू वॉक। हमारी तरह नहीं था कि सड़क के किनारे घर चाहिए, है ना। तो उन्होंने, उनको मालूम था कि ऊंचे इलाके में लैंडस्लाइड भी नहीं होगा, बाढ़ भी नहीं आएगी। So they preferred safety over comfort. उसी के साथ उन्होंने कुछ जगहों पे, आप कालीमठ के ऊपर चले जाइए, रांची में चले जाइए, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस और जगहों का हो। They could identify places which were vulnerable to landslides, and they constructed jungle ghouls on the higher reaches of those habitations to drain out excess rainwater directly into main streams, ताकि जो पो वाटर प्रेशर है वो एक थ्रेशोल्ड के अंदर बना रहे और नीचे वाले हैबिटेशंस आपके सेफ रहें। उसी के साथ जो दूर दराज के, उनको मालूम था खेतों में अगर पानी ज़्यादा जमा होगा
तो स्लाइड कर सकता है। दूर दराज के जो खेत थे अनबंडेड थे, सीजनल माइग्रेशन था कुछ जगहों पे। अब यहाँ भूकंप आज भी आ रहा है, तब भी आता रहा होगा, और भूकंप सबसे बड़ा चैलेंज है, आज भी है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ कई बार पिथौरागढ़ में या अल्मोड़ा, नैनीताल वालों को गाय बहाई ये लगता है कि यहाँ भूकंप नहीं आएगा, आएगा तो उत्तरकाशी में आएगा या चमोली में आएगा। जो देहरादून में रहता है उसे भी ये लगता है कि हम तो देहरादून में रह रहे हैं, कैपिटल है, यहाँ क्यों आएगा ये। मरने के लिए उत्तरकाशी वाले बच्चे हैं, चमोली वाला है, उसको भूकंप की जरूरत नहीं है। वैसे ही हम जो ताश के पत्तों का खेल खेलते थे ना, थोड़ा सा आप हिलाएंगे नीचे आ जाएगा। हमारे वहां in this entire terrain, say Kumaun Garhwal, you will not find a single traditional house which is single story except for छानी, काव शेड को छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये, हमारी दोनों भाषाओं में 4 मंजिलों के लिए अलग अलग शब्द हैं। हमारे वहां ये नहीं कि पहली माल दूसरी माल, ठीक है। गोट है, गोट, चाक, पान, छाछ, ठीक है, 4 अलग शब्द हैं। इसी तरह गढ़वाली में कोटी, मजवा, बॉन्ड, बरार शब्द किसी भी भाषा में तब आएगा जब उसकी रोज जरूरत हो। तो यहाँ के लोग मल्टी स्टोरीड हाउसेस बना रहे थे। तो सवाल यह है कि अगर वो नहीं जानते, अभी हमने बात की कि 1803 में भूकंप आया था जिसकी वजह से आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, दिल्ली तक नुकसान हुआ, परंतु यहाँ के जो घर थे वो खड़े रहे। तो सवाल यह है कि उन्होंने भूकंप सुरक्षा के 5 नियम बनाए, ठीक है। उन्होंने कहा अगर इनका कंप्लायंस होता है तो पहला नियम था कि सही जगह पे बसो। आज भी हम जब बसने की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जगह की सॉइल जो है आईआईटी रुड़की भेजते हैं, दूसरी जियोटेक लैब से भेजते हैं, वो हमें बताता है कि इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है 5 टन पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से हम कहते हैं कि कितनी मंजिला बन सकती है। कुछ लोग हमारे वहां, पहली चीज ये कि हम हायर रीचेज पे फर्म ग्राउंड के ऊपर बसे, ठीक है ना। जो लोग बेसिक सिस्मोलॉजी जानते हैं, जो सीस्मिक वेव्स हैं, जहां पे सॉइल होगी वहां पे सेकेंडरी जो एम्प्लीफिकेशन है उसकी वजह से ज्यादा नुकसान होता है, जहां पे सॉफ्ट सॉइल है वहां ज्यादा नुकसान होगा। तो हो सकता है हमारे लोग भी जानते हो, जब अरिस्टोटल बता सकता था तो हमारे लोग भी तो बुद्धिमान होंगे, है ना। उसी के साथ कुछ लोग मिट्टी की प्रॉपर्टीज देख के, फिजिकल ऑब्जर्वेशन करके ये बता सकने में सक्षम थे। हमारे वहां अभी तक मिट्टी दिखाने ले जाते थे लोगों के पास, बेस्ड अपॉन टेक्सचर, ह्यूमिडिटी, स्मेल, ह्यूमस, मॉइस्चर। कुछ लोग ये बता पाते थे कि दे कुड कमेंट अपॉन द बेयरिंग कैपेसिटी, ये बनाने के लिए अच्छी है या नहीं है, ये कहते थे। उसी के साथ जीवन हो या मकान हो, फाउंडेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा प्रिंसिपल था कि फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग तब तक खोदते थे जब तक कि चट्टाने ना मिल जाए, हमारे को कहते हैं जब तक दल नहीं मिल गए खोदते रहोगे, है ना। तो आजकल के आप अच्छे मकानों में भी चले जाएंगे, आपको एक और कुछ मिले ना मिले, जो लिंटल के पैरेलल क्रैक्स हैं वो जरूर मिलेंगे, ठीक है ना, जिसे सेटलमेंट क्रैक्स बोलते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हम आज बुनियाद खोद रहे हैं, कल से मकान बनाना शुरू कर रहे हैं। हमारे वहां बुनियाद को 2-3 बारिश खुला छोड़ते थे ताकि सेटलमेंट हो जाए। जो बड़े घर हुआ करते थे, ऊंचे घर, उनको सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर बनाते थे। आपने जितने भी पुराने स्ट्रक्चर देखे होंगे, चाहे वो किला हो, महल हो, वो सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर बनते थे। वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास नीचे रहे। नीचे आपका जगह, आज आपके बगल पड़ोस में कोई मकान बन रहा होगा 4 मंजिला, पहले क्या करते हैं, नीचे से मिट्टी निकालते हैं, फिर राफ्ट डालते हैं, फिर मिट्टी भर देते हैं। नीचे लोड रहेगा तो
सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगा, ऊंचा मकान टॉपल नहीं होगा। यही हमारे लोग भी किया करते थे। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल वाज रिलेटेड टू लेआउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अर्थक्वेक इंजीनियर से दूसरे से बात करें तो लेआउट शुड बी सिंपल, स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ओपनिंग्स कम होनी चाहिए। आप लोगों ने घर बनाया होगा तो मकान में सबसे ज्यादा खर्चा आता है खिड़की दरवाजे में। खिड़की किस लिए बनाते हैं हम? बड़ी बड़ी रोशनी और हवा के लिए, है ना। और हमें दोनों चीजें जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। एक बार हम बड़ी बड़ी खिड़कियां बना लेते हैं, उसके बाद हम दोनों को रोकने के लिए, हवा और रोशनी दोनों को रोकने के लिए दोबारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारे लोगों को मालूम था, और दीवार की जो ओपनिंग्स हैं वो 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेंथ के, है ना। तो हमारे लोग छोटी ओपनिंग्स थी। आप इन घरों को सोलर पैसिव कह सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट कह सकते हैं। पहाड़ में लोग बोलते हैं कि गर्मियों में ठंडा रहता था, ठंडों में गर्म रहता था। चौथा जो प्रिंसिपल था जॉइंट्स को लेके था, तो हमने पत्थरों में भी और लकड़ी में भी प्रॉपर जॉइंट्स बनाए। लकड़ी में जो था दोनों खांचे वाले और कील वाले, हाउस्ड एंड नेल्ड, दोनों टाइप के जॉइंट्स थे। पत्थरों में थ्रू स्टोन और कॉर्नर स्टोन। आज भी आपने देखा होगा जो ईंट की चिनाई होती है, आजकल हम फ्लेमिश बॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें आखिरी वाला जो है, इस दीवार की जो ईंट आएगी वो इसके लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो वैसा ही हमारे लोग भी करते थे ताकि दोनों दीवारें साथ रहें। उसी के साथ लोड ट्रांसफर, जितने हम बीम कॉलम बनाते हैं इसलिए नहीं बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टिफ रहे या दूसरा रहे, इसलिए बनाते हैं जो एडिशनल फोर्स लगे, शेयर फोर्स लगे, वो ग्राउंड तक सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाए। तो हमारे लोग वुडन बीम्स यूज किया करते थे कंटिन्यूस, जिनकी वजह से लोड ट्रांसफर में सुविधा मिलती थी। उसी के साथ जो ऊंचे मकान थे उसमें वो बाहर से शेयर कीज डालते थे, जो शेयर फोर्सेस को डिसमिनेट करता था। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जैसा मैंने कहा, फेलिंग में, क्वेरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में था। और इन घरों की हमने रेडियोकार्बन डेटिंग कराई है। ये घर करीब करीब 1000 साल पहले बने थे। 1000 साल में हम 300 साल लाइफ साइकिल, जो अर्थक्वेक है, बड़ा अर्थक्वेक 300 साल में आ जाना चाहिए। तो कई इस तरह के अर्थक्वेक इन भवनों ने देखे होंगे, और ये लोग जानते थे कि कौन से फोर्स लगेंगे, उन्हें कैसे डिसिपेट करना चाहिए। फोर्स की बात जब हम और आप जैसे वैज्ञानिक बात करते हैं तो वो न्यूटन के बाद की बात करते हैं, और ये जो लोग कर रहे थे न्यूटन के बाद। अब सवाल ये है, आप लोग सब रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों ने ऐसा किया कैसे होगा, क्योंकि भूकंप रोज नहीं आते। आज जो भूकंप आया हो सकता है 100 साल बाद आए, 50 साल बाद आए। जो मैंने भवन में चेंजेस किए वो ठीक थे या गलत थे, वो पता लगाने का मुझे मौका 200 साल बाद मिलेगा। तो वो डॉक्यूमेंटेशन हमने कैसे किया, कैसे उस जो मैंने चेंजेस किए वो 200 साल तक लोगों को पता हो और वो बताएं कि वो ठीक था या नहीं था, वो कैसे किया। दैट्स अ मेजर काइंड ऑफ अ मिसिंग लिंक। और अभी की बात करें, आजकल रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हमारे लोग क्या करते हैं, जहाँ पे रोड एक्सीडेंट होता है वहाँ पर एक मंदिर बना देते हैं, ठीक है। वो हमारा रिस्पॉन्स है। बाहर वाला रुके ना रुके, जो रोज चलने वाला है थोड़ा रुकेगा नहीं भी तो थोड़ा स्लो कर लेगा, थोड़ा सर ऊपर नीचे कर लेगा, तो थोड़ा वो आज का हमारा रिस्पॉन्स है, किस तरह से हम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें प्रॉस्पेरिटी की, तो हमारा इलाका कुछ ऐसे इलाकों में से होगा जहां कोई भूमिहर नहीं है। हर आदमी के पास जमीन होगी, हर आदमी के पास पक्का घर होगा। घर पे आदमी तब इन्वेस्ट करता है जब इकोनॉमी आपकी सरप्लस प्रोड्यूस कर रही हो। तो कभी हमारी इकोनॉमी सरप्लस प्रोड्यूस कर रही होगी, and that is on the basis of traditional resource management practices of the people of this land. Later it was transformed. जब पहला दौर शुरू हुआ माइग्रेशन का, तब हम कहते थे परिवार पीछे रह जाता था, कमाने वाला आगे जाता था, तो मनी ऑर्डर भेजा करता था। Then the economy was called मनी ऑर्डर इकोनॉमी। अब जो होने लगा है, अब एक आदमी जाता है तो पूरे परिवार को लेके जा रहा है, तो अब पीछे भेजने के लिए कि कोई बचा नहीं है जिसको मनी ऑर्डर भेजा जाए। शायद सरकार को भी समझ में आ गया, तो उसने मनी ऑर्डर भी बंद कर दिया।
ठीक है ना? तो that's a kind of situation. So there have been breakdown of the tradition. जो भी हो, socio economic changes हैं, ओवर डिपेंडेंस अपॉन स्टेट है। पहले जो हम काम मिलजुल के करते थे वो हम सरकार के भरोसे छोड़ दिए। पहले हमारे जो रास्ते हैं, गुल है, पानी के स्रोत हैं, उसके लिए हम सरकार का मुंह नहीं देखते थे। आज हम अपने घर के कूड़े के लिए भी सरकार का मुंह देख रहे हैं। ठीक है, हमें लग रहा है मोदी जी आएंगे और वही सफाई करेंगे। तो हमने सरकार के ऊपर काफी छोड़ दिया है। उसी के साथ हमने अपनी जो चीजें हैं उनको बड़ा नीचे करके हमने कहा कि बड़ा आदमी वो है जिसका लिंटर वाला घर है, जिसका पठार वाला घर है, वो या फिर जो ट्रेडिशनल को हम बात कर रहे हैं उसको हमने पीछे छोड़ना शुरू कर दिया कहीं ना कहीं। और हम पॉवर्टी, माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जो डिजास्टर की यहाँ वो बढ़ रही है, उसको हम इन सब चीज़ों से जोड़ के देख सकते हैं। आप सब लोग यहाँ पे रिसर्चर्स हैं, तो हम पहली चीज़ सबसे कि हम डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि आज कुछ पता चल रहा है। हो सकता है आपके फोकलोर्स में, आपकी फोक सॉन्ग्स में कुछ चीज़ें ऐसी हों जो डॉक्यूमेंट करने लायक हों, जिससे कि आगे हम ट्रेडिशनल जो हमारी विजडम है उसको किस तरह से इम्प्रोवाइज करें, किस तरह से आगे ले जाएं, किस तरह से उसे पैकेज करें। अभी हमने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है कंप्लायंस की। आज हम नियम कानून बना दे रहे हैं, कंप्लायंस नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है ना, हमने बिल्डिंग बायलॉज बना दिए और कंप्लायंस का हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कंप्लायंस के लिए, जो सोशियोलॉजी वाला शायद कोई हो यहाँ पे, हम लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन की बात करते हैं, है ना। जो हमारा लिटिल ट्रेडिशन है वो, जैसे आपने कहा, बलि बकरा जो है वो लिटिल ट्रेडिशन की बात है। और कहीं ना कहीं हम Sorry, Dr. I think we should conclude in 5 minutes now. We have. I'm concluding in 2 minutes. Yeah, yeah. Thank you. तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, जैसे कि हम जो बात कर रहे थे कि हमने अपनी चीज़ों को डेरोगेट कर दिया, और इस हद तक कि हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी आज हमें गाली की तरह लगती है। ठीक है ना, आज मुझसे कोई खसिया कहेगा तो मैं मारने चले जाऊंगा। ठीक है, आप एटकिंसन का जो गजटर पढ़ेंगे उसमें इस इलाके का जो आदमी था उसको खसदेशाधिपति बोलते थे। ठीक है ना, ऊपर वाला जो हूण देश था ये खसदेश था। कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे बाहर से आए, परंतु कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा से यहाँ रह रहे थे, जो हम शंकराचार्य की क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक दिग्विजय। और कुछ हमारी ऐसी चीजें हैं जिसको हिंदू ट्रेडिशन एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, वो बलि हो सकती है, भूत पूजा हो सकती है ना। भूत पूजा हम सब करते हैं। ठीक है, अंत में कुछ नहीं होगा तो जागर लगवाएंगे, फिर हम कहेंगे बुढ़िया वो हो रखी है, बिगड़ रखी है। बलि का भी वही हाल है। तो कहीं ना कहीं हमको, और जो मैं कंप्लायंस की बात कर रहा था, मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आपकी अपील लिटिल ट्रेडिशन को होगी तो आपको एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारियल उसमें कितने लोगों ने खरीदा नवरात्रों में? नारियल, पान, सुपारी हम सब खरीद रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, और ये तीनों चीजें हमारे इलाके में नहीं होती है। और कितना बड़ा बिजनेस है अगर आप देखेंगे, वो केवल इसलिए चल रहा है कि लिटिल ट्रेडिशन को अपील है। अगर हम अपनी चीजों को लिटिल ट्रेडिशन को अपील करके लोगों से कहेंगे तो वो कंप्लाई नहीं करेगा। और जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं उसके लिए आपको बाहर के एक्सपर्ट की, बाहर के कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल बी लो कॉस्ट, अच्छे से आप उसे मेंटेन कर पाएंगे, उसको बना पाएंगे, उसका रख रखाव कर पाएंगे। आप सबको मुझे बोलने का मौका देने के लिए एक बार फिर से कुलपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, गोस्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आपने बहुत सरल साधारण अंदाज में उत्तराखंड
कि परंपरागत जो प्रौद्योगिकी थी, परंपरागत जो तकनीकी ज्ञान था, उसको समझाने में बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया. We are really grateful and thankful to you for your wonderful deliberation. Thank you so much, sir. Now I'd like to invite Dr. Ashok Singh, sir, and he's going to deliver his talk on Uttarakhand disaster, a case study of Joshimath crisis. Honorable Governor Sahab, Sri Gurmuz Singh Ji and Chancellor of the Kumaun University of Uttarakhand, Professor N.K. Joshi Ji, Vice Chancellor Uttarakhand University, our eminent resource persons, senior professors and eminent scientists of Kumaun University Department of Geology, distinguished faculty of the different department of the Kumaun University and different part of the country, researchers, dear students and participants, very good afternoon. And the students and young researchers are the assets for the country, for the future of India. At the outset, let me congratulate Professor N.K. Joshi Sahab to select a theme of discussion for brainstorming session today on geohazard risk assessment and sustainable development of Uttarakhand, Himalaya, on the initiation of the Honorable Governor, and which is also the need of our, and you all have seen and experienced with the recent happening in the land subsidence of Joshimath area. Not only that exactly, this is also going to fulfill our G20 meets happening at recent part of the country, as well as in the sustainable development goals of identified 17 goals and 169 targets. Actually 9, 11 and 13 is the for disaster management to achieve the Millennium Development Goals. On the Sendai framework, which is also in the 2030 United Nations Geospatial Information Management Agenda. So this is very important kind of brainstorming session organized by Department of Geology, which are already very experienced researchers in the field of geology, and we have a very long association of the Kumaun University for many disaster, climate change and different programs of the Department of Science and Technology. Let me also share one of the very important things. You all are very much aware that we have very premier organizations who are the custodian and repository of the data sets. Like we have Survey of India, which is more than 275 years old organization, and custodians of the large topographic data sets. We have Forest Survey of India, we have Botanical Survey of India, we have Geological Survey of India. Like we have many premier organizations of the country who are collecting the data on different farms, on different themes.
like Geological Survey of India. What is the problem exactly which country is facing now? What is the challenge with us? All the premier organizations are collecting the data on different standards, different formats, different scales, different currencies. They are doing their own things in their own forms. And these data sets are not interoperable to each other, and also not with the international competence like OpenGIS Consortium, which is very important. We should have a centralized data system. For that, Department of Science and Technology, we have national spatial data infrastructure. Exactly to have a single window clearance of the data sets. Like you all have faced to getting a toposis from survey of India, how tedious and difficult task it was before. Now the things are changing. You just I made mention before about the Sendai framework. What is the Sendai roadmap? Earlier, why Sendai framework came into the picture? Earlier it was disaster management. Now the management has been converted to the disaster risk reduction. And now everybody is talking on the disaster risk resilience infrastructure. And we have Honorable Prime Minister 10-point agenda on disaster risk resilience, where the role of educational institutes, role of the scientific organizations, role of the administration should all be identified what way we should proceed further exactly. And we are very happy that we have with us Rautela Sahab, who is from SDMA. You all have seen our Disaster Management Act 2005, just in COVID, all the circulars came from the NDMA. And this is also all the findings to be taken into the action by the SDMA. NDMA is also collecting data on your findings. And under SDMA, we have up to district disaster management agencies. But what is the problem and what is the challenges we have? Until we don't have the centralized data system and quality and reliable data sets and its regular updation, we are not going to provide solutions for anything. This is also very important that our Prime Minister made mentions in the many platforms. All the academic institutions should not only go for publishing their own research findings in the paper, it's good, writing good books. They should also contribute equally to the society, how their research findings are going to the helpful to the societies, to empowering the common citizen with the resources available nearby. These are the small kind of things, and in the recent development in the field of liberalization of the geospatial data sets, I think because you are from the geospatial background, many of you, I don't know much about the students. This should exactly be the disaster management kind of things should be taught from the primary school level. And community participation is also very, very important to progress further in these areas to find solutions. Like
liberalization of the geospatial data. Earlier, whatever the data, particularly of the Uttarakhand, was in the form of restricted maps. Whenever you are making a request with the Survey of India, many of the topofields, they say it is under the restrictions. We cannot provide you the data. But now, the liberalized geospatial data policy, which had been approved by the PMOs on 15 February 2021, to have made the revolution in the country. There are liberalized geospatial data sets. Now, DST is fully responsible to have single window clearance of the all data sets, whatever you require from any of the data generating agencies, data storing agencies. And in the similar line, very recent development of the announcement of National Geospatial Policy in December 2022, approved by the Cabinet. You know how the geospatial data sets are playing very, very important role in day-to-day life and in all decision-making process. Even monitoring of the very, very important project of the country like Gati Shakti is all being monitored by the geospatial technology. With that, I think, let me share some of the slides. I am very poor in the geology, I don't know even ABCD. And we have a very senior and eminent geologist here. What we did in the field of disaster, particularly in the Uttarakhand, and you all know that this Uttarakhand is also very occurrence of landslide is very, very frequent in these areas. Let me have a small background. As you all very much aware that Himalaya is one of the technologically active mountain chains of the world. And these are highly prone of mass movement due to the immature topography, seismic activities, neotectonism, very hydrological conditions coupled with high rainfall, as well as complex geology of these areas. Transportation, public network, and all socio-economic activities that occur in the areas of lesser Himalayas are very much dependent on the local road and highway network in this region. And that is, Himalaya is undergoing constant fracturing in the thrust belt zone in the Garhwal zone. This led to triggering of local hazards such as earthquake, landslide, floods, particularly in the Uttarakhand. After the major disaster, which occurred during June 2013 in Kedarnath, Uttarakhand, where heavy loss of life and property took place. And we have with us Anand Sharmaji, very good in the forecasting of the weather conditions. You know, lot of development took place in the country in the development of prediction system, particularly in the cyclone. We are able to save the life of the people by the forewarning or prediction of the cyclones. Similarly, we are working to develop forewarning system in the area of landslide. A national program of the landslide is being taken by the DST under the National Geospatial Program, and we have very recently sanctioned the number of proposals in the networking form to develop at least forewarning in the field of landslide. But it is not a very simple task, tough task, but let me attempt and come out with that. Similarly, if we are able to predict the earthquake system, at least we can
minimize the loss of life, not the loss of the property much. There are not only the natural disaster, we are also equally responsible to have a man-made disasters. Knowingly we do most of the things, like building a house. We know, I will show you the fact that how we are the responsible to have a causative factors to accelerate the kind of a hazards which will certainly take place in the future. Just after the tragedy of Kedarnath 2013, DST has been asked by the Cabinet Secretary. You know, there was damage particularly in the Chardham areas. So DST has been asked to have a damage assessment mapping of Chardham areas in very short notice. And you know, at that time, most of the roads have been blocked. There was no power at most of the places where the tragedy took place. It was very, very challenging task was assigned DST by the Cabinet Secretary exactly. Then what we did exactly, what I am going to share with you, that we have supported the R&D program mentioning map the neighborhood. Map the neighborhood. You are the better known person what is happening in your nearby areas. Somebody will study later on. But there should be inculcated the culture of such type of to tackle with such kind of a problem immediately. Because in any of the problem your neighbor will help. Your relatives and doctors and others will come later. You should be trained. Local resources should be used first to come out with solutions. This is also our responsibility of all the academicians, scientists, as well as administrators to provide the convergent solutions of the problem. Under the map, the neighborhood scheme, what we did exactly, there are 6 departments came forward together like Department of Space, Department of Science and Technology, and Indian Institute of Remote Sensing. And we are also fortunate that Kumaun University was also one of them at that time who come forward. And University Garhwal, Wadia Institute of Himalayan Geology, we have thought that why not we should use the local institutions first. They are very much aware about the kind of geology and geotechnical activities which are taking place in the Uttarakhand. And what we did, we have taken the UG students at that time and given just 3-day training in IIRS. 2013, the mobile phones and system was not well advanced. We have been giving them the backup and Android phone of these student batches, and it was supervised by their program coordinator to go to the area, and we have developed a very detailed questionnaires, and Professor Talat Ahmed was the chairman of that particular task to develop the format. And one app was developed, Manu, in the mobile, and they have been sent to the task. I don't have much time to share the findings, and that finding was also compiled by one of the very senior professor who has already been retired of Kumaun University, our Department of Geography. Yeah. So see, and geospatial database coordinates in which area, what kind of data sets, how it is going to affect your decision making in the day-to-day process. Suppose what is the kind of tragedy which took place in the Josimat. Some of the people are going to be evacuated. Where should be the land? What people? What area? What kind of money, resources is required? All the things are very, very simple if you have a good geospatial database with coordinates, accurate and authenticity. The very important task
also by the National Geospatial Program of the DST, NDSAP, National Data Sharing and Accessibility Policy, have been get notified in 2012. Whatever the data is being generated by generating agencies, as well as are being generated by particular R&D project by public money, they all should share their data sets. जैसे पहले कहा जाता था कि विद्या का दान जितना आप दोगे उतना अच्छा होगा, लेकिन हम कंजूसी बहुत करते हैं, अपना कंप्यूटर, अपना फोटोकॉपियर कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, जो भी फाइंडिंग्स है बोलेंगे कि आई शुड कीप इट. So we all should have to share our data sets to arrive at some conclusions. So whatever is data being generated by anything should be shared by data.gov.in. It is also in the high priority agenda of the PM. All the data sets should be shared by data.gov.in. This is very, I am sharing very small things. 6 participating institutions with the local people of these areas. They can go. They have been given power backup also to collect the data sets. So such kind of a community training at the local level for any kind of disaster is very, very essential, and for that we must have to have a capacity building program. And what exactly we have seen with the outcome of this Manu project happening in 2013? We have seen there are very critical hotspots and most vulnerable critical hotspots. Knowingly they know that I am sitting on the deathbed, but they are still doing the business. When we have a discussion with them, they said our earning is exactly by the tourism, and we are sitting and we don't have anything other. No. I will later just I am telling you the point. How we are occupying the things. What we did exactly with the finding of the Manu projects, we have taken the area from Rishikesh to the Kedarnath again in the next phase to have a large scale geological mapping and detailed geotechnical investigation. For not only we need the knowledge of geological mapping, geotechnical component is very, very important, where we have to study all these flow mass rating, rock mass rating, numerical modeling, finite element method. These are a lot of mathematics and physics knowledge is required. Very detailed studies has been carried out. The corridor from 154 kilometers stretch. And it is also being shared by the Chief Secretary of Uttarakhand, like Manu findings, as well as the findings of the large-scale and geotechnical investigation from Rishikesh to Kedarnath, and some of the part of the Joshimath was also being studied. And the study was mainly focused on the happening of landslide and their geotechnical factors. Because Joshimath must have to be studied as a full, not only the corridor form. Area should be more in detail. And it has not only shared to the Chief Secretary of Uttarakhand, it has been shared to the NDMA as well as SDMA too, and all other participating agencies who were involved in these outcomes. Now, I am going to talk some of the things which is not mine. The studies has been carried out by most of the findings. This is by the Kumaun University, and that has been carried out in the form of R&D project supported to Uttarakhand in the large scale mapping. You see the case study of the Kedarnath.
you all must see the lateral moraine deposit, migration toward newly constructed buildings in the Kedarnath. This is the active landslide, Mandakini. And you all know the potential full landslide zone is identified in Megmeti near Rambala. See the Rambala before as well as the after between Kedarnath and it is your findings only, not mine. This is the slope instability map which have been prepared from Guptkasi to Rudraprayag as well as Sonprayag to Guptkasi, the large scale mapping projects. There were in the large scale mapping networking project, there were 10 institutions identified. IIT Roorkee, Kumaun University, Wadia, HNB Garhwal, Punjab University, IIT Bombay. So 10 important institutions have been involved in these findings. These are the different kind of formations. Because most of you are geologists, you can understand it in better way, more than mine. Just see the kind of things which are happening in these areas. Actually, any kind of such disaster which are taking place in any of the hilly terrain, we have to have study in a very deep and detailed to know the rock mechanics as well as the soil mechanics of those areas and their conditions. Then only we can arrive some convergent solutions of the problem. This is the example of different support provided near the Rudraprayag, Mandakini Valley. This is the kind of things what Rautela Sahab made mention Nainital Balianala case study has also been carried out by the Kumaun University. This is the Upadhyaya Sahab and Mohit, one of the JRF, worked with that particular project. This is the landslide which took place in 2017-18 on the Mall Road near India Hotel. And this is the reference of the research publications did in that time. This is the different flow kinematics of the Nainital city are showing planar and vestigial. It has already been published by the researchers. This is the Balianala landslide, as I have been told by the organizer of the time limit. This is the Balianala landslide, I made mention, our earlier speaker in this regard. This is the ground subsidence near the GIC Inter College. This is the work carried out by you people. This is the location, rock type, slope angle, rock quality, development index, rock mass rating, type of failure, responsible discontinuity. What are the causative factors and the remedial measures? Two things are important. We have to understand the underlying causes of these happenings and what should be the remedial measures to come out as a solution of problems of those particular areas. This is the kind of a discussion. Today's Joshimath land subsidence as well as landslide. See, Joshimath is situated as between the Pandukeshwar Trust or Pindar Trust in Mandakini Valley and Vaikita Trust
The main central thrust. This is the house built up near the active rock slide. हम जानबूझ के अपना घर वही बना रहे हैं जहां हमें पता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए. Seared rock mass. Just see the floor cracks in the Josima town. 3. The cracks in the wall at Josimat, surrounded by Alaknanda river from the 3 sides, so toe cutting of the slope is very common. These are the causes of unscientific constructions. This is the Tapovan Vishnugarh hydroelectric project. Hydroelectric project is also causing a lot of causative factors for such kind of damage which are taking place. Josima township surrounded by Alaknanda river with form of 3 sides and continuously doing toe cuttings. This is the recent findings made by Sundaryal and Kumaun University. Seismic map of India, you know Josimat falls under the seismic zone 5. These are the some of the observations as far as the time limit. Let me conclude with this. Thank you. I am very, very thankful. Only the share our experiences with you on these time limits. I don't have much time to share the findings of the Manu project, and really it is a very, very important and encouraging results which have been came out in only less than a year time, made by 6 different participating agencies. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful presentation. And you have especially focused on Manu project map, the neighborhood for community participation. That is very much required. और आपने कहा कि जानबूझकर हम गलतियां कर रहे हैं, उनसे सबक सीखने की बहुत जरूरत है. Thank you so much for your deliberation. Thank you so much. And here we break for lunch. So here will be a lunch break for half an hour, and after that we'll reassemble at 1:45 for second technical session. Yes. So after that we have more presentations by Professor C.C. Pan, Professor P.S. Kotalia, Dr. Anand Sharma, Dr. A.K. Pandey. So we will have very interesting talks remain after this session also. So we will meet at 1:45 sharp. Thank you. This is the outlet of the lake, the Balya Nala, and see what is the topography from space, how it appears. It is highly rugged, highly sected. You know, all these features that you see behind the Raj Bhavan, and this lake, Naina Peak, and all that. I would be talking about this area. What is happening there? Beautiful. But if you see it carefully, these slopes that constitute the slopes of the hills, they are made of highly fragile rocks. The fragility is inherent. We have only added to the problem. The rocks are polyphasally deformed, they are highly deformed, and at most of the time these are dip slopes. Dip slopes are those slopes where the rocks, the dip of the rocks and the dip of the slope is in the same direction. Okay? So, see how development had taken place. Perhaps some of you might have seen these through your WhatsApp or some other media. This is already available. See, the settlement started around 47, and then the first house that was constructed is Pilgrim Lodge. It is just behind Nainital Club. People are still living there. So that was the first house, and Britishers were very systematic. Then in 1880 we had landslide.
But before that, 1880, we had in 1867, there was a big landslide from Alma. Alma is the location near to what you call that riz part. What is that riz? No. Sherkadanda, yes, right. From Sherkadanda, there was a huge landslide that was responsible for formation of this slope of where Nainital Club is located. From Alma side, there was a huge landslide in 1867, and then there were events of landslides. So this Nainital city have had a history of landslides. It is all the habitations are located on loose debris. Most of the places, it is loose debris. So that loose debris, landslide debris, has been stabilized over the years over which the habitation is located. So the pictures are self-explanatory. So the highest peak is this China peak or Nana peak, whatever you call. So there is a fall. You see, so the slopes are very steep. And sometimes it is 60, 70 degree slopes, such as seen at Nana Peak. And Nana Peak, and if you see the geomorphology of those areas, they are fans, debris fans. So there are landslides which are undated. We do not know. They happened in the past. They happen perhaps related to some big seismic events that struck the region several times in the past, for which we do not have records. But Dr. Piyush was showing that it was 1803 earthquake that was largely responsible for great damage in several parts of Uttarakhand, and perhaps nobody was living before that. 1841, local people had a deity, Nainali deity. They used to come here, there was a fair or something like that. So nobody is occupying, nobody was living in this valley. See what is happening. These are all deep slopes. See those who are living in that area. So you have a deep slope. The rocks are highly fractured, and some areas, such as the Birla Riz, the Sherkadanda Riz, has a fracture that is since 1880. It is traceable from Birla College up to Alma for more than 1.5 kilometers long. There is a crack on the surface. The moment of that crack was being monitored earlier, but now it has been discontinued. So yearly it was big. So the head of the landslide zone is such a long. So you can imagine how much depth, because the plane of failure would go down, and the damage that can occur in these areas, which are already sensitive, over which we are putting a lot of load. I can easily bear a load of 5 kg. If you put 2 quintals, I would tumble. I will be squeezed. I have to move. I will be thrown out of my place. So this is happening on these slopes. We are putting additional load year after year as a result. So this lake has an outlet, what is called Balia Nala. Balia Nala, these are the sluice gates through which the excess water of the lake is drained out. So Balia Nala has enormous, huge landslides. And see, that forms the base of Nainital, over which we have settlements, over which there is a lake. So the future of entire city lies with the stability, depends on the stability of Balia Nala ravine.
So Balyanala, our friend Dr. Kotulia has been working in that area. So they have their GPS measurements have shown enormous amount of, I think, 6 to 7 centimeter per year at places. 62 at places 62. It varies from place to place, but the maximum surface velocity that he has recorded is 1 meter. Okay. So there are measurements available in the valley. So see again, I'm just summing up what is happening here. You see, this Nainital Club fan, this is Alma, this is Tanaki House or Tanki that we call. From where in 1867 a huge landslide took place. Now there is another fan here. This is Brook Hill. This is Nainital Club, and this is the flats here, and this is the scar of 1880 landslide. And see any area, Devpata, if you go towards Narayanagar, huge boulders lying on those slopes. And if you see the topography of the lake is being quickly filled by huge amount of sediments. You see, there are transverse drainage that is beating the lake, and after 1880, it was Middle Miss. A committee was formed under Middle Miss was an officer of the Geological Survey of India. So a committee was formed, and the committee recommended that these drains, because drains are important, they carry the rainwater into the lake. They are the lifeline. They discharge the surface runoff into the lake. And due to these slopes are already fragile, due to anthropogenic activity, sometimes the greed of the human beings, they dump the debris of the household into those drains. And in the next torrent, it is washed away and goes directly into the lake. As a result, the lake has very high rate of sedimentation, and some of the deltas, 22 deltas have developed all around the lake. So there is encroachment into the lake. As a result, the capacity of the lake has been reduced. See, this is Boathouse Club. These are the jetties. See, this was, I think, 2015. Again, same area. See the huge dump, the material is being removed. The siltation rate is alarming. If you see on an average, it is 80 cubic meters per year. At places it is higher, but it is very high. It has been calculated by our colleague, Dr. J.S. Rawat. See, this is Nainital. One had to take, if you have to take a boat ride, you have to walk about 300 meters or 200 meters into the lake bed. This happened in 2015, if I'm right? 16, okay. See, this is Nainital. See the lake level? It has gone drastically down. So Lake Basin is about 21 square kilometer area that receives rainwater mainly, and there are some springs that drain into the lake. These are the main springs. So this Bada Nala, which is the main drainage, this is Bada Nala, which meets near to the temple Nainadevi, and this is the main source of water, including the Pardadhara spring, and the other springs on the slopes. They are the main source, but there are springs at the margin of the lake. This is a karstic region, carbonate country. The solubility is quite high. Carbonate rocks get dissolved in the water, and there are cavities, there are caverns through which the water goes into the ground and feeds into the lake
this, if you see the figures, this is the geological map. See the complicated nature of the outcrops. This is highly folded. And these lines, the dotted lines that you see, they are faults and thrusts. Fault and thrust. Faults are those areas along which movement has taken place in the past. And some of the faults could be tectonically active at present. So, see, the terrain is naturally weakened by these faults. When there is a movement, there is pulverization, there is breaking of the rock, the fault gouge is formed, the rocks become weak, and they are easily eroded due to shearing. So, all that goes into it. So, see the geology is very complex. And if I were to see what is like underneath, this is the geological cross section, this is the lake. You see how tightly these rocks are folded and faulted at a number of places. See? So this is the general structure, this is Ayarpata, this is Shekar. See, the rocks are different this way. Here also they are different this way, they are very steep. So this Ayarpata is also, some part of the Ayarpata is also, so there are two ridges, Ayarpata and Shekarana. The eastern ridge is Shekarana, the western part is Ayarpata. See, so this is the inbuilt weakness of these slopes. See, this is how the lake was formed. Lake was formed, this is the lake by ancient Varyanara that was moving through this area, and due to movement along this fault, this Nainital fault, Varyanara fault, here you can see Shekarana, this is Ayarpata. This is the river. So you see that the lake was formed by movement along the fault. So the drainage was impounded. It was obstructed. So the water got collected and the lake was formed. So this is the tectonic lake. So you can ask me, what is the age of this Nainital lake? I do not have an answer, but my colleague Dr. Kotia has worked in Nainital area. Nainital, this is the flat area of the ancient lake bed. So perhaps these three lakes, and beyond this, it was about 11 or 13 kilometer long lake. Now it has sunk to only this due to various reasons, including high rate of sedimentation. So Nainital is also having high rate of sedimentation. So maybe if we see the present rate of sedimentation, the lake would be filled in 350 years approximately. This is the calculation done on the basis of the rate of sedimentation. So Dr. Kotia calculated. There is a village where he got the basement rocks. Basement rock means the original rocks of that area. Basement rock, these are volcanic rocks. They are very old. They are more than 6 billion years old. Over which the quaternary sediments, very young sediments, are resting. And those sediments have all the characteristics of the lake. And he found some fossils as well as charcoal in it. And it was dated by radiocarbon method, and it gives an age of 33 kiloyears. It means 33,000 years. So I do not have direct dates of Naini Lake, but these lakes around Nainital, they were formed at almost at the same time, which is related to tectonics of this MBT zone. So there are faults which are offsetting the MBT, and the faults are transverse type of faults. So they are largely responsible for formation of these lakes.
and the lake was ultimately breezed out around 5,000 years before present. Due to again tectonic activity, so the water from the, because of fault got activated and the lake water, it was breezed and lake was shrunk into smaller areas. This is the bathymetry. Over the years, bathymetric studies of these lakes have been done by earlier workers, but they bathymetric contours. 5 minutes, okay. This is the bathymetry map that was done by us, our department, which shows that this is library here. This is a transverse raise, which is about 200 meters long and about 50 meters to 100 meter, at places 50 meters, at places. So there is a ridge. If you just remove the lake water from that area, a ridge is there. That ridge divides lake into two basins, northern basin and southern basin. And see, when the contours are coming closer, it means they are the deeper areas, steeper areas. These are bathymetric contours. No. So, yes, the students of geology would like to see that what is there in the lake bottom. There are valleys with steep walls, which is unexpected in a lake basin. What does this indicate? And the steep-sided walls with some terrace-like features indicates that, you see, at the bottom the sediments are horizontal. They should be horizontal, isn't it? But their occurrence at different intervals, like a terrace deposit in a valley, indicates that the fault is still active. They are just very young sediments, maybe Holocene, maybe 10,000 years old. So that shows deformation as well as deformation like this, you know, these are acoustic reflections. See, these are the profiles at different stretches. You can so whatever it is. So the bathymetric studies indicate that the lake is divided into two basins by 100-meter wide transverse underwater raise, 7 to 20 meters from the mean lake level. So sediments are there, a lot of sediments are there, and if you see the rates,
it is 78 cubic meters per year between 69 to 79. That was the study undertaken by our department. So the deltas are frequently growing. They are indicators of instability in the lake basin, like cracks in the civil structure, tilted trees. You sometimes see on the slopes the trees are tilted and become vertical. So that indicates that the slope is slowly creeping down, but phototropism makes it vertically to grow vertically up. As a result, wherever you have such type of slopes having tilted trees or cracks in the civil structures or subsidence on the road indicates. So what we have done is we have just taken these measurements for microhazard zonation of the lake basin. So these are some of the Piyush was just mentioning about the pillars, monitoring pillars. So you can see between, so now this is discontinued after 79. Earlier the data shows that in some of the or the which were monitored by theodolite surveys, that were discontinued. See, within a span of almost 60 years, see, it has moved about 220 centimeters. See the volume of displacement, downward displacement. And this is not only here, so sometime it is in jerks, they are kicks. It is happening in quickly, suddenly, or sometime it is gentle. So these are the locations where the measurements were done. So they indicate lot of movement in different sectors of lake basins. And you can very easily see that within a period of 60 years, 50 years, centimeters. See? So all the slopes are, so this is the high time. We are putting load. As a result, the Sherkadanga and some other slopes are slowly moving. We will only know when something happens and it makes headlines. There is Sat number एक वो है ना board, which is the most vulnerable area as far as the movement is concerned. INSAR radar data, number area, this is snow view, see the movement, minus 21.8 or so between August 2008 and August 2010, within the 2-year span. The entire thing is moving at this pace of 21.8 millimeter per year. So this is the most vulnerable area. You can see the other areas as well. There is movement everywhere, but these two near to Alma. This is the area which is having population unsettled, or I do not know how to call it. They have developed within last 10-15 years. And these are there are no hard rocks, it is all debris. And sometimes the slope is a little bit stabilized because of the construction of ropeway. They have grouted grouted means high velocity, in a high velocity opening. It has almost become homolithic and has given stability to the area. So this is Balyanala. See how these are all Balyanala inside about see, water is also oozing out from this area. Now this is all gone down. There is nothing. This is all gone. This is GIC, and there were several hotels in this area. They have all gone into the valley now. See the enormity
So based on various factors, this Nainital has been divided into various stability zones. The most dangerous, less dangerous, safe, only the Rajbhavan area, the courts, where DM's office is located, some parts of Ayarpata are relatively stable. Rest or moderately stable is that Ramjay Hill area, it is moderately stable. Rest of the areas are unstable. But we hardly use this information in planning and sanction of maps. Okay, thank you very much. I have cut it short. Thank you so much, sir. It's wonderful talk. Not losing much time, I would like to call Dr. B.S. Kotliar, sir, to please deliver a talk on disaster looms large, Nainital disaster looms large. B.S. Kotliar, sir. Over to you, sir. Good afternoon, everybody. First of all, I am most grateful to Honorable Vice Chancellor, my dear friends, Professor Pradeep Goswami, Professor Santosh Kumar, Professor Raju Upadhyay, and Deepa, and all others from the Geology Department who invited me to give this lecture, and also to Ritesh. I am very happy to meet in person with my senior. I was very unhappy during. He was actually out of station. पंजी showed you a slide. मैं उसी पर दोबारा आऊंगा एक बार. उसने कहा कि बलिया नाला में एक जो स्प्रिंग है, it is oozing out. Remember that word. I'll come to that point. और उसके बेसिस पर मैंने आगे की रिसर्च करना शुरू करा बलिया नाला में कम से कम या नैनीताल के एरिया में. This was a map prepared by a geographer during British time. And this was prepared in 1878. Look at one fault. Look this is Raj Bhavan, this is DSB gate, this is the place where your Mal road has gone down by 30 meters into the lake, this is 7 number, which Panji already told. In late or mid-90s, there was a landslide near DSB gate. I was sitting on the other side of the lake at that time. And I, with one of my students, went to that particular area. We were astonished to find out that such a hard rock of limestone, how can it settle down? There was some problem. Subsequently, we forgot for some time, there was some kind of fractures, fissures in Rajbhavan. I was asked by administration to give them a report. So I gave a report by saying that probably this fault is activated. We made a detailed geomorphological map of Nainital area. And look at it, this particular area. This one. This red mark is active landslide at the moment for the last few years. And this area is prone to the landslide. The active landslide, this is Kalakan Bend. You have seen subsidence of road by 1 meter at Kalakan Bend, which none of us probably had ever imagined. The result is just because that this area has been very active and lot of landslides, series of landslides in the Balia Nala area. In fact, Balia Nala, being the foundation of Nainital city, has been shattered out completely. किसी बिल्डिंग को बनाते हुए अगर आपकी फाउंडेशन ही चली गई है तो फिर बिल्डिंग को रहने का फायदा ही नहीं है. बिल्डिंग रहने वाली नहीं है. You might redecorate Nainital. उसका हेड, किसी भी बिल्डिंग का हेड आप कितना डेकोरेट कर दीजिए, माल रोड को कितना डेकोरेट कर दीजिए, बड़ा बाजार को कितना ही डेकोरेट कर दीजिए, मगर अगर आपने फाउंडेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया तो एक न एक दिन आपको जाना ही है. इसीलिए नैनीताल के बासिंदों मुश्किल बहुत है.
और सच में मुश्किल बहुत है, स्पेशली उस एरिया में जो लोग रहते हैं। मैं और प्रदीप कम से कम जिस एरिया में रहते हैं वो बलिया लैंडस्लाइड के ठीक ऊपर है। दिस इज एक्टिव बलिया नाला। इस पर मैं दोबारा आऊंगा प्लीज, और एक सजेशन दूंगा आपको क्या करना चाहिए। या सॉरी, दिस इज एक्टिव बलिया नाला। ये यहाँ पर अंडर कटिंग करना चालू करता है, और ये है आपका जो पुराना बलिया लैंडस्लाइड है। हम लोग तो आज के बलिया लैंडस्लाइड की बात करें, मैं पुरानी बलिया नाला लैंडस्लाइड की बात करूं, जहां पर हम लोगों ने एक रिसर्च करी थी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से वे बैक इन 2006 और 7, financed by Kosi Institute Almora. What was the results? We put 62 pillars throughout old Balia Nala landslide, and we monitored it for 3 years. The movement, what actually was the movement? उसको जानने के लिए, जीपीएस मूवमेंट को जानने के लिए हमने 3 साल उसका मॉनिटरिंग करा। उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम मॉनिटर नहीं कर पाए उसको। बट व्हाट वर द रिजल्ट्स? रिजल्ट्स वर दिस, सॉरी, रिजल्ट्स को मैं the static mode of GPS survey reveals that the area is sliding with a rate of 60 centimeter to 1 meter per year. ये रिसर्च 2006 की थी, और हमने कहा कि 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर प्रति साल ओल्ड बलिया नाला खिसक रहा है नीचे को। अगर खिसक गया ओल्ड बलिया नाला और कहीं बीर भट्टी की तरफ चला गया, देयर वुड बी ए टेम्परेरी लेक, और जो लेक टूटेगी, हश्र क्या होगा जीलूकोट का या तल्ला गेठिया का, हम सब लोग समझ सकते हैं। एक लेमैन कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन टू दैट। इसका खिसकना 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर प्रति साल खिसकना 2013 में दिख गया, जब बलिया नाला का पानी ही पीला हो गया। That is just because that old Balia's landslide had lot of sinkholes. कार्बोनेट रॉक्स हैं, सिंकहोल्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पानी सल्फरस हो गया। ये एक पत्रकार महोदय मेरे पास में और बोले वहां लोग नहाने लग गए हैं क्योंकि सल्फर का पानी आ गया और इसके डिजीज खत्म हो जाती हैं। तो हमने कहा चलिए आपके साथ चलते हैं। बीर भट्टी से लेकर के जब आप धोबी घाट तक आइए, तब कहीं जाकर के पता लगता है हमने कितना कुछ खो दिया है। आता हूं स्लाइड्स पे। एक ट्रायंगल है यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस ट्रायंगल। नैनीताल के 90% लोगों को अगर बलिया नाला लैंडस्लाइड कोई भी व्यक्ति फोटो खींचता है, हम ही खींचते हैं, जीआईसी वाला एरिया है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए 90% लोगों के लिए नैनीताल की ये है बलिया का पूरा लैंडस्लाइड। कैन यू इमेजिन द रियल लैंडस्लाइड इज दिस? दिस इज द फाउंडेशन व्हिच हैज बीन कंप्लीटली बॉल्ड एंड वी कांट स्टैंड। Slide is this. की तरफ जाने के लिए टूटा पहाड़, वहां से आप फोटो खींचते हैं जीआईसी की तरफ की और कहते हैं ये है बलिया का स्लाइड। दिस इज नॉट एक्चुअली बलिया लैंडस्लाइड। ये टूटा पहाड़ लाल घेरे में है। एक्चुअली ये कितना होगा इसका? मे बी 0.1% और 0.2%। सो इसका मतलब यह है कि 99% ऑफ बलिया नाला लैंडस्लाइड nobody has seen. At least 90% people of Nainital have not seen that. क्या ये एक मंजिला इमारत के बराबर लाइमस्टोन का बोल्डर है सर, रोल्ड इन डेब्रिस इन फैक्ट, और ये कहां से आया है? ये बलिया नाला के बेस से आया है। Came down to बलिया नाला। इतने बड़े बोल्डर को क्या ये पाएंगे? इसमें जो सरियां यूज कर, हमारे घरों में वेंटिलेटर हम यूज करते हैं, क्या ये वेंटिलेटर वाली सरिया के द्वारा बनाई गई प्रोटेक्शन वाल इतने बड़े बोल्डर को क्या सहन कर पाएगी? दिस इज द फेट ऑफ नैनीताल। मैं किसी भी हालत में एडमिनिस्ट्रेशन को 100% जिम्मेदार नहीं मानता, किसी भी हालत में। We are equally, we should equally be cursed for that, what we have done for Nainital. Let us see next slides. ये कृष्णापुर है।
देखिए 52 सेंटीमीटर है इसका जो सबसाइड कर रही है जमीन। ये एक जगह नहीं है सर, ये 5 किलोमीटर तक है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कृष्णापुर के लोग अभी तक क्यों कृष्णापुर में रह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, उनके पास कोई जगह रहने की है ही नहीं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, 5 किलोमीटर तक हर जगह, हर आपको सर बताऊं मैं, हर 50 मीटर पर इस तरह के दरारें हैं वहां पर। लुक एट इट, पूरी की पूरी फट गई। हॉरिजॉन्टली कहिए, वर्टिकली कहिए, पूरा का पूरा फट गया है, कुछ नहीं बचा है वहां। कुछ मैं आपको गूगल वो दिखा दूं तस्वीरें, ये मैंने प्रोक्योर करी थी IIRS से। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। इन टर्म्स ऑफ हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कवर और सेटलमेंट डेंसिटी और इरोजन 3 तरह से जाते हैं। 3 पिक्चरें दिखाऊंगा आपको और उसके बाद में आप स्वयं देखिएगा। दिस इज, ये 2010 की पिक्चर है। 2010 में 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 रिडक्शन इन ग्रीन कवर, इंक्रीज इन सेटलमेंट डेंसिटी, रिडक्शन इन ग्रीन कवर अगेन एंड इरोजन 2 और 3 में, इसमें और इसमें इरोजन देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट तस्वीर दिखाता हूं 2017 की। इसमें देखिए आप 145 फर्दर रिडक्शन इन ग्रीन कवर, फर्दर इंक्रीज इन सेटलमेंट एक्टिविटी एंड फर्दर रिडक्शन इन ग्रीन कवर एंड ऑफ कोर्स इरोजन। लुक एट इट, 2, 3 वहां भी देखा था, यहां भी देखा था। नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं क्विकली, टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। ये एक मैंने रेड लाइन मार्क करी है यूं, ये है 2017 और यह है 2006। 2006 में इस रेड लाइन के लेफ्ट साइड में आकर के देखिए, राइट साइड में आकर के ग्रीनरी दिखती है नहीं, बहुत सुंदर सी ग्रीनरी है 2006 में। यही रेड लाइन को मैं यहां लेकर के आऊंगा, कितना सेटलमेंट बढ़ गया है। Even a layman can understand what has happened. Who gave this permission? किसी ने, सबके सब तो अवैध घर नहीं होंगे वहां। I am sure सबके सब इनवैलिड घर, वो वाले घर नहीं होंगे जिनका नक्शा पास नहीं कराया है। बट दिस इज व्हाट इज दिस। एंड आप इधर आइए, इस वाली लाइन में, येलो वाली में, ये फ्लैट्स है, यहाँ का फ्लैट ये है। यहां पर जाइए, ये लाल लाइन, रेड लाइन जो है उसके लेफ्ट साइड में आइए, द सेटलमेंट हियर, compare the settlement with this. It's a huge difference. And just within a span of 10 years or 11 years, not more than that. 3rd May 2016, I was away from the country. Somebody sent me WhatsApp में नैनीताल की फोटो। उसने कहा कि नैनीताल का पानी तो बहुत नीचे चला गया। मैं लेक कोरिंग पे काम करता हूँ बेसिकली रिसर्च के वाइज से। उसने कहा कि आपको पैसे नहीं खर्चा करने पड़ेंगे, आप वहां आकर के गड्ढा खोद लीजिए और अपना सेडिमेंट निकाल लीजिए। आई हैड टू प्रीपोन माई टिकट, ऑल्दो लॉस्ट ओनली 15,000 रुपीज। एंड 3rd May व्हेन आई केम टू नैनीताल, आई वेंट टू PWD। हमने कहा एक हमें JCB दे दीजिए हमको सैंपल निकालने का। दिस फेलो चीफ इंजीनियर वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। ही सेड ले लीजिए आप एक। इसको जाकर के मैंने सैंपल करना शुरू करा। उसके ये देखिए, ये हुड है, ये हुड है। इस तरह से सैंपल करना शुरू करा मैंने इस एरिया को। आगे दिखाता हूं, इस तरह से सैंपलिंग करना शुरू करा। ये अभी भी हुड है उसका, JCB का। आई यूज्ड इट फॉर 1.5 hours एंड पेड एब्सोल्युटली नथिंग, ऑफ कोर्स। एंड देन दिस लुक्स दिस, लुक एट इट, 4.9 मीटर बिलो रोड इन फ्रंट ऑफ आर्मी गेस्ट हाउस। तलीताल बस स्टॉप की बात हो रही है, आर्मी गेस्ट हाउस के सामने की। लेक 4.9 मीटर डाउन हो गई थी जो मेन रोड है, प्लस 1.7 इज माई प्रोफाइल। या दैट इज द टोटल इज अबाउट सर 6.6 मीटर्स। मैं इस झील का इस सेडिमेंट को 6.6 सेंटीमीटर तक निकाल करके ले आया। मीन्स मेरा सेडिमेंट 1.7 मीटर था एंड 4.9 मीटर वैसे ही रोड से नीचे आ गई थी। इसका मतलब समथिंग लाइक 7 मीटर्स। 7 meters means 20 feet, not small. This was the fate of Nainital in 2016. मैंने क्या करा, अपना एक प्रोफाइल बनाया. सेडिमेंट कलेक्शन मैंने आपको दिखा दिया. मैंने अपना सेडिमेंट प्रोफाइल बनाया एंड इस जगह को मैंने, इसके नीचे पूरा का पूरा ग्रेवल था, जेसीबी नीचे नहीं जा पाई सर, इससे नीचे पूरा ग्रेवल था. इस जगह को मैंने लेड टू 10 से डेट किया. द डेट वॉज 81,875 years BP. सिर्फ 1875 साल. एंड दिस इज मॉडर्न. Here was boulders, horrible boulders,
क्या आपकी परमिशन से मैं एक चीज, एक स्टेटमेंट कह सकता हूं जो मेरे दिमाग में कभी कभी आता है? ये वही टाइम था जब नैनीताल में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था 1880 का। क्या उसका मलबा इतना ज्यादा तलीताल तक भी पहुंचा होगा जहां जेसीबी नहीं जाई? सोचने की बात है ये, जस्ट थिंक ओवर इट। क्या वो मलबा जो झील के किनारे से या कहीं से भी गया हो, जेसीबी जब उसे तोड़ नहीं पाई उस मटेरियल को, तो क्या ये था? ऐसा तो नहीं था कहीं। और उसी भूस्खलन के बाद में देखिए पूरा वंडरफुल सेडिमेंट इकट्ठा जमा होना शुरू हुआ। दैट वाज द लॉस ऑफ सॉइल। भूस्खलन के पास खूब सारा सॉइल आया होगा उसके बाद में, एंड दिस वाज 140 years यहां से लेकर के यहां तक, एंड 130 सेंटीमीटर थिक सेडिमेंट deposited, almost 1 centimeter each year. Alarming, 30 times more than Bhimtal Lake, because Professor Pant has shown my research in Bhimtal. So Bhimtal was 30 times more than what Nainital is. That is what we are doing with the siltation of Nainital Lake. In addition to what we have done with Balianala. I come to Sukhatal, recharge zone of Nainital. मैंने कुछ साल पहले किसी अखबार में पढ़ा था कि सुखाताल को ब्यूटीफाई किया जाएगा, उसका जो बेस है उसको सीमेंटेड किया जाएगा, वहां फूड प्लाजा खोला जाएगा, किंडर का बच्चों के लिए वो छोटी छोटी चीजें, चिप्स की दुकानें खोली जाएंगी। क्या झीलें इस तरह के लिए होती हैं? मैंने अपने रिसर्च के दौरान में कम से कम 25 देश देखे हैं। एवरी कंट्री हैड लॉट ऑफ लेक्स, दे आर मोर सिंसियर अबाउट देयर लेक्स, और हमने अपनी लेक का ये हाल किया है। आश्चर्य होगा, ये लाल रंग जो है, दिस इज पेलियोसोर लाइन सर, द येलो इज प्रेजेंट डे ड्राई लेक, एंड दिस ब्लू इज प्रेजेंट डे ड्राई लेक, एंड दिस येलो इज लेक लेवल ड्यूरिंग मानसून। ये जो मैंने क्रॉस कर रखा है लेफ्ट साइड में, देखिए यहां मालूम है कौन सी बिल्डिंग्स हैं? 60% तो इसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है। किसको पकड़ लीजिएगा आप लोकल आदमी उसे कहते हैं, लोकल से कहते हैं कि घर मत बनाइए, आप ही ने अपनी बिल्डिंगें बना दी वहां पर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? लोकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इलीगल हाउसेस, ठीक है, मगर व्हाट यू हैव डन देयर, 40% of water would go to Nainital from Sukhatal. That is what, based on the underground mapping we had done. उसके बीचों बीच में एक मंदिर है। ये मंदिर का यहां पर पेलियोसोर लाइन है सर, मंदिर के ठीक बॉटम में, आपने ध्यान दिया होगा कभी। दिस इज 7 मीटर फ्रॉम टुडेज सरफेस फ्रॉम द लेक। क्या इसका मतलब है? द लेक वॉज डीप एटलीस्ट बाई 20 feet. Which was exact year I do not know, maybe before 90 or something like that. Yes, early 80s. So that means we have lost 20 feet deep water for a lake, which is area कितना होगा इसका? मेरे ख्याल से I'm not sure how much exactly. 2 hectares. 2 hectare area की जमीन का हम 20 feet पानी खो चुके हैं। ये हमने हैं? मोर देन दैट, वो हमने कर दिया है, हमने सब काम कर दिया है, वो हमने सब अरेंजमेंट कर रखा है अपनी आप की बर्बादी के लिए। और मैंने जैसे कहा कि हम लोग उसके लिए, हम भी जिम्मेदार हैं उसके लिए। और इसके सेंटर में एक नाला बहता है, पुराना वाला नाला जो आता है वो भी बहता है इसके सेंटर में। और ये सिर्फ अब 55 सेंटीमीटर रह गया सर। 2018 में जब मैंने मानसून के दौरान में इसको देखा था, दिस वॉज जस्ट 55 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द पीक मानसून। Compared to 20 feet or 7 meters, we have now only 55 centimeters during the peak season of monsoon. और इस बार तो इतना भी नहीं होने वाला है। मैंने जैसा कहा, इतनी जगह जाकर के हमने रिसर्च देख ली है। क्या कभी झील को किसी प्राइवेट आदमी को दिया जा सकता है? मैं किसी धर्म, मेरे लिए तो सब धर्म समान है, मैं किसी के अपोजिट में नहीं, बट दिस इज समथिंग विच हैज टू बी थॉट। क्या झील का पार्ट आप किसी को दान में दे सकते हैं? हु इज दैट अथॉरिटी हु हैज दिस मच गट्स टू गिव परमिशन टू समबडी दैट आधा झील आप ले जाओ? क्या यही हमारा कल है हमारी झीलों का? आफ्टर द लैंडस्लाइड, जैसा किसी ने बताया था, पंसर ने बताया था या पीयूष ने भी बताया था, वो लैंडस्लाइड था 18 सितंबर 1980 का। रिमेंबर इट, 1880 में
कब आए? 18 सितंबर को भूस्खलन हुआ था, जो पंजी ने जिसकी फोटोज दिखाई, जिसके बारे में पीयूष ने भी कहा था। ठीक 4 दिन के बाद बलिया नाला बरसों से उधड़ रहा है, हमने कुछ करा नहीं, मगर वहां ठीक 4 दिन के बाद 22 सितंबर 1880 को रैमजे की कमेटी बनी, जैसा पीयूष और पंत जी ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था? सिंपली, रेवाइंस टू बी लाइन्ड एंड राइविटेड। ये तो ब्रिटिशर्स ही कर गए ना, ये ब्रिटिशर ही, नाले तो सब ब्रिटिशर्स ही बना, हमने तो कोई नाला बनाया नहीं अब तक। फिशर्स लॉन्ग डीप क्रैक्स टू बी फिल्ड विद हार्ड क्ले, क्रॉस नहीं करा हमने। पीसी साहब के बंगले के उस तरफ हम एक टेम्परेरी जीपीएस हट बनाना चाह रहे थे, वहां पर एक डीप क्रैक में, उन दिनों नोकिया का जमाना था, 1100 रुपए वाले का मेरा मोबाइल गिर गया और मैंने 1100 रुपए का इनाम रखा हमारी यूनिवर्सिटी के मेरे फ्रेंड्स के लिए। मैंने कहा जो निकाल करके लाएगा 1100 रुपए दे दूंगा। लोगों ने कितनी लंबी, मीटर लंबी वहां सरियाएं डाल दी, बट दैट डिडंट कम आउट। इस तरह के केव्स, इस तरह के फिशर्स, व्हेन दे सेड, दे वर नॉट fools like us. They were really brilliant when they said that choke all these long fissures, cracks. इन सबको चोक क्यों नहीं करते? हमने नहीं किया। Further erection of buildings, quarrying and excavation of terraces to be absolutely prohibited on affected hill slopes. हमने नहीं करा। वो मैंने आपको गूगल इमेज दिखा दी। हमारी सेटलमेंट डेंसिटी बढ़ती चली गई, हमने वो कुछ नहीं करा जो उन्होंने हमसे कहा था कि ऐसा करिए करके। स्टीप स्लोप्स टू बी प्लांटेड विद ट्रीज, नो ग्रास कटिंग, हमने ऐसा कुछ नहीं करा। कोई ग्रास नहीं कोई ग्रास नहीं लगाई हमने, कोई स्लोप को प्लांट नहीं कराया। एन ऑनेस्ट एफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एन ऑनेस्ट एफिशिएंट एंड ट्रस्टवर्दी ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर ऑफ बिल्डिंग्स एंड ड्रेन्स हु शुड वर्क अंडर द सोल ऑर्डर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हमने ये किया? पता नहीं हमने किया या नहीं किया। हमने इसमें लिखा है, सही तो कर रखा है मैंने कहा एक कोई ऑफिसर तो होगा, मगर क्या उसने इस तरह का सब काम किया, कर पाया? मैं दोबारा रिपीट करूं आपसे, मस्तक को जितना भी डेकोरेट कर लीजिए आप, पैर तो लड़खड़ा गए हैं आपके। कुछ कहते ना पैर लड़खड़ाने लगे हैं, मैं कहता हूं पैर लड़खड़ा नहीं गए हैं, लड़खड़ा गए हैं भी नैनीताल के ऑलरेडी। भविष्य क्या होगा, आई डू नॉट नो माई सेल्फ। टू मैनेज नैनीताल वाटर्स वी मस्ट कंसिडर द इंटायर वाटर सेट एज ए यूनिट ऑफ मैनेजमेंट। कर सकते हैं तो टैप, रूफ, टॉप वाटर, मेक इट मैंडेटरी। आपको पानी मिलेगा नैनीताल के लिए, एक्स्ट्रा पानी तो मिलेगा, हर जगह होना चाहिए, मैंडेटरी कर दीजिए। जिनके स्लैंटेड रूफ्स हैं उनको भी कहिए कि किसी भी तरह से वहां पर अपना टैंक बनाए वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। सीमेंटेड रोड्स मस्ट बी कंसीडर्ड एज क्रिमिनल एक्ट। कई सारी बनाई, मैंने 2-3 रिपोर्ट दे दी। हमने कहा था आज से 10 साल पहले सर, हमने कहा था ब्रिक्स लगा दीजिए, कम से कम पानी कुछ तो नीचे जाएगा, परकोलेट करेगा। पूरी तो आपने शहर के चारों तरफ सीमेंटेड रोड बना दी। आई डू नॉट नो हु वाज दैट वंडरफुल इंजीनियर जिसने ये सब, वाटर परकोलेट नहीं होता, सब सरफेस वाटर बनता नहीं है, झील में जाता नहीं है, झील रिचार्ज कैसे होगी? सूखा ताल सुखा दिया है और ये सीमेंटेड रोड्स बना दिया है, फिर उसके बाद आगे को पानी परकोलेशन होता नहीं है, अब सब सरफेस वाटर बनता नहीं है, झील सूखी की सूखी रह जाती है। इरोजन कंट्रोल, फॉरेस्ट रिजेनरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड लैंड, ये हमको बहुत जरूरी करना है। और उसके बाद में मैप स्ट्रीम्स, कितने स्प्रिंग्स थे? हमने सुना है 40-50 स्प्रिंग थे, मैंने तो देखे ही नहीं इतने स्प्रिंग। 2-1 स्प्रिंग देखे हैं मैंने मारुति शाह के घर के आसपास, बस हो गया, शेष पता नहीं कहाँ चली गए। फिर बताइए, हाँ, तो कोई कितने हमारे पास स्प्रिंग्स बचे हुए हैं नैनीताल टाउन के अंदर? ये आउटस्कर्ट्स में भी नहीं जाते, नैनीताल सराउंडिंग नैनीताल ही ले लेते। हैव वी मेजर्ड देम, हैव वी मॉनिटर्ड देम? वो कौन करेगा? ये जियोलॉजिस्ट करेंगे या वो जो 5 स्टार होटल में बैठ करके प्लानिंग करते हैं वो करेंगे? वो तो हम करेंगे ना, जब हमसे कहोगे तभी तो करेंगे ना, जब हमको इंस्ट्रक्शन दोगे तभी तो करोगे ना। अवैतनिक काम तो कोई करने से नहीं रहा आज की लाइफ में। मैं 2 टूक शब्दों में कह रहा हूं, मैं किसी विद्यार्थी को भी लगाऊंगा, सी और ही ऑल्सो नीड्स मंथली रेम्यूनरेशन। एम आई करेक्ट और नॉट? अगर ऐसा क्यों नहीं ऐसा होता है? अगला, मेक यूज ऑफ ग्रास रूट रिसर्चेज। जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, बेवकूफ नहीं हैं हम रिसर्च जब करते हैं तो इंटरनेशनल जर्नल्स में छाप लेते हैं, अवार्ड ले जाते हैं। हम तो यही, हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। मेरी इस समय कम से कम 6 रिपोर्ट्स ऐसी होंगी जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठी हुई, 6 रिपोर्ट्स, नथिंग हैपेंड, नोबडी केम। रिपोर्ट दे दीजिए,
एक बार एक सज्जन हमारे पास में आया, जब माल रोड गिर गई तो चीफ इंजीनियर आए पीडब्ल्यू के, उन्होंने कहा जरा बताइए क्या होगा। मैंने कहा कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जानते हैं, जो बताता है कि आपका जो रॉक है कितना वो है सशक्त है। मैंने कहा टीएमसी जानते हैं, टोटल मॉइस्चर कंटेंट करा है, 50 से ऊपर हो तो आप इस तरह झील के किनारे रोड ही नहीं बना सकते। व्हाट ही सेड, आई वाज सरप्राइज। ही सेड मैंने सब आपकी बातें सुन ली, मगर मेरे को ऊपर से ऑर्डर है कि रोड बननी है अभी। बनाइए सर बनाइए। कल फिर जाएगी वो, मैं सच कह रहा हूं आपसे, कल फिर जाएगी वो। और ये फॉल्ट जो मैंने बताया जब ये एक्टिवेट हो गया, आई एम श्योर एज ए जियोलॉजिस्ट मुझे मालूम है कि ये फॉल्ट एक्टिव हो गया, ये हर साल आपको परेशान करेगा। मैं ग्रैंड होटल कभी नहीं गया हूं आज तक, मगर 100% दावे के साथ कहता हूं कि ग्रैंड होटल के अंदर कम से कम 2 दर्जन क्रैक्स मिलेंगे आपको, वाइडर क्रैक्स, क्योंकि वो भी वो 7 नंबर वाले रास्ते के फॉल्ट के रास्ते में आता है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज मुझे कहनी है, अगर आपको कोई कमेटी बनानी होती है तो आप वाडिया जाते हो, आप आईआईटी रुड़की जाते हो। इंटरेस्टिंगली सर, 2 बार वाडिया इंस्टीट्यूट वाले मेरी रिपोर्ट ले, तो अपनी लो भाई ले जाओ। आपने अपने जो घर में बैठे हुए लोग हैं उनका कभी सम्मान करने की सोची भी नहीं। इनफैक्ट यहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति भी होना चाहिए जिससे मैं ये कह सकता हूं हम स्टेट यूनिवर्सिटी ही सही, कोई बात नहीं है, मगर जनाब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फेलोशिप अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट फेलो आपके जियोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 हैं। क्या आपके इतने उत्तराखंड में विश्वविद्यालय हैं, क्या किसी विश्वविद्यालय में एक साथ 2 हम्बोल्ट फेलो को देखा है आपने? वो बेवकूफ तो नहीं होंगे, उनके पास कुछ न कुछ ब्रेन तो होगा ही। एक बार तो 3 लोग थे, उनमें एक चले गए बनारस चले गए, एक ही डिपार्टमेंट में स्टेट यूनिवर्सिटी में आपके घर के अंदर 3 लोग इस तरह से। भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार जियो साइंस अवार्ड 2 लोग हैं आपके वहां। चले जाइए आईआईटी में देख लीजिए, चले जाइए वाडिया में देख लीजिए, चले जाइए गढ़वाल यूनिवर्सिटी में देख लीजिए। आई कैन गारंटी यू विल नॉट गेट सच काइंड ऑफ पीपल। क्या इन लोगों के पास में ब्रेन्स नहीं होते होंगे? क्या इनको ऐसे ही मिल जाते होंगे अवार्ड्स, बिना किसी काम के, बिना किसी हार्ड वर्क के ही मिल जाते होंगे? मगर यही इसीलिए कह रहा हूं, जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रोफेसर ए के शर्मा, उनकी थीसिस का एक पार्ट ही है नैनीताल का स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। इसका मतलब उन्होंने इंच इंच जमीन देखी होगी, वो उससे ही मस्ट बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी फिशर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उनकी सहायता क्यों नहीं लेते? हमने कौन सा आपसे कह दिया हमें लखपति बना दीजिए? हमने हर आदमी सोचता है कि मुझे कमेटी में ले लो, हम क्यों जाएं किसी कमेटी में? हमको तो सिंपली कहिए कि इस तरह से क्यों। मैं भी नैनीताल का बासिंदा हूं, मुझे भी नैनीताल पसंद है, और यूं भी मैं ऐसी जगह खड़ा हूं, जैसे मैंने कहा प्रदीप और मैं तो ऐसी जगह खड़े हैं जो बलिया नाले के मुंह के ऊपर है। एक बार जीआईसी के ऊपर में आ गई और वो क्लर्क क्वार्टर को तोड़ गई, सबसे पहले आप और मैं ही जाने वाले। अब वो तो पता नहीं है कितने आपने फ्रैक्चर्स, जॉइंट्स, कितनी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी करी है वहां। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो बहुत अच्छा सजेशन जो 2 साल से मेरे दिमाग में चल रहा है, मैंने कई बार मीडिया को बोल दिया इसके बारे में। ये है बलिया नाला, ये एक्टिव जोन है। यहां से मियांडरिंग कट करना चालू करता है इस जगह से, और इधर जगह सर जो पंसार ने बताया था कि ऊजिंग आउट, वो हरिनगर धारा जो है, हरिनगर के पानी से कोई मतलब नहीं है झील के पानी का। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ लेक वाटर विद हरिनगर स्प्रिंग। हरिनगर के स्प्रिंग को छोटा सा टैप करके यहां लाइए और यहां पर से बलिया के पानी को टैप कर लीजिए और पूरा का पूरा लिफ्ट कर दीजिए नैनीताल। कितने रुपए लगेंगे? कुछ लाख रुपए। हमने सुना है कोई 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया है बलिया नाला में। आपको 3 मई 2006 की जैसी 2016 की जैसी पोजीशन आएगी ही नहीं कभी। आप हरिनगर के उससे 3 फायदे होंगे आपको। नंबर 1, ये ओल्ड बलिया स्लाइड जो है ये अंडर कटिंग नहीं होगी, इसमें अंडर कटिंग नहीं होगी तो धंसेगा नहीं। समझ रहे ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस जगह पर आप हरिनगर का पानी यहां से ले जाइए, इस जगह पर एक डिक्की तो बनानी पड़ती होगी शायद, मैं इंजीनियर नहीं हूं। और ये वाला पानी जो बलिया का ऑलरेडी है, इन दोनों को यहां पर टेप कर लीजिए और उसको लिफ्ट कर दीजिए ऊपर। आपके पास नैनीताल में पानी ही पानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी की,
किसी भी तरह के कोई उससे मैंने कहा 3 फायदे होंगे। फायदा नंबर 1, ये यहाँ से अंडरकट नहीं करेगा और ये वाला एरिया जो मैंने कहा 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर पर ईयर तक जा रहा है, ये धंसने से बच जाएगा। नंबर 2, हरिनगर का पानी खाली बर्बाद हो रहा है इस समय। हरिनगर का पानी जब निकल रहा है तो फ्रेजाइल रॉक्स के थ्रू निकल रहा है, परकोलेट हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, वो भी बच जाएगा। और तीसरा, आपको नैनीताल में पानी ही पानी मिलेगा। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑडियंस के साथ में यह है कि मेरी बात पहुंचाएगा कौन? किसी ऐसे आदमी के दिमाग में जिसको लगे कि ये आदमी जितना भी बेवकूफ हो, बात तो थोड़ी सही कह रहा था। क्या हम लोगों को ये मालूम नहीं? अच्छा फिर बताऊं, अगर ये एरिया स्लाइड करा और एकदम से धंस गया तो वीर भट्टी वाले जितने भी एरियाज हैं, जो एक स्कूल भी है वहां बहुत बड़ा, ये पूरा का पूरा स्लाइड जाएगा वहां। इट विल फॉर्म अ टेम्परेरी लेक. Any temporary lake has to breach out. The moment that lake breaches out, there would be catastrophe in Lower Gate here, Julie Court, and even Suryajala. So that is how is Balyanala thing. This is a petition from a howling town. हुंक रहे हैं, बहुत ज्यादा कह रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कह रहे हैं, प्लीज हमारी जो प्लिया है उसे या तो रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो, डिपेंड्स अपॉन यू. पार्टिसिपेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाउस टू हाउस, ईच ऑफ अस abide by rules, especially those who are residents of Nainital. Remember, officials will go and come. कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर आ जाते हैं, जब तक उनको यहाँ का भूगोल और इतिहास समझ में आता है तब तो उनका ट्रांसफर हो गया होता है. वो इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्यों? Until or unless we are responsible, until or unless we raise our voice as locals, as scientists, as thinkers, as environmentalists, as historians. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such an eye-opening talk. Now, in continuation of this brainstorming session, I would like to welcome our next eminent speaker, Dr. Anand Sharma sir, to please share his talk on challenges in predicting extreme weather conditions, events in Himalayas, implication for disaster management and sustainable development. Over to you, sir. Dr. Joshi ji and Professor Pradeep Goswami ji for giving me this opportunity to interact with all of you. Respected all senior professors, experts, ladies and gentlemen, and dear students. Dr. Pant और डॉक्टर कोटलिया ने हमें जमीन के नीचे भी ले गए, पानी में भी ले गए, और मैं थोड़ा आपको ऊपर लेके जाता हूँ अखबार मतलब एटमॉस्फेयर में. तो जैसा कि आप जानते हैं, वेदर इज ए डायनामिक थिंग. इट वाज नेवर स्टैटिक. इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग. इट हैज चेंज्ड इन द पास्ट, इट्स चेंजिंग नाउ, एंड दैट क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. जैसा कि आप देखते हैं, सुबह सुबह ठंड होती है, दिन में सूरज निकल आया, धूप आ गई, शाम को फिर सूरज ढल गया तो ठंडी हो गई. तो जैसे दिन में आपको चेंज हो रहा है, वैसे ही क्लाइमेट ऑल्सो चेंजेस. एंड वेदर इज समथिंग व्हाट यू, I mean, climate is something what you expect and weather is what you get. This is the basic difference between weather and climate. So now this, you have natural climate variability. In addition to that, due to anthropogenic influences, we have a huge population, we have to feed them, and for that आपको industries चाहिए, उनके लिए मकान बनाने, गाड़ियाँ चाहिए, and in doing everything you are emitting more and more greenhouse gases. And you know these greenhouse gases as a property, it doesn't allow the outgoing long wave radiation to go back into the space. So as these greenhouse gases absorb this outgoing terrestrial radiation, temperature of the Earth's atmosphere is increasing. And we call it as global warming. So now this global warming, scientists say, are leading to climate change, which is again an added pressure to already existing climate variability. क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो नेचुरल रीजन के कारण है,
चाहे वो अर्थ की टिल्टिंग के कारण हो, सोलर सनस्पॉट्स के कारण हो, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण हो, जितने भी नेचुरल फिनोमेना है उसके चलते जो वेरिएबिलिटी है दैट इज क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। और जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के कारण हो रही है ग्रीन हाउस, दैट वी कॉल क्लाइमेट चेंज। तो ये जरूर समझना होगा कि दोनों में डिफरेंस है, नहीं तो अभी क्या होगा, जो भी वेदर में होगा, तापमान बढ़ा या घटा, बारिश जल्दी आई, बड़ा इजी है बोल दो क्लाइमेट चेंज। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, क्योंकि 100 साल 200 साल पहले भी आप चले जाइए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था और ग्रीन हाउस गैसेस वाज जस्ट एट द राइट बैलेंस, जब भी तूफान आते थे और बड़े बड़े तूफान आए हुए हैं, फ्लड्स आते थे, एक्सट्रीम रेनफॉल हुई है। 1880 में आप देख लीजिए, उस समय भारी बारिश भी हुई, लैंडस्लाइड भी हो गए। तो व्हाट इज द डिफरेंस देन? अब सिर्फ यही है कि इनका कहना है जो एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर आ गया उससे थोड़ी वेरिएबिलिटी और बढ़ गई। तो यानी कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है अब जो आपके इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वो और बढ़ जाएगी या बढ़ रही है। और सभी जगह सिग्नल्स ऐसे नहीं है, बट हाँ कुछ जगहों पे सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं कि भाई एक्सट्रीम वेदर जो पहले के रिकॉर्ड थे वो टूट गए। और आप लोगों का साइंटिस्ट का मानना है कि अंडर द बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो, बिजनेस एज यूजुअल का मतलब है कि इसी रेट पर हम ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करते रहे तो 2100 तक ये तापमान जो धरती का है वो बढ़ जाएगा करीब करीब 5 डिग्री तक। और उनका कहना है दैट विल बी क्वाइट कैटास्ट्रोफिक, ये साइंटिस्ट का मानना है। और आपको ये मालूम होगा कि कहते हैं कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जिनमें से एक है ट्रीटी पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि भाई ग्लोबल टेम्परेचर को हमको 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने देना है। अभी जो हमारा 100 इयर्स का डेटा, हम पास डेटा देखें 1800 लेके 1901 तक, तो जो हमारा टेम्परेचर करीब करीब ग्लोब का टेम्परेचर अराउंड 1 डिग्री बढ़ गया है। तो उनको कहना है ये काफी बढ़ चुका है, 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ा तो इसके रिपरकशंस ज्यादा होंगे, यानी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी सब बढ़ जाएगी। अच्छा, उससे क्या होगा आपका? दैट मींस यू हैव सम पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग दिस एज क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट chaos। अब नई नई टर्मिनोलॉजी निकल रही है। उनका मानना है इस सब के चलते जो है वनरेबिलिटी एंड रिस्क हैज इंप्रूव्ड, इंक्रीज्ड। खासकर किन लोगों के लिए रिस्क बढ़ गया है, जो कि जैसे आप कोई बलिया नाला के पास रह रहा है, कोई नदी में एनक्रोचमेंट करके घर, क्लाइमेट रिस्क, दीज पीपल आर हाईली वनरेबल। उनकी लाइफ जा सकती है, उनके लाइवलीहुड जा सकती है, उनकी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। तो यानी कि उनके जब क्लाइमेट रिस्क बढ़ गया है तो व्हाट शुड वी डू? We should make the societies resilient. Resilient means to cope. They should be in a better position to cope up with these natural hazards. तो वो कैसे हो पाएगा? resilience कैसे लेके आए हम लोग? और सिंपल भाषा में resilience यदि मैं बोलना चाहूँ आपको तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई तेज हवा चलती है तो आप देखते हैं क्या होगा, बड़े बड़े पेड़ तो उखड़ जाते हैं कई बार, और जो घास होती है वो सिर्फ झूलती है, उसको कुछ नहीं होता। तो जब भी लोग सोचते हैं वो बड़ी नाजुक सी है, घास को नुकसान होगा, नुकसान मगर पेड़ को होता है। तो कहने का मतलब ग्रास इज रेजिलिएंट। तो हमने भी अपनी सोसाइटी को रेजिलिएंट बनाना है। ये ध्यान रख लीजिए, हैजार्ड जो है, नेचुरल हैजार्ड कभी खत्म नहीं होंगी। जबकि बात कही जा रही है क्लाइमेट चेंज के लिए दो ऑप्शंस है हमारे पास। एक हमारे पास ऑप्शन है मिटिगेशन और एक है अडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है और टारगेट रखा है बाय 2050 डीकार्बनाइजेशन और जीरो कार्बन इकोनॉमी। हमें बिल्कुल कार्बन बिल्कुल होना नहीं चाहिए, जीरो कार्बन होगा। तो क्या उसके बाद आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, देयर आर ऑलरेडी सो मेनी ग्रीन हाउस गैसेस और नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी तो है ही। तो हमें फिर क्या हमारे पास ऑप्शन रह गया? वो मिटिगेशन तो करना है, हमें पोल्यूशन को कम करना है, साथ साथ हमें अडेप्टेशन पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये ध्यान रखना होगा। तो अब सवाल ये है कि हैजार्ड रहेंगे, ध्यान रख लीजिए, हैजार्ड कभी खत्म नहीं होगी। और ये भी ध्यान रख लीजिए हैजार्ड के अपने फायदे हैं। फ्लड नहीं होगा तो आपके गंगा यमुना यूपी और बिहार के जो प्लेन्स हैं उनमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, सारे न्यूट्रिएंट्स तो हिमालय से गंगा लेके आ रही है। थंडर स्टॉर्म नहीं होगा तो लाइटनिंग नहीं होगी, लाइटनिंग नहीं होगी तो आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी। साइक्लोन नहीं आएगा कोस्टल एरियाज में तो वहां पे तमिलनाडु वगैरह में तो पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ग्राउंड वाटर पूरा वहां से रिचार्ज होता है। डस्ट स्टॉर्म, आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जितने भी डस्ट स्टॉर्म से सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाके डंप कर देते हैं आपके एरिया के अंदर। कितने बेहतरीन। तो नेचर जो है, जैसे कहते हैं ना वीट, नेचर नोज नो प्लांट एज वीट। नेचर की कोई भी वीट नहीं, एक छोटा सा पौधा भी लगा आपके लिए यूजलेस हो सकता है मगर वो सॉइल को बाइंड कर रहा है, इरोजन को रोक रहा है। सिमिलरली ऑल दिस हैजार्ड्स वी नीड देम। साइक्लोन ट्रांसफर सो मच ऑफ एनर्जी।
इक्वेटर में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में बिकॉज सन इज ओवरहेड, दीज आर एनर्जी सरप्लस एरियाज, और बाकी के जो एरियाज हैं वो दीज आर एनर्जी डेफिसिट एरिया। तो ये जितने भी वेदर सिस्टम्स हैं, दे आर मैकेनिज्म टू शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम हाई एरिया टू लो एरिया। तो ये ध्यान रख लीजिए, हैजार्ड जो है उनका अपना अपना एक रोल है। तो हैजार्ड रहेंगे ही बिल्कुल, हमको उनके साथ मिलके रहना है। हाँ, अब सवाल है कि वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, रिस्क बढ़ रहा है, क्लाइमेट रिस्क, तो हम लोगों को रिस्क को कैसे कम करना है और हैजार्ड को हम डिजास्टर में ना कन्वर्ट होने दें, दैट इज आवर जॉब। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर दैट वी हैव टू डेवलप अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम मींस जो भी हैजार्ड है, चाहे एक्सट्रीम रेन का हो, चाहे टॉर्नेडो का हो, थंडरस्टॉर्म का हो, यदि मैं आपको पूर्वानुमान दे देता हूं पहले, तो क्या होगा? प्लैनेट्स को मालूम है, जनता को मालूम है, आप जो खतरे वाली जगह से दूर हो जाएंगे। बाढ़ आ रही है, नदी में बाढ़ आके चली जाएगी बाढ़, मगर यदि आप अंदर ही हैं, घर भी वहां बना के रखेंगे, तो आपकी वल्नरेबिलिटी तो बढ़ी रही है, और बाई चांस आप सो रहे हैं और रात को कुछ ऐसा हो गया तो नुकसान तो होना ही होना। तो बेसिकली हमको ध्यान रखना है, एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम में 4 कंपोनेंट है। पहला है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस। तो ये एक और रिकमेंडेशन होना चाहिए। क्या हम लोगों ने उत्तराखंड की हम बात करें तो क्या हमारी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस मैपिंग पूरी हो गई है? कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, कुछ पॉकेट्स में हो गई है, रोजेला जी बेटर जानते होंगे, मगर जब तक पूरी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस नहीं होगी, आपको मालूम होना चाहिए कौन से लोगों को ज्यादा खतरा है। मान लीजिए अभी बलिया नाले के आसपास जो आप कुछ बात कर रहे थे, अब आपको पता है दैट शुड बी आवर फोकस एरिया। यदि कुछ कल को प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम लोगों को उनको निकालना है। तो क्या इस तरह के एनालिसिस हमने सब जगह कर दिए? आप कुछ कृष्णापुरी की बात कर रहे थे, क्रैक डेवलप हो रहे, तो अभी दिस इज टाइम टू एक्ट। आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के पता है कि ये खतरे वाले एरिया, कहीं भारी बारिश आ गई और क्रैक्स में पानी चला गया तो पूरे एरिया को काट देगा वो। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस जो पहला कंपोनेंट, जो कि चाहे वो कहीं भी हो पूरे इंडिया में, वो नहीं हुआ है प्रॉपरली। तो कॉम्प्रिहेंसिव वल्नरेबिलिटी एनालिसिस पहला आपका एक रिकमेंडेशन होना चाहिए जो मस्ट है। दूसरा कंपोनेंट आता है ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, व्हिच इज डन मेनली बाय द इंडिया मेट डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या इश्यूज है हमारे पास? जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, चाहे वो सरफेस की ऑब्जर्वेशन हो, चाहे अपर एयर की, 2 तरह की ऑब्जर्वेशन है। आपने देखा होगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल जो है हम लोग मेजर करते हैं 4.5 फीट के आसपास। ये पूरे ग्लोब में एक ही लेवल तय किया गया। विंड लेते हैं हम लोग 10 मीटर्स के करीब करीब विंड मेजरमेंट्स। अब ये तो हो गया। अब कई लोग सोचते हैं कि हमें वेदर प्रेडिक्शन करना है तो सरफेस लेवल पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो तो हमारा काम चल जाएगा। नहीं, एटमॉस्फेयर इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए टेम्परेचर 1 किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर है, 3 किलोमीटर पे कितना है, 6 पे कितना है, 12 पे कितना है, ऐसे ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेशर कितनी है, विंड स्पीड क्या है, डायरेक्शन। तो ये आप कैसे पता करेंगे? सरफेस पे थोड़ा अच्छा थर्मोमीटर लगा दिया आपने, ले लिया, इंस्ट्रूमेंट लगा दिया आपने, अब 1 किलोमीटर पे कैसे नापेंगे? किसी को आइडिया है? How do we get the information about wind speed, direction, temperature, humidity at 1 kilometer? हम लोग उसके लिए स्पेशल बैलून्स छोड़ते हैं, हाइड्रोजन फिल्ड बैलून्स, ट्वाइस अ डे एट नंबर ऑफ 18 लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। और इन उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट भी लगाते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं और उसको फिर ट्रैक करते हैं, कहते हैं रडार के माध्यम से, और ये रेडियो सिग्नल से हमको सारा डेटा आता है। और उस डेटा को फिर नेचुरली सरफेस चार्ट को पे सरफेस का डेटा प्लॉट होता है, अपर एयर चार्ट पे अपर एयर डेटा होता है। 25 साल पहले ही शायद हम मैनुअल करते थे सारा, इट यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम, और प्रेडिक्शन के लिए टाइम कम रह जाता था। अब ये सब ऑटोमेटिक होता है। वी हैव न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स, पूरे मॉडल हैं हमारे पास, और वो कंप्यूटराइज्ड मॉडल जो है सुपर कंप्यूटर्स पे सारा डेटा जाता है। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि मुझे उत्तराखंड का वेदर फोरकास्ट करना है तो मुझे उत्तराखंड का डेटा तो चाहिए ही चाहिए, मुझे आसपास के स्टेट का डेटा चाहिए, मुझे आसपास की कंट्रीज का डेटा चाहिए। एटमॉस्फेयर हैज नो बाउंड्रीज, मुझे पूरे ग्लोब का टेम्परेचर, पूरे डेटा चाहिए। एंड इट बिकम्स, आई डोंट नो हाउ मेनी 100 टेराबाइट्स ऑफ डेटा, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो नॉर्मल कंप्यूटर काम नहीं करेगा, यू नीड सुपर कंप्यूटर्स। अच्छा, दूसरी बात है कि डेटा, क्या आपके पास ऑप्टिमम डेटा सेट है, पूरा डेटा सेट है, स्पेशली इन ए टेरेन जहाँ की ओरोग्राफी बहुत कॉम्प्लेक्स है, यू हैव वैलीज, यू हैव हिल्स, तो सब जगह हमारे पास डेटा नहीं है। और डेटा नहीं होगा तो आप मॉडल कैसे डेवलप करेंगे? तो व्हाट यू नीड इज हाई डेंसिटी नेटवर्क, और वो भी हाइट पे। अब अभी क्या है, ज्यादातर आप देखेंगे एक्सेस सब लोग वैलीज पे लगा देते हैं जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो इजी जाना। हमें तो मिड लेवल पे भी चाहिए, टॉप पे भी चाहिए, और खासकर 3500 मीटर एंड अबव तो ऑब्जर्वेटरी बहुत कम है। तो हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है ग्लेशियर्स में जो जिस तरह से बातें हो रही, कितनी वार्मिंग हो रही है, वो तो सिर्फ हाइपोथेटिकल है या लैब रेट से आप निकाल ले रहे हैं। सो यू नीड हाई डेंसिटी नेटवर्क। तो सबसे बड़ी एक और ये बड़ी समस्या हमारी
कितनी ऑप्टिमम हो, तो ऑप्टिमाइजेशन की भी एक स्टडी चाहिए और डेफिनेटली हमें नेटवर्क को इम्प्रूव करना है। अपर एयर नेटवर्क तो सिर्फ देहरादून में लगा है, हमारे पास और कहीं ही नहीं। अपर एयर डेटा जो बैलून से हम लेते हैं, तो उसका नेटवर्क को भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो ये हो गया पहला काम। जब आपके पास ये होंगे, एक्चुअली डेटा नहीं है हाई डेंसिटी आपके पास, तो आपकी समस्या क्या आ गई, आपके पास वैली स्पेसिफिक मॉडल्स नहीं है। आपकी अलग अलग वैलीज में अलग अलग ओरोग्राफी है, तो उसके लिए मेजो स्केल मॉडल चाहिए। मॉडल भी आपके अलग अलग होते हैं। एक होता है ग्लोबल जनरल सर्कुलेशन मॉडल, जिससे आप वेदर फोरकास्ट करते हैं। फिर सिनॉप्टिक स्केल मॉडल्स होते हैं, मतलब ये आपके पास मेजो स्केल का मतलब है 10 किलोमीटर से लेके करीब 100 किलोमीटर के इतने दायरे के लिए आपके पास स्पेसिफिक मॉडल चाहिए। तो उसमें भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी कहीं ज़्यादा नहीं हो रही है, तो हमारे IITs को ये काम सौंपा जा सकता है और इस तरह के जो है वेरी स्पेसिफिक मॉडल हम लोगों को डेवलप करने होंगे। जब भी आप उस जो लोकल वेरिएबिलिटी हो रही है थोड़े से एरिया के अंदर, जो आप कहते हैं हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हो जा रहा है, जब भी आप कैप्चर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कैप्चर कर पाएंगे। इसी के साथ जुड़ा हुआ था आपका रडार नेटवर्क। अब जो छोटे छोटे एरिया में हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हो जाता है, आप उसको कैसे पकड़ोगे? सैटेलाइट से आप जरा एक स्पेक दिखाई देगा आपको, आपका मतलब उसका रेजोल्यूशन इतना हाई नहीं, आप नहीं पकड़ पाएंगे उसको, और थोड़ा डेवलपमेंट करने में उसको पिक्चर जब तक आती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और रेडार जो है इसके लिए खासकर वो एकदम बहुत अप्रोप्रिएट है। और अभी मैंने रेडार लगवा दी, मुक्तेश्वर में एक रेडार लगवाया है, अपना यहाँ पर सुरकंडा में मेरे रिटायरमेंट के बाद लगाया रेडार, लैंसडाउन में मैंने आर्मी से जमीन ले ली है, वो जल्दी हमारे पास वहाँ भी रेडार लगेगा। लेह में हमने रेडार लगा दिया है, जम्मू में रेडार लगा दिया, शिमला भी के यहाँ कुफरी में रेडार लगा दिया। तो अभी हिमालय में अभी कुछ 2-3 साल पहले आप चले जाएं तो हमारे पास कोई भी नेटवर्क नहीं था रेडार का। अब ये हम लोगों ने रेडार का नेटवर्क को बढ़ाया है, और वो भी मैं नहीं कहूँगा कि अप्रोप्रिएट है भी। अभी हम जब आगे इसको डेटा आएगा तो मालूम पड़ेगा कि और रेडार्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप हिमालय में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो करीब 150 किलोमीटर एज अ क्रो फ्लाइज पूरा आपका हिमालय कवर हो जाता है। तो आप एक रेडार लगाएंगे, हो सकता है वो आगे उसके ऊंचा पहाड़ आ गया, उस पीछे आपको कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसलिए हमें नेटवर्क इसकी डेंसिटी को आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा। तो एक और ये इशू है। अच्छा, जब ये सब हो जाएगा उसके बाद में आप और बेहतर लोकेशन स्पेसिफिक छोटे एरिया की फोरकास्ट दे सकेंगे। सिस्टम तो जो लार्ज स्केल होता है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, जैसे केदारनाथ का केस था, वो एक लार्ज स्केल सिस्टम था, उसको पकड़ना आसान होता है, उसको 3-4 दिन भी पकड़ सकते हो आप। मगर जो मेजर स्केल होता है, थोड़े से एरिया में जो बनता है, आपने 2:30 बजे ऑब्जर्वेशन ली, कुछ भी नहीं है। आपने 5:30 बजे ऑब्जर्वेशन ली, हम लोग 3-3 घंटे में ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। पर बीच में क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया और मर भी गया, और वो पूरी लाइफ साइकिल कहीं पकड़ में नहीं आई, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो 3-3 घंटे, आप हर मिनट तो ले नहीं सकते आप। उसी के लिए आपका रडार बना है, उसी के लिए आपके मेजर स्केल मॉडल बने हैं, और उसी के लिए नाउकास्ट बनी है। नाउकास्ट में वेदर फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स। तो वो वाला सिस्टम जो है, कई एरिया जहां हमारा नेटवर्क बड़ा अच्छा है वहां तो हम नाउकास्ट व्हाट्सएप पे दे रहे हैं उन लोकेशंस पे, बाकी जगह पे भी थोड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें एक इशू और आ गया है, इसमें सबसे बड़ा, जैसा कि मैंने कहा, ये लाइफ साइकिल पूरी 1-1.5 घंटे में खत्म हो जा रही है। तो एक तो पहली बात है उसको पकड़ना, आपका पकड़ पाओगे जब आपके पास रेडार होगा। रेडार से मान लीजिए आपने पकड़ लिया, मॉनिटरिंग कर रही है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा, ये देखिए, तो सैटेलाइट पिक्चर में अभी रेडार का भी दिखाऊंगा, अभी आपको ये सब चीजें लाइव दिखाऊंगा। तो अब रेडार्स ने उसको लोकेट कर दिया कहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस बादल, जो कि सबसे ज्यादा बारिश देता है, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब आपको मालूम पड़ा कि ये देखा, और हमारा जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अपर एयर विंड्स हैं, वो उसको किस डायरेक्शन में ले जा रही है बादल को। उसको लेने के बाद आपके पास सिर्फ मात्र 15 या 20 मिनट बचते हैं, आप वार्निंग दें जनता को और प्लानर्स को। अब सवाल है कि ठीक है, आपने तो प्लानर्स को तो बता दिया, फोन से बता दिया, चलो व्हाट्सएप से बता दिया, आम जनता को कैसे आप बताओगे? उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा सकते हैं, मगर या टेलीविजन हो सकता है आप वो वाला चैनल देखिए ना, हो सकता है चैनल ना चलाए। तो हम लोगों ने कहा कि स्क्रॉलर जो नीचे चलते हैं, देखा ना आपने, पट्टी चलती रहती है, उस सब पट्टी पे मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि वेदर की, जैसे उत्तराखंड का है तो सारा वेदर की इन्फॉर्मेशन उस पट्टी पे चलनी चाहिए, जिससे कोई भी न्यूज चैनल खोले तो पट्टी पे कोई वार्निंग है उस एरिया की, वो आती रहे। अभी इस तरह का सिस्टम लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया। या फिर हमारे पास 24/7 वेदर चैनल हो, जैसे यूएस में होता है। यूएस में जब भी कोई कार में बैठता है, सबसे पहले वो अपना रेडियो ऑन करते हैं और वेदर की इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ यू शुड फैक्टर वेदर इन्फॉर्मेशन इनटू योर डे टू डे प्लानिंग, जो अक्सर लोग नहीं कर रहे हैं। अब उसका क्या कारण है, ये थोड़ा आपसे भी जानना पड़ेगा, हो सकता है लोगों में विश्वास कम हो, वो है बात। मगर आज तरक्की कर ली है साइंस ने इतनी कि अब काफी चीजें पकड़ पाते हैं हम लोग। मगर ये ध्यान रख लीजिए, 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं होगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर, पूरा ग्लोब, एटमॉस्फेयर विच हैज नो बाउंड्रीज। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है, कुछ सिग्नल्स आप बाहर जाएं तो देखेंगे आपको घोड़ी के पूंछ वाले सिरस क्लाउड दिख रहे हैं,
और फिर थोड़ा सा देखेंगे रात भर कर लो तो हेलो बन जाएगा मून के अगेंस्ट चारों तरफ, वो अगेन इट्स एन इंडिकेशन कि कोई सिस्टम इज अप्रोचिंग। आपके पास मॉडल भी है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी है, ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं लोगों की, वो सबको आप कर सकते हैं। जहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। मगर फिर भी ध्यान रखिए कि मॉडल जो है उनकी रेजोल्यूशन, जो अभी फिलहाल हम मॉडल यूज कर रहे हैं उनमें या तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का रेजोल्यूशन है, या जो WRF GFS मॉडल 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन है, और WRF का मॉडल का रेजोल्यूशन है अराउंड 3 किलोमीटर। मगर किसान चाहता है कि मेरे खेत के ऊपर बताइए बारिश होगी कि नहीं होगी। तो इतना रेजोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में अभी कोई मॉडल डेवलप नहीं हुआ है। IBM कुछ कोशिश कर रहा है डेवलप करने के लिए, तो हो सकता है आगे 5-10 साल के अंदर हम लोग ये सब कर पाए। तो टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो रही है। मगर ये जब तक ये ध्यान रखना होगा, आपने ये भी सुना होगा किसी शायर ने कहा है, आपके सावन शरारत ही मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़ सारे शहर में बरसात हुई। तो ये तो शायर भी पता नहीं 100 साल पहले कह गया ये बात। तो आप सोचिए, आप कहते हैं इसलिए कई बार होता है आपने जो पूर्वानुमान दिया बारिश यहाँ हमारे एरिया में तो हुई नहीं, मगर हो जाता है। ये सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो पता चलेगा एक साइड बारिश हो रही है, एक साइड नहीं हो रही। और एक तो अच्छा ओके, और एक तो हमारे फ्रेंड ने हो जाता है। और पहाड़ी इलाकों में तो अक्सर होता है। आई वॉज इन गैंगटॉक, मैं 2 साल गैंगटॉक हेड था वहाँ का वेदर का डिपार्टमेंट का। तो वहाँ पे तादोंग है और गैंगटॉक है, हार्डली 8 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, और एज द क्रो फ्लाइज और भी कम होगा। हाफ है रेनफॉल, गैंगटॉक का रेनफॉल और तादोंग का रेन इतना है। जैसी हाइट बढ़ती है, आप देहरादून में चलिए, जैसे आप ऋषिकेश से आप देखिए ऐसे स्लोप बढ़ रही है। ऋषिकेश इज अराउंड 250 मीटर अबव मीन सी लेवल, और राजपुर आपके करीब 1 किलोमीटर आ जाता है। तो जबरदस्त रेनफॉल इंक्रीज है। तो कैसे आपकी ओरोग्राफी, मतलब जैसे अल्टीट्यूड बढ़ रही है तो अल्टीट्यूड से कैसे वेरिएशन होता है, बहुत अच्छी चीज है। कोई रिसर्च करना चाहे तो उसमें भी कर सकता है। पूरे लाइन में एक लगा दीजिए आप, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, आपको पता है कैसे वेरिएशन हो रहा है। तो ये सब इश्यूज हैं हमारे पास। मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे, हमें बेहतर मॉडल डेवलप करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। कम्युनिकेशन में अक्सर आपने देखा है जब एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाता है तो उस समय पता चला आपकी बिजली भी चली गई, आपका ना टेलीविजन चल रहा है, ना आपके मोबाइल चल रहे हैं, तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? और मुझे लगता है केदारनाथ केस में ये भी हुआ, जो पहले ही निकल चुके थे लोग, अब उनके पास वो स्थायी सिस्टम, उनको कैसे पता चलता? तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन सिस्टम, तो यानी कि हम कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा कैसा हो, फेल सेफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि ऑल वेदर कम्युनिकेशन, जैसा भी वेदर हो हमारा, हम कम्युनिकेट कर पाए जनता के साथ, प्लानर के साथ। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है आपका कम्युनिटी रेडियो। आज की डेट में ऐसे रेडियो आ गए हैं जिसमें बिजली नहीं चाहिए आपको, बैटरी नहीं चाहिए, पीछे हैंडल लगा है, आप घुमाइए 60 टाइम्स या 100 टाइम्स, 1 घंटा तक वो आपका रेडियो चलेगा। और उसमें सिग्नल भी वीक नहीं होती। और छोटे छोटे हर एक वैलीज के अंदर एक कम्युनिटी आप देखिए, आजकल तो बहुत सारे कम्युनिटी उत्तराखंड में खुल चुके हैं। आपकी मंदाकिनी की आवाज है, और काफी सारे खुल गए। मेरे ख्याल भीम इधर भी है, आपके हल्द्वानी में भी है, हेलो हल्द्वानी। और आज की डेट तो ये है कि आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी अपना एक FM स्टेशन खोल सकती है, ओपन यूनिवर्सिटी के पास है। तो ये आई थिंक फ्यूचर है। पहले एक समय था सभी लोग रेडियो पे निर्भर करते थे, फिर टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। मगर अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब रेडियो की इंपॉर्टेंस फिर बढ़ रही है। कहीं जाम लगा हुआ है तो आपको पता चल जाता है FM रेडियो से, इस एरिया में जाम है, आप उस एरिया में ना जाइए। तो यही चीज जो है, आपको सिग्नल आपका गिरेगा नहीं, और छोटे से एरिया में जहाँ की आपको रडार से संबंधित वार्निंग देनी है आप वो भी दे पाएंगे। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं हमारे, जो चैलेंजेस हैं हमारे पास, उन चैलेंजेस को हम रोक सकते हैं। और ये सब हम कर पाए तो डेफिनेटली कोई भी हैजार्ड हो हम उसको डिजास्टर नहीं बनने देंगे। और बात हो रही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो बेसिकली 3 इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं जिन्होंने हमें, मतलब हमारे को सोचने में विवश किया है हमारी जो क्लाइमेट पॉलिसी को बेटर करने के लिए। पहला तो अभी आज कौन सुबह आप बात करते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क किसी ने बात की थी, आपने की थी? हाँ, डॉक्टर शशि ने सेंडाई फ्रेमवर्क की बात करी थी, दैट इज अबाउट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। उसमें भी यही बात है, तो डिजास्टर रिस्क को हमने करना है। तो कैसे होगा? फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ होगा। और अर्ली वार्निंग सिस्टम में यहाँ ऐड कर रहे हो मल्टी हैजार्ड वार्निंग, क्योंकि सिर्फ ये बारिश के लिए हैवी वार्निंग नहीं, उसके साथ फ्लड भी आएगा, उसके साथ लैंडस्लाइड भी होगा। तो आपको मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, व्हिच इज अगेन ए वेरी डाइसी इशू, बट कॉम्प्लेक्स इशू, वी नीड टू डू दैट। तो एक तो हमारे को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसने मदद की, हमें विवश कर दिया कि हम बेहतर सर्विसेज आपको दें क्लाइमेट से। दूसरा आ गया पेरिस एग्रीमेंट,
आपका पेरिस एग्रीमेंट में वही हुआ, टेम्परेचर को आपने रिड्यूस करना है, अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो एक्सट्रीम इवेंट बढ़ जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो उसमें भी हमें वेस्ट कर दिया। तीसरा है हमारा 2030 के गोल्स, कौन से हैं वो? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें भी आई थिंक एक्शन नंबर 13 है, वो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। तो अब एक्चुअली आप देख रहे हैं एक्सट्रीम वेदर होगा और वो हैजार्ड को आप यदि पूर्वानुमान नहीं करते हैं, आप वार्निंग नहीं दे देते तो हैजार्ड कन्वर्ट हो जाएगा डिजास्टर में, और डिजास्टर होने से आपकी लाइफ जाएगी, लाइवलीहुड जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी जाएगी। तो जो पैसा आपका लगना था डेवलपमेंट, वो तो चला गया आपका लोगों को बांटने के लिए। और यही होता है अभी तक, कॉज एंड इफेक्ट में हम इफेक्ट पे बात कर रहे हैं, कॉज की बात नहीं कर रहे। तो अब समय है, हो गया, लोगों को जागरूकता हो गई है, अर्ली वार्निंग की बात हो रही है। तो और इससे पहले आप बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की हम बातें करते थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में फोकस था हमारा इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर, एनवायरनमेंट की कोई बात नहीं कर रहा था उस समय। सिर्फ ये देखिए कि इकोनॉमिक्स हमारा पैसे बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमारे लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए और सोसाइटी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, मगर चाहे एनवायरनमेंट का नुकसान होता रहे। अब रियलाइजेशन हो गया नहीं, डेवलपमेंट चाहिए हमें, मगर विकास चाहिए हमें। विकास कैसा हो? विकास ऐसा हो जो हमें विनाश से बचाए, विकास ऐसा ना हो जो खुद विनाश बन जाए। मगर जो जिस तरह का देख रहे हैं उत्तराखंड में, एक कितनी जगहों पे देख रहे हैं, वो आप देख लीजिए किस तरह का डेवलपमेंट, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको वैसा डेवलपमेंट चाहिए। तो ये एक इशू है। तो अब फोकस हमारा हो गया एनवायरनमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट भी करना है, पर एनवायरनमेंट को जरूर बचाना है। आपने अपने पेड़ जंगल नहीं बचाए, आपने नदियां नहीं बचाई, आपने वाटर रिसोर्सेज नहीं बचाए, तो नेचुरली आप फ्यूचर में तो प्रॉब्लम आने वाली, तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो मेरा ये मानना है, यदि आप बेहतर मौसम विभाग बेहतर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बेहतर पूर्वानुमान देता है, बेटर अर्ली वार्निंग देता है, तो हम लोग हैजार्ड को डिजास्टर में नहीं कन्वर्ट होने देंगे, और जो पैसा बचेगा वो डेवलपमेंट के लिए जाएगा। डेवलपमेंट के लिए हम सोच समझ के करें, प्रॉपर करें। डैम बनाइए, प्रॉपर इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वो प्रॉपर करवाइए। ऐसा नहीं आधा अधूरा कर दीजिए और उसके बाद में उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, या कोई कहीं जगह में ये सुनने आया है कि वहाँ के डीएम में अरुणाचल प्रदेश में लोगों से डिस्कशन करना होता है, जन वहाँ के लोगों से कि भाई एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा, आप क्या रहा है। तो उन्होंने ऐड दे दिया इंग्लिश पेपर में, वहाँ के लोगों को इंग्लिश पेपर पढ़ना आता है ना आता है वहाँ, तो वो तो यूजलेस हो गया। या फिर क्या होगा, 500 पेज की रिपोर्ट बनाना कि हाथ थमा देंगे और कहेंगे एक एक के बाद आइए और इस पर डिस्कशन करिए, और कहीं छोटा सा कहीं लिखा होगा वहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट्स के ऊपर, कौन सी स्पीशीज पे क्या फर्क पड़ने वाला है वो किसी को पता ही नहीं। कौन 500 पेज पढ़ने वाला है आपके, और आपने टाइम भी सफिशिएंट दिया, और कुछ लोगों से साइन करा के हो गया कि हमने जनता से कंसल्टेशन कर ली। तो इस तरह के डेवलपमेंट से आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी नहीं होने वाली है, ये ध्यान रख लीजिए बिल्कुल। और जो एक्सपर्ट बैठे साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस, आज साइंटिस्ट के पास इतनी नॉलेज है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को सुनना होगा साइंस के बारे में, और साइंटिस्ट को भी जोर शोर से कहना पड़ेगा, ये दबी आवाज नहीं कहें कि हमारी प्रमोशन रुक जाएगी, ऐसे प्रमोशन एक पद ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर जो सच है सही है वो कहने से बद दे रही और लोगों पे जागरूकता लाइए, जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। मैं यही रोकता हूं इसको, और थोड़े से आपको दिखा देता हूं लाइव, बिल्कुल यहां से, कहां से कंट्रोल है। मैंने एनसीसी के बच्चे थे सबको भी दिखाया था, बाहर से सिर्फ क्लाउड दिख रहे हैं, दैट इज एन इंडिकेशन, फर्स्ट इंडिकेशन। फिर उसके बाद सीरो क्यूबुलस दूसरे क्लाउड सीरो के तरफ पहुंच जाएगी, तो एक एस्पेक्ट तक आ रहा है, आगे आने वाले दिनों में मौसम को प्रभावित कर सकता है। तो ये दिस इज आई इन द स्काई, आपको सिनॉप्टिक व्यू मिल गया वो क्या चल रहा है, मार्च कहां से आ रहा है। नेशनल एयरपोर्ट है, आप ऊपर वहां देख सकते हैं, देहरादून एयरपोर्ट को देख सकते हैं, वहां आपको देखिए एयरपोर्ट हो जाएगा, अटाला एयरपोर्ट हो जाएगा। तो ये दिल्ली का रडार है, ये रडार की पिक्चर है। यदि आपसे कोई मुझसे पूछे कि अगले 2-3 घंटे में बारिश होगी, कोई बारिश नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड नाउकास्ट। कोई बादल नहीं दिखेगा, कुछ छोटा-छोटा दिखेगा,
some noise. तो ये आपका पूरा यहाँ तक अभी reflectivity दे रखी है। जब तक reflectivity इस मान लीजिए नीचे है थोड़े से बादल दिखोगे जरूर, हो सकता है drizzle थोड़ी सी हो जाए। मगर यदि white, yellow और red में आ जाए तो उसमें खतरे की घंटी आपके एरिया में रेड तरह के इकोस आ जाए, वो देखते हैं कहाँ हो सकता है। अभी फिलहाल जो दिख रहा है आपके इस एरिया के अंदर नहीं कोई बारिश, तो आपको कहीं बाजार जाना है, लॉन टेनिस का मैच खेलना है, कोई क्रिकेट का मैच खेलना है, कोई छोटा बड़ा सा बात है, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? इससे भी मैंने जैसे बताया कि बादल बन रहा है, तो ये देखिए आपको इस साइड स्केल में बना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर्स है, और ये जो आप देख रहे हैं दिस शोज दैट विंड इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। हम बोलते हैं वेस्टर्ली विंड का मतलब किस डायरेक्शन से विंड आ रही है, और इसी पर एक एंटेना लगाया दैट इज 10 नॉट्स, कि 10 नॉट्स की स्पीड 2 हो जाए 20 नॉट्स, एक ट्रायंगल हो जाए 50 नॉट्स। तो ये जो बेसिकली ऐसे ही और थोड़े नीचे लेवल पे ये सदर्शी स्पीड। मान लीजिए कि बादल यहाँ बनता है, बादल ज्यादा स्पीड है, और यहाँ बनता है, यहाँ तो वो भी आपको पता चल जाएगा रेडार से कहाँ बादल बना है और उसकी हाइट कितनी है बादल, वो भी हमें पता चलता है आपका, और किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो भी पता चलता है। तो ये बड़ा जरूरी है पहाड़ी इलाकों के लिए खासकर कि कहाँ, जिसे हम जो सो कॉल्ड हाई इंटेंसिटी रेन में लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते थे, वो फिनोमेना कहाँ होगा अगले 1-2 घंटे में, उसके लिए बहुत यूजफुल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ हाँ, ये बेसिकली ट्रांसमिट किया कोई भी इसके बीच में ऑप्शन आया तो वापस आ जाए, सिंपल फिनोमेना, डॉग्लास इफेक्ट, ठीक है। दिखाने के लिए बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो हमारा देख रहे हैं आप जीएफएस मॉडल 12 किलोमीटर, ये हमारा ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम मॉडल है। इसकी रेजोल्यूशन 12 किलोमीटर से, जैसे मैं बता रहा था कि वो 12 किलोमीटर के दिन का कैप्चर करता है, और 1 घंटा पास्कल का मतलब है 1.5 किलोमीटर के ऊपर, तो 1.5 किलोमीटर के ऊपर 29 तारीख को मॉडल आज बताया है कि ऊपर की हवाएं कैसी चल रही हैं ऊपर। अच्छा, अब इस चार्ट में क्या करता है कि आप विंड स्पीड भी देखेंगे, अलग-अलग कलर दिखाया है कि विंड स्पीड। बेसिकली हमें यहाँ ये देखना है कि वेदर सिस्टम कहाँ बना है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसे लो प्रेशर एरिया। ये ध्यान रखिए कि या तो जब आप प्रेशर की वैल्यूज प्लॉट करते हैं, देन यू ट्राई टू ड्रॉ आइसोबार्स, लाइन जॉइनिंग एरियाज ऑफ इक्वल प्रेशर। जब आप विंड को फॉलो करते हैं तो आप देखते हैं आइसोबार घूम रहा है, और घूम जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, हवाएं जो है नीचे से ऊपर की ओर उड़ती है, और जब हाई प्रेशर सिस्टम में और क्लॉकवाइज विंड जाए तो विंड ऊपर से नीचे आए। तो अब मैं बच्चों से खास पूछना चाहूँगा कि इस दोनों सिस्टम में लो प्रेशर या हाई प्रेशर किस पे ज्यादा बनेगी और बारिश होगी? लो प्रेशर, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर मॉइस्चर ऊपर जाएगा, मॉइस्चर कम ऊपर जाएगा, हवाएं नीचे से ऊपर जाएंगी, तो वो लो प्रेशर में होता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लो प्रेशर को आइडेंटिफाई करना है चार्ट में कहाँ है। तो यहाँ आपको कहीं दिख रहा है वेव्स घूम रही है, यहाँ देखिए तो ये घूम रही है, यहाँ भी थोड़ा घूम रही है, और जो क्लाउडीनेस आपने देखी थी सैटेलाइट पिक्चर में, उसका लॉजिक यहाँ मिल रहा है आपको। तो सैटेलाइट ने आपको क्लाउडी दिखाई, वेदर की चार्ट में आपको क्लाउडी दिखाई, रेडार के पास अभी कुछ नहीं है दिखाने के लिए आपको। जैसे से पास सिस्टम आएगा तो रेडार उसको कैप्चर करना शुरू कर देगा, तो आपके पास बाहर ऑफ जाएगी, तो बाहर ऑब्जर्वेशन भी आपको मिल जाएगी, तो आप हर तरह से उसको देख सकते हैं। अब जैसे कि घर बनाते हैं, मजबूत घर का होता है जब उसकी नींव गहरी होगी, ऐसे ही वेदर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो निर्भर करेगा कि ये
क्लॉकवाइज, तो कितना अच्छा आपको इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ से आपको क्या होगा, क्या मिलेगा यहाँ से हमें, मॉइस्चर, अरेबियन सी से मॉइस्चर भी मिल रहा है। आपको ये देखना है कि हवाएं कहाँ से आ रही है और अपने साथ नमी खींच के ला रही है नहीं ला रही है। वो जो सिस्टम आ रहा है वहाँ से, वो सिस्टम अपने साथ नमी तो वो भी खींच के लेके आ रहा है, कैस्पियन सी वहाँ से उठा के इतनी दूर से, और यहाँ से भी नमी मिल रही है उसको, तो संभावना बारिश की बढ़ जाती है। दिस इज व्हाट वी नीड टू, बट ये ध्यान रखिए इसमें कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरी है, बार बार आपको देखना है। आज दिखाता है, कई बार मॉडल अगले दिन गायब कर देता है, तो आपको दिख रहा है कल भी था आज भी है और कल भी दिखा रहा है, इसका मतलब देयर इज अ कंसिस्टेंसी। और एक ही मॉडल नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप सभी मॉडल्स को देख सकते हो। और आपकी कोई ट्रेडिशनल, जैसे आप बात करें रोजाना की बात, कोई ट्रेडिशनल विजडम है आपकी, फोकलोर में कोई ऐसी चीज़ है वो भी आपको मिलती है। कुछ कहते हैं चींटियां भी अंडा उठा के जा रही हैं, कोई कह रहा है डिड यू डू इट, टटीरी होती है बर्ड, उसने अंडे इस बार ऊपर दिए हैं, तो लोगों का मानना है कि इस बार बारिश ज़्यादा होगी, वो लोअर लेवल पे देगी तो बारिश कम। ये लोगों का मानना है, और आप वो भी ले लीजिए ट्रेडिशनल नॉलेज को और मॉडर्न नॉलेज को भी ले लीजिए अपने साथ, और यहाँ कन्वर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। ये जो डेटा, ये जो मॉडल्स है जी, इसका जो डेटा है इसके आधार पे ये बना है, हाँ, न्यूमेरिकल डेटा है। नहीं 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 नहीं, ये क्या होता है, देखिए मॉडल रन करा जाता है इनिशियल कंडीशन के ऊपर। इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब होता है, जब मैंने आज मॉडल रन करना है तो आज सुबह की जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो किस्म से आप मॉडल बना सकते हैं। जब आप मॉडल बना रहे हैं तो आप कुछ एल्गोरिथम्स बनाएंगे जी, उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं कि वन इज लॉजिक बेस्ड एंड अनदर इज एम्पिरिकल डेटा बेस्ड। तो ये लॉजिक बेस्ड है या नहीं लॉजिक में देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारे जो है आपको मालूम है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, इट्स अ फ्लूइड डायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स और कहते हैं आपके दूसरा क्या है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, वो उसको गवर्न कर रही है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, राइट, द सॉफ्टवेयर इज देयर, सॉफ्टवेयर देख रहा है कि हाउ एटमॉस्फेयर बिहेव्स, उसका बिहेवियर लॉजिक बेस्ड है? लॉजिक बेस्ड है। अब इसमें आपने डाल दिया डेटा डाल दिया, इनिशियल एक्चुअल डेटा डाल दिया, उसके बेस पे मॉडल जो है फोरकास्ट करेगा। मॉडल वो फोरकास्ट करेगा और इंडिकेशन करेगा। और इस पे ध्यान रखिए, ये क्योंकि मॉडल जो है वो परफेक्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या हुआ करता था कि आपको यदि एटमॉस्फेयर का वेदर प्रेडिक्शन करना है तो आपको एटमॉस्फेयर डेटा ही होता था। बाद में हमने रियलाइज करा नहीं, ये तो प्रेडिक्शन अच्छा इंप्रूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज अनदर स्फीयर व्हिच इज इंटरैक्टिंग विद एटमॉस्फेयर। वो स्फीयर कौन सा था, हाइड्रोस्फीयर, ओशन। तो कपल्ड मॉडल लाया गया, एटमॉस्फेयर ओशन कपल्ड मॉडल बना, इंप्रूवमेंट हुई। इसलिए कहा नहीं, एक और स्फीयर है जिसको हम ऐड करेंगे तो ये इंप्रूवमेंट हो जाएगा। वो कौन सा स्फीयर है, हाँ, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, आप क्या बचा, लिथोस्फीयर। तुमने कहा सॉइल मॉइस्चर बड़ा जरूरी है, एल्बिडो बड़ी जरूरी है, सॉइल अलग, सॉइल की अलग एल्बिडो है, उस लिथोस्फीयर को ऑब्जर्वेशन को भी ऐड कर दिया मॉडल के अंदर। उन्होंने कहा नहीं, अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, एक स्फीयर और बच गया। वो क्या है, बायोस्फीयर। एवोपोट्रांसपिरेशन कैसा हो रहा है, वो भी डाल दिया हमने, कहा इंप्रूवमेंट हो गया भाई। अभी एक और स्फीयर बच गया, क्रायोस्फीयर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और हिमालयस। स्नो, आइस, आइस के जो फ्रेशली फॉलन स्नो है उसकी 95% एल्बिडो है, पूरा रिफ्लेक्ट कर देती है रेडिएशन को। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे हमारी मतलब ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है, हमारी नॉलेज बढ़ रही है, हमारे मॉडल बेहतर होते जा रहे हैं। और अभी भी बहुत स्कोप है, बहुत सारी चीजें हमने नहीं समझी है, प्लस जो चीजें हमने नहीं समझी है उनको क्या कर देते हैं, पैरामीटराइज कर देते हैं, एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो पैरामीटराइज एक्चुअल चाहिए हमें, नहीं है तो हम पैरामीटराइज कर देते हैं। अब बात हो रही है क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाए वो पैटर्न रिकग्निशन में बेटर है। ह्यूमन माइंड इज बेटर देन कंप्यूटर इन पैटर्न रिकग्निशन। क्वांटम कंप्यूटर बाइनरी से हट जाएंगे आप, बिल्कुल क्यूबिट्स पे आ जाएंगे। तो आपकी पैटर्न टाइम हो गया, आप उनसे पूछ लीजिए टाइम हो गया, मैं रोक देता हूँ, नहीं तो फिर मैं चलता हूँ। 5-7 मिनट में मैं बात खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो दिस हाउ द टेक्नोलॉजी, तो हमारे यहाँ क्या है, सुपर, हमें कंप्यूटिंग भी चाहिए, हमें टेलीकम्युनिकेशन चाहिए। जो डेटा जैसे देहरादून का डेटा रिकॉर्ड हुआ सुबह में, इमीडिएटली वो डेटा दिल्ली चला गया, पूना चला गया, दिल्ली पूना से कैनबरा, टोक्यो, न्यूयॉर्क, ऐसे पूरे वर्ल्ड का डेटा हमारे पास आता है थ्रू ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन हब। तो आपको टेलीकम्युनिकेशन चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट, आपको सुपर कंप्यूटर्स चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स चाहिए, कितना डेटा चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो ये निरंतर हमारा प्रयास है, पूरे वर्ल्ड की हो रही है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो
जो जितने बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट मॉडल हैं, हम आपस में शेयर करते हैं। वो बेसिक यही है कि हम अर्ली वार्निंग को इम्प्रूव करें, और अर्ली वार्निंग को इम्प्रूव करते हैं तो हम कहते हैं हैजार्ड को डिजास्टर में नहीं कन्वर्ट होने देंगे, और डैमेजेस और जो रिस्क है उसको भी कम कर देंगे, एंड दैट विल हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है डायरी काफ़ी दिखाने के लिए बहुत कुछ है भी इसके अंदर, बहुत सारी ऐप्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यू शुड ऑल गो टू दिस साइट and try to gain as much as possible. Thank you very much to the organizer for giving this opportunity, and thank you for this dedication. Thank you very much. तो मेरे पास जो कुछ recommendation है मैं आपको दे ही दूँगा। Thank you so much, sir, for this very much intriguing and interesting talk, and letting us know how we are actually responsible for, or how anthropogenic activities are actually responsible for this drastic change. Without time, I would like to, yes, all of us can go for a quick tea break for 15 minutes, and we will reassemble here after that. Thank you so much. And then we can actually consider those. I mean, we usually find those zones are infested with the landslide, and that is an exercise which we can do as a priori for the large scale. And then if you have some phenomena where some implication to the society and habitation is there, then we go for the site response. So I thought I'll cover these two aspects. And so, okay. Okay. So same is like it's a Mukteshwar, and you can see like if you see stand at Mukteshwar and see northward, we again see a landscape which is a little different, and you see like there is a differential growth in the topography, and also the river have carved out the landscape, and this is a function of like tectonic uplift and erosion by the climatic agency. So there has to be a, if I want to quantify all this landscape on a regional scale, so we have a boundary condition in which we know like there is a basal thrust hit. Can you able to see my mouse? Okay, so you can see like the basal thrust, which is the boundary, and then all the topography above is in a wedge, and we can quantify the uplift in space and time. That will be considered equivalent to the erosion in space and time, and that is in the steady state. And if you consider this as a concept, then you can like try to model the whole landscape, and it doesn't matter what size of the landscape you are looking at. That size of the landscape and scaling parameter you can change as per the requirement of the. So I'm not talking much on the mathematics part, but just I thought I introduced. And another factor is the precipitation. So you may have seen this. It came like 15 days ago, where the global modeling was done, in which they said like precipitation is the most important driving force for the landslide. And okay, now this figure is stuck at December, and we can see like despite Himalaya being a very prone zone, as we can see in the month of July, in the upper panel, in the month of December, we don't see much occurrences of landslide. That is comes from the empirical modeling based on some of the ground truth thing, but truth is not always like, and therefore we need to understand it in more holistic manner. Active. Then you can this red line is the one where you do see the immediate. What is the relief, and if you have a and disaster took place. I'm putting some couple of boxes in the catchment areas that is infested by the 2000,
And that you can see it lies in this area which is very high precipitation as well as the topography is very high. And then you also have the areas in that same area which is affected by understanding of the large processes. Well, I was telling like a landslide is the most efficient method of erosion. I'm trying to put examples. So this is from the last year's monsoon season, whereby it was in the Pili Valley. Trunk Valley was to the west of Yamuna. And you can see like in a very small duration of time, huge amount of debris is generated, and then it will be transported by the river system, by the erosion system. This was in the monsoon period. However, the one which we are seeing here is again a couple of months later, and that is in the Satluj Valley, and it is purely structural control, and you can see like huge mass of volume, which is otherwise very stable, failed the slope and fall into the river system for the system, like material to be transported, and therefore these things can be characterized, which are the zones which are very. Now we know like this is we are very famous. So if suppose the right panel happened from a here the Satluj Valley case was almost 500 meter, however less than 500 meter. But if similar phenomena happens from a elevation of let's say 2 kilometer, and if the ground is frozen water is there and debris is there, we do see this kind of, and it is very nice that technology is helping us and even the citizens are participating in the data generation in the real time. And this, like rainy, and this has happened in the February. So February is again is not a season where you can talk in terms of climate-driven extreme. And therefore, the landslide pattern, and you can see like this. So my purpose of showing this videos was to make you like relate to the process, and thanks to the technology we have. Here is the one bridge which is very famous. My intention was to show that and the kind of erosion comes up. And so, what does it mean? Is it end of the road? So, human being or civilization has been very optimistic, and we cannot say like that. So, we can see like this bridge was washed away during rainy disaster. Within couple of weeks, we developed another parallel, and that has come up because of our resilience, and we started developing the technology and harnessing it for our purpose, and then the whole area is now connected. Important thing to note here is the river used to flow somewhere at this side because of one small extreme event. If you take it, I'm calling it small because on a Himalayan scale it is actually very small. You can see the incision of the order of 4 to 5 meter happened in one event. And that's what I was telling when you have a very large scale mass wasting, landscape is modified, and therefore if we model the landscape, we can identify the zones which are very prone to it. Okay, so and that you can do. I'm not talking the mathematics, but to make you understand. On the left hand side, you have an area which is undergoing very slow erosion and uplift transient, whereas the area which has been perturbed, and when we call it transient, and therefore we develop signals, and those signals we can model in the landscape depending on the size, and therefore we can actually model the zones which are prone to landslide. Say for example, this transient zone is the one which is prone to landslide. And let's start the actual thing from, we know like this is very famous. So Uttarakhand disaster, and conventionally we do all the mapping. After that everything happened, we attribute something to like how it would have happened, what are the areas. We saw the Manu's report in the morning, and therefore this is how we do the conventional mapping and try to assess the hazard. However, these mappings do not put the quantification. Like if I want to use this event as a precursor, and if I want to create a futuristic approach, what kind of hazard, like you saw Dr. Sharma showed recently in the last talk about the climate modeling and future prediction. If we want to do those kind of prediction in future, we need to do some of those things, and I'm trying to share. So we can model the landscape, and we can see like this is the zone which breach, and there is a
you can model them in landscape, which is preserved already. And those are the, if you see the color coding, which is again some kind of morphometric characterization, you can see like there is a transition from blue to red, and that is the zone where anywhere where the transition takes place, and that is the zone which having very high erosion potential. So nature told us that these are the zones, and if we do this exercise for bulk of the areas, we will be aware like which are the areas we need to aware. Then what we did was we developed a tool, and thereby we can actually convert the discharge of the upstream. Say for example, if I take a location here and if I calculate the upstream discharge, I can convert it into the energy term, like watt per meter square, and that we call is specific stream power. And the only difference between specific stream power, how it is dynamic, is you can actually include the actual precipitation. Nowadays we get every 3 hours the global data, and if we want to model it for every 3 hours, we just have to import the data and run the algorithm. Here we did it for 2 days because there was 2 days, and therefore we do see like 25 times higher stream power. Between this, you can see like in this box, it is 10 to the power 6, 10 into 10 to the power 6, which has gone up by 25 into 10 to the power 7. That kind of scale. So it is 25 times larger during that particular event, especially in the Kedarnath. If we go to Kiroi Ganga next to Alaknanda, you see nothing has happened to Alaknanda. However, this is a small channel which is Kiroi connected to glacier, and it has produced a lot of disaster. Like Vishnu Prayag reservoir was flooded because of that. We did a similar exercise, and we found out like it is 120 times high stream power. And there are lot of glacial debris was remobilized and was dumped, and that's what choked the reservoir. So we can actually, in this, except for the photograph, all the dents are before the event, and we can see the indications like which are the areas which can be affected. So that's how we can do the large scale modeling, which I was telling, large scale landscape, how they reveal the localization of erosion. This I am putting for the 2021, and you can see like this is the zone where the avalanche came, and it is a very small catchment, but has a very high slope vis-a-vis Rishiganga. And when we convert it to the stream power, you can see like this black one is the one where you have a wedge failure, and thereby this river was mobilized. At this junction, the stream power is almost same as Rishiganga. And therefore, even in a small channel, if its topography is such that a mass mobilization takes place, let's say mass mobilization is even the glacial which was lying there, it melt and come up in a mass mobilization like extreme event, it can produce the same amount of stream power. And you saw the videos which has been recorded by the local people, and they have a disastrous consequences. Now it has brought and dumped huge amount of material as a, and in future we will call it a old landslide zone. And okay, we can also have an intervention can be done with the seismology, and with the seismology because seismic shear waves travel at more than 3 kilometer, 3.5 kilometer per second, and therefore they reach to the station, and you can still have it took like 28 meters here. So we can have a prediction. We can make prediction. So our institute is working on that aspect, because if suppose there is no imagery or when the video call is okay comes up, but then we can combine the landscape model, topographic model vis-a-vis seismology, and we can predict at which location, at what time the flood will reach, what could be the type of mass movement, and we can issue the early warning. And for a landslide kind of thing, 20 minutes is a very big time. We can save a lot of people. Now coming to Joshimath, as you saw, the dam was developed, and it's a pretty large, more than 60-meter wide dam was developed. Channel will definitely cut through, but then you have a regolith. Something very similar was is there in Joshimath, not just in Joshimath, almost any township or area you take, on which you have a huge amount of loose material which are very conducive for agriculture, and water is also available. And in the morning you realize, Dr. Pius told like
people do agriculture here, over and used to live at a dhar, but now at a ridge where which is hard rock is there. But with time we have a forgetfulness and therefore we come and sit on the loose material, which is actually meant for the agriculture and which are water saturated. And something similar is there in Joshimath. So we need for such kind of problem, which is very science specific, our response or our diagnosis has to be very different, and that's what I want to demonstrate. So usually I'm listing only couple of them. The other agencies have done a lot of things, and I intentionally don't want to bring up them, bring those data. Though I have some of the data, but I don't want to show. So we as a team, what we wanted to do was when this happened in the next couple of days, we made a team and we started moving to the Joshimath, and we thought of putting up the following. So we, as we know, like remote sensing is the one we can do this R interferometry every 15 days, and then we did. So am I audible? Hello? Okay. So we did this R interferometry, and you can see like 15 December to 27 December, this was the zone which was affected with this lumping, and then 27 December to 15 January, you can see like subsidence has subsided, and you have, but area remain, I mean, extension of the subsidence zone has increased, and so you can actually map. Now we wanted to characterize the material which is producing this kind of subsidence. So you may have seen a lot of expert opinion was there in the newspaper and everywhere, because whenever something happens, we are concerned, and then we, based on our previous understanding, we come up and say something. So everywhere it is said it is a glacial, old glacial material and earthquake zone and all. So it is not the case actually. And even the Joshimath is not a homogeneous slope. It is a very heterogeneous slope with a series of pockets, and so we wanted to characterize those slopes and their response of the loose material vis-a-vis the basement rock. And you all are aware, like Joshimath is a dip slope, so rock is dipping in north direction, and slope is also in the north direction, and it has evolved over a period of time. It is definitely not glacial, because the highest location where the Joshimath is, bulk of the Joshimath is situated is hardly 17 or 1800 meters. So never ever in last 60,000 a glacier was there. It is all old landslide or a river terrace which was left. And you see, my intention of putting the original landscape component was just to demonstrate at some point of time in the past, similar landslide might have happened and which had dumped huge amount of material, which is being like remobilized because of the certain interference. In this case, mostly by human as well as by some of the climate events. So as usual, we go and map, and we have been very successful in doing that. Dr. Piyush was there as a coordinator from the Uttarakhand Disaster Management Authority, and he has been very helpful. So bulk of the fieldwork we did together, and it was very enlightening to talk to the people who are actually working on the ground. A lot of new information they bring in, which we're not able to do in, let's say, a very limited period of time. So we did mapping, and then you can see like this yellow arrows, and then we realized like it is not random, and bulk of the features are developed where this high, I mean, SAR interferometry data is identifying the location very correctly. And bulk of the big fissures are the areas where you have built up area, and bulk of the built up area is not on the hard rock, but on the loose material. So then once we have done that, we start and we analyze for other things, like wherever you see large number of fissures, those areas are very gentle slopes. And so those are the things we started working on, and then we have put like A, B, C, D, these are this E. These are the subsequent characterization of the data for purpose. The important thing to note here is this stream, which are actually the surface water. So what you have heard or saw in the TV was, these are the areas where subsidence started taking place, and somewhere here was the gush of water, which was very high, more than 500 liter per minute.
So that was a serious issue because none of the channel on the surface is actually connecting here. So one of the request from the state government was, and a lot of panic was there. So they wanted to understand how the subsurface water flow taking place, and therefore we employed some of the techniques which I like to show. So okay, we also did, like we can see there is a Singhdar, so which is acting as a barrier for the surface flow. Though at some locations there is some water going from here. So the moment you put into the aspect, you get to know like this is the zone which is, despite it slope is this direction, you do see. So you can calculate the flow accumulation, and you do see those dhar is creating a barrier despite everything, and therefore one of the logical thing was this is anyway whatever water falls here, it is bound to go here. But then we have to prove. So then we, based on the SAR interferometry data set, we started, we planned the different experiments. So this is one of the EV experiment. It is electrical vector resistivity imaging, and this is the only available with us because it's a new technology. And so we implied that because here you can have a spread length which is very high, and if you have a spread length, 1/5 of the spread length can be depth of penetration. So we put we wanted to do 3D, but because topography was kind of 600 meter, and therefore it was difficult to do. So we could not do 3D, but we did 2D maps, which are more than 1 kilometer. So you can see like well, it is in the upper one. So whatever is the red you are seeing is the basement rock, and whatever is the yellow and blue you are seeing or green you are seeing is the one which is the loose material. So if we are traveling here, you can see like all these channels, these are the zones which are pockets of loose material. So as I said in the very beginning, it is a couple of slides ago, Joshimath is not a homogeneous slope. Then we came to this area which was most affected, and the arrows which are marked here is the one where the fissures are mapped. So here you can see like the zone which is this zone is pretty large, is here, but again you have a break, and then again you have another one, and it is depth of loose material is of the order of 50 to 100 meter. And you can see like there are many pockets, it is not one. So even if there was a huge precipitation, extreme precipitation happened last year, October 2021. I'll talk about that little bit. So we mapped the whole area, and as we go to Narsingh Mandir, except for this riverbed, you have a bulk of the area, and these are the areas where you do see some of the fractures developing, and then finally, this was the zone where the water was gushing out, but it was at the basement. So the rock is exposed there, and it is very good because when the rock is exposed, then only you do not have loose material, and the basal part of the zone, water will channelize there and therefore flow. So now we got on a good understanding of Joshimath slope. Then we went ahead. So whatever data I am showing you is yet not being shown to the government completely. So this is for the first time it is coming in the public domain. So then we planned another set of experiment, which was multi-channel analysis of shear wave. And you can see like we planned the experiment in the way so that we cover the subsidence area. So you can see the upper one, it is somewhere here. So the top 30 meter, you have bulk of the area which is low velocity, which essentially means very saturated. And basement is little below that. And you saw in the lower one, which was on the other way side. And you can characterize in terms of engineering property of the soil. Then we came, it is near Manohar Bagh, somewhere here. And you can see some of the big boulders are there, as we see in Joshimath. This layer which was uniformly there, now you find two layers. So this is the top soil, then you have a stiff where you have a boulders and all, and then you again have a loose soil, which goes as deep as 30 meter. And then almost around 50 meter, you start getting the velocity, which is around 1000 meter, which comes to be around close to hard rock or basement rock. Then as we go further up in this area, you can see like within 20-25 meter, in some areas we have a basement rock, whereas in some areas it goes up to 35 meter. So we started getting a lot of characterization for the material. Then other challenge was to find out what is the geometry and of the fissures which have developed. So all these red lines are the locations where we did GPR, and to map it, we took multiple antennas
intention was to find out top 30-35 meters. So then, if you are familiar with the GPR, you can see like this one was the having penetration depth up to 40 meter, and this particular one is, you can see we are running parallel to the fissure. So you this is the so you are seeing these are not vertical well, several fissure, but the same fissure we are encountering multiple times. However, the other sections you see like there is one fissure or like discrete fissures, they are going all the way up to more than 30 meters. So in the previous slide, you saw like I'll take you back just to show, the loose material is 30-35 meters. And suppose if a fracture is going all the way up to this 30-meter depth, so whatever is the surface runoff, that will channelize to this location, and when there is a basement contact with the basement, that become the flow path in the subsurface. That's why, I mean, that was the task which we wanted to. So we did close to 40-50 GPR section and saw like in the. So we had a very good coverage, and then we were very confident. Good part was in the upper areas. You can see like wherever you see white, it means it is air filled. So the material was not water filled; it was air filled up to 30 meters. What I mean to convey here is it is actually a dehydrating soil. Soil has been dehydrated because of the loss of the water. Then we wanted to build a subsurface, as I just mentioned. So despite the topography, we took like each line as an individual column, and then we tried to develop the slice at every 5 meter. So we took the shear wave velocity at 5 meter at all these locations, and then we just contoured it. Just if you contour it, then you can, intention is what is the material type at a depth of 5 meter, what is material type at depth of 10 meter, 15 meter, and so. And if the material type is such that it can have enough porosity and it can channelize the water, then it will flow. So if you go 5 meter deep from the surface, and now we are seeing the northward from south to north, this is. So your primary channel will be at 5 meter, will be this. If the material is flowing through the water at a depth of 5 meter. If it is flowing at a depth of 10 meter, then you can see kind of channel you can expect. If it is flowing at a depth of 15 meter, now you can see like this. Sir, there is a question, I think. Channel. Just two more slide is there. Two more slide, then we'll finish. Then it is 20 meter depth, and then you have a 25 and 30 meter depth. So you can see like at different depth, the channel geometry become different, and therefore you have a. So this is the summary slide, and then you can see like each pouch as each blue is as a independent landslide, and you have a head fissures, then you have a basement fissures, and then water will try to flow through it, and it's just summary. So on surface, water will try to flow like that in 5 meter depth. However, you can see like this is little bit tilted. So what I want to convey here is, for a problem of different scale, you can do the landscape modeling to identify the zones which are localizing for the where this kind of problem may take place. However, when you go to the location, then you have to use different tools. And these are my, since title is also you are supposed to send a recommendation. So that's why I kept this as a last slide. And so we need to do the multi-scaling data analysis and to vulnerable location for slope hazard, and therefore wherever those gentle slopes are occupied by the human beings, then we need to go into multi-parametric geological and geophysical survey. I did not put all the parameters because I thought other people have done. It is not fair on my part to. And think of it, if suppose there is an earthquake happens and this whole thing get more mobilized. So you need to have earthquake data, you need to have ERT data, you need to have water quality data, so as to see if we in the now the Swachh Bharat Abhiyan, we have put the septic tank, and all those septic tanks are actually producing another set of recharge into the soil, and it's also produced segregation. So those are a lot of issues which are there, and so therefore site-specific areas we need to have a. Okay, I'm done. Thank you. Thank you so much, sir, for this brainstorming
session. And now in the series, I would like to next call Dr. T.R. Martha sir, who will again join us virtually. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah, Dr. Martha. Can I start my presentation now? Yeah, Dr. Martha. Yeah, can you hear me, Dr. Martha? I hope my slides are. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, that's a good afternoon. I just want to remind that we have one more presentation after this. So I would request you to please try to finish your presentation within 30 minutes. We are already running behind the schedule. Okay, sure. Thank you so much. Yeah. Kindly confirm whether you are able to see my slide. Yeah, it's visible, sir. Okay, thank you. Thank you, Professor Goswami, and distinguished guests and students. And once again, very good afternoon to all of you from NRSC ISRO Hyderabad. And as part of our satellite-based study for landslide disaster assessment, the kind of work we have been doing for several years for the entire country, including Uttarakhand. So that's going to be my topic of presentation today. So to give an overview of the landslide situation in India, as you know, we have roughly 12.6% of India's landmass prone to landslide disaster, and we are number one in the world in terms of fatal landslides. And if you can see right side, yeah, if you can see here, these are the major national initiatives for pan-India landslide disaster study. There is a study effort by NDMA, then NRSC prepared landslide hazard donation atlas for Uttarakhand and Himachal Pradesh. And GSI has also prepared 1:50. Why we are seeing so many landslides in recent years, not only in Himalayas but also in peninsular India. So if you look at the climatological data in terms of temperature and precipitation, there is a study where I could see the temperature is slowly increasing from 1900 to 2020. And at the same time, the snowfall also gradually reducing. And that's resulting in a lot of glacial melting. And you can see in the Nanda Devi Biosphere Reserve, where there are some 8 glaciers, and they are slowly retreating. So that's basically the climatological effect. And there is one study by us also in Kerala, where in 2018 we could see the rainfall has strongly deviated from the normal rainfall pattern. So as you know, rainfall is a major triggering factor for landslides, and that's why perhaps we are witnessing so many landslide disasters. Nevertheless, we have inherent causes like geological setup. We have active fault and fold mountains like Himalaya, and also we have a lot of developmental activities, particularly road expansions and urbanization, etc., in hilly regions of the Himalayas. This is the landslide inventory data published by NRSC, and you can see here the state-wise total landslides we have identified, roughly in 2 union territories and something like 17 states.
It comes to around 80,000 landslides. All are polygon-based landslide inventory. Some of them have also been field checked, and some of them are also validated using very high resolution satellite data. So this database is available with NRSC and they are available in the NDM and Bhuvan portal. We have done also a district-wise ranking of landslide disaster in country. There are 147 districts wherein we considered four important risk elements like house, population, livestock, and road. And based on those four important elements of risk, we categorized top 10 districts which are prone to landslide disaster. And we have number one and number two located in Uttarakhand itself. There are two more in Jammu and Kashmir and two in Sikkim and Kerala. So this kind of national landslide inventory database helped us to understand what are the main causative factors, what are the controlling factors in terms of geology, in terms of slope, in terms of rainfall. And this is a comprehensive study done by us and it has been published also. And for more details, you can refer this article. And what we found is that in Northeast Himalaya, though there are more number of landslides, but there are smaller dimension. So if you consider total area in the northwest, particularly Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttarakhand, and Himachal, so the area which are affected by landslide is quite high compared to our northeast. This is a case study which many of us know, and we are also inter-center team by NDMA. We have done this study. There was a rock avalanche followed by a glacier avalanche due to a waste failure in the Rauntigad, which is a tributary to Dhauli Ganga River, and this happened on 7th February 2021. So the challenge was initially, people were panicked. They didn't know from where so much water is coming. So our challenge was to identify quickly what is the source of that disaster that we did, and what is the amount of material which were displaced that we did, and these are the things which are the findings, and what is the geotechnical cause of the failure. So those things have been done using very high resolution satellite data because the source area is located at quite remote area. And this is the multi-temporal high resolution satellite data from 2015 to till the failure in February 21. It shows how slowly the joint plane has been expanded because of high heating and lesser amount of snowfall. This picture was taken through an Indian Air Force helicopter, and we can clearly see a wedge safe failure. And these are the field ground pictures within the tunnel where we lost several workers of a hydroelectric project. And this is how their dam was affected because of this debris flow. And this kind of assessment was useful to understand why suddenly we are witnessing so many landslide in the permafrost areas which were previously not seen. Coming to the timing part, we have fortunately a couple of satellite images were taken at 10 morning 10 hours 31 minutes, then followed by 10 hours 58 minutes. We could clearly see the dust cloud in the Dhauli Ganga Valley. That's where the active debris flow was happening that time. And it crossed the Tapovan Dam around 10 hours 36 minutes. So in between it was captured, it was near the rainy village. So this is the active movement of the debris flow front was captured using high resolution satellite data. So that helped us to do a time stamping. And coming to the source area, this is where it failed. You can see some dust clouds even after the beginning of the failure. So it started around, this is what the time sequence we have reconstructed, when it started and when it ended. And we could see that this is the activity which was there in that place near the Rounty Peak for around 1 hour or so. And that led to a lot of devastation in the downstream areas. This is how the satellite remote sensing was helpful to quickly assess the situation in the
Risiganga Valley. These are the very close view pictures of how the headscarp and the side scarps are exposed. And still we can see in the crown area, those pulverized rocks are exposed here. This is how in the crown, the pre-failure image, you can see how the joint plane has slowly expanded and that failed on 7th February. This is just a downslope where we can see a lot of debris has been deposited and they were basically unconsolidated debris. And that's why you can see a lot of slumping marks on the debris deposit. That means they are unstable for future movement also. This is a picture of damage to the infrastructure. In the left side, you can see before how the Bhavan project was looking in the Kamsat 3 image. And in the right side, with ISRO's Stratosat, how the situation was there. You can see the desilting tank was completely filled with the debris and the structures of the dam were damaged. There was one artificial lake was formed in the Risiganga, and that was also continuously monitored using high resolution satellite data. And sometime, if I remember correctly, in July that year, in 2021, that was naturally breached. Fortunately, no damage was noticed in the downstream part of that area in the Rain village. Some previous case studies, you can see Kedarnath. We all know in 2013 how big was there, how many lives were lost. And you can see the before and after image of the Kedarnath town. We have a temple which was intact, but the yellow circles you can see, the bridges were completely damaged, washed out. That is how the rapid damage assessment was done for Kedarnath as well as the downstream areas. Then in Wokimat also in 2012, there were a few landslides, particularly I remember, I think in the Chuni and Mangali, these villages, there are a lot of damages happened. I can clearly see before and after image and how the house over here were in the runout path of the debris and now they are completely damaged because of the landslide in Wokimat in 2012. In Srinagar, Garhwal, Srinagar, we have in 2013 the T1 terrace where some of the sports facilities and some of the defense facilities were also affected because they were in the floodplain area and the flash flood could inundate the entire thing. You are not audible, sir. And the right side where hydroelectric project, where we buried the hidden side, the small run of the river scheme over here, you can see before and after. So this kind of post-disaster assessment is part of our activity to support the SDMA, to NDMA, the district authorities in the concerned states in the aftermath of a disaster. This is a case where Balyanala in Nainital, we have done a study last year. You can see multi-temporal images 14, 17, 20, then February 21 and October 21. In between this, I think August 21, there was heavy rainfall. There are roughly around 300 landslides, including the reactivation of the Balyanala landslides. So the crown part of the landslide, you can see is clearly retrogressing. That means the upslope areas where the government college is located and further upslope areas, and there is one colony over here, they are at danger. And when you do INSAR using satellite-based INSAR interferometric SAR study, and we have found that these areas, you can see the green dots, they are more or less stable, but the red colored dots, they are unstable. And if you look at the velocity or displacement for this particular point, which is marked as number 1, that is, it is moving at a greater rate. So this area particularly is very unstable and in the verge of imminent disaster. We can't say at what time, but continuous monitoring. I know there are few organizations, institutes, they're working on that area, but definitely the monitoring will be helpful
for this Balianala area of Nainital for alert purpose. The susceptibility map which we prepared in 2001 on 25,000 scale for tourist or we call it Char Dham routes. That was released in 2001 and now GSI has been mapping this susceptibility zonation across all the district and state in the hilly areas. The early warning, we have a rainfall-based early warning, which we call as experimental early warning, and that is based on our R&D study using the rainfall data. We have the actual rainfall which is coming from IMD, and there are some forecast rainfall from IMD as well as our resource WRF model from Mosdak, SAC Ahmedabad. So these are being used to do a 72 hours so early warning for landslide disasters in the Char Dham Yatra route, as well as in the Himachal Pradesh, as well as some parts of northeastern states. Now, can we do a prediction and of time of failure? That means at what time that slope is going to fail. So we have done some back analysis. This case study is for a landslide called Kotrupi in the Mandi districts of Himachal Pradesh. And when we did a back analysis, we could found that 24 days prior to the actual failure, which was on 13 August 2017, the instability has started. So how we did that? We have a time series of movement from 2015 to 2017. I can show that in my subsequent slide. So you can see here we have done this time series from 2015 to 2017. And in this period, there was a steady state of movement. And at this particular time, that is on September 2016, there was heavy rainfall, as you can see the rainfall data down below. The displacement started increasing. So interferometry, we could measure the displacement and we continuously monitor that area as a back analysis, not of course in the first side. So that displacement kept on increasing, and on 22nd July 17, there was a rapid movement of 23 millimeter. That's what we call as a tertiary stage of failure. That means if we reach that stage as per the creep theory, it is going to fail. So we have developed some technique by which using this continuous time series data for past 2 to 3 years, which is possible using satellite insert, and we have developed the algorithms for that. We can do precisely a kind of a date of future slope failure. And if we know the source area, then we can do a flow modeling. And I can see in the right side panel over here, if know the source area, we can convert that into volume, and the runout length and the runout height, all these things can be modeled so that any settlement or any road or bridges downstream, some sort of warning can also be issued. This is kind of proof of concept we have developed, and very soon jointly we're working with Geological Survey of India, and we'll be able to do kind of a better early warning, including the landslide kinematics, which were measured from the INSAR. Coming to the landslide volume, that means how much material was slided down. This is quite important because sometimes, as you know, the landslide, they dam the valleys. So we need to know how much material is damming. Sometimes they block the roads, we need to clear the roads. So when we have a multi-temporal digital elevation model using a stereoscopic satellite data, we can do such kind of landslide volume estimation. This case study is in one area in the Chamoli district in Uttarakhand, and we could have before the disaster elevation model and after disaster elevation model. And you can see this is the surface, the post-failure surface and the pre-failure surface. Some kind of vegetation corrections also we did, and the volume was almost 0.5 million cubic meter. So this kind of volumetric estimation of landslide also was possible using satellite-based DEM.
Monitoring continuously, as you know, there are many platforms which is offering satellite data, and we can do that. One case study was in the Puktal River in Jammu and Kashmir, wherein we could continuously do a monitoring in the month of February and March because the Puktal River was blocked because of a rock slide, and at the tail end there was a big lake which was freezed because of a sub-zero temperature, and we have to monitor as part of NDMA activity, and that's what we did. And the dam was failed in sometime in March 2015. Uh, some kind of R&D study we did, how without DM also, when you have a steep gorge, we can reconstruct morphologically the geometry of a landslide dam, and without a satellite data also, sometimes it is possible to find out the volume of the material which is lying on the deep gorge. So this work has been published also. Okay, this, so I prefer to skip this one. Coming to UAV, a very high resolution UAV Sir, sorry to datasets interrupt available in you. RSCR UAV, and Sir, we can do a SFM technique by which we can model the elevation surface and we can find out the landslide volume. This case study is for one sir, area in sorry the to Wayanad interrupt you. district of Kerala, where 16 people lost their life. And this was a case study in Assam, which was last year. There was a new Haflang railway station which was damaged because of several debris flows which are coming and coalescing at this particular place. So this flow modeling, you can see the animation which we did, something like 15 landslides, they worked at the same time, and that's led to a lot of damage. You can see one train which was completely derailed and toppled because of the material which will come from the west side of that station. And landslide atlases we have released in 2001. You can see over here. And last month we have Chairman ISRO has released a landslide atlas of India. I suggest all the participants to download this atlas. This is freely downloadable from this NRSC website, and you can use it. It has a lot of data on landslide inventory, risk exposure, and what are the R&D studies ISRO is undertaking to minimize the risk related to landslide disaster in our country. So this will give you a wholesome idea of what are the landslide work being taken by NRSC ISRO. I'd like to stop here with our future mission coming ISRO and NASA joint mission NICER, which is dedicated mission for climatological study as well as disaster studies, earthquake and landscape, how we can address the challenges which Uttarakhand are facing. With this, I'd like to stop here. Thank you very much. Thank you, sir. Very thought-provoking lecture. And next, next I would like to invite Professor S.N. Lab, sir. Hello, sir. Good evening. Namaste. Sir, a very warm welcome to you, and I welcome you to please deliver your lecture on risk assessment and sustainable development of Joshiman, present status and future challenges. We have only 30 minutes, sir, so I'll intimate you before 5 minutes because of the paucity of time. I would like to share my slide. Sure, sir, sure, sir. So please share your screen.
Sir, you are not audible. Unmute yourself. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर. Say, where is the there The there icon is below. there is a When, speaker. then after that, There is a video, and there is a next, then storm. next. Then there is a send a reaction, and there is a present now. Yes, click that. And in present now, your entire screen, a window, a tab. So what should I? Window? You click that, yes, and then you will find that the whole of the screen is coming. Your computer screen will come, and then click your presentation there. But the share is not coming. So I have to get permission from the point that They will allow. Is there anybody from the university side? Yeah, Sham Narayan ji, G. you click at share. कोई तो शेयर हो नहीं रहा. प्रेजेंटेशन में कीजिए क्लिक. प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट नाउ कीजिए. उसमें देखिए आपका आ रहा होगा शेयर योर एंटायर स्क्रीन. ठीक है, आ गया. अब ये शेयर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और फिर नीचे अपनी प्रेजेंटेशन. हाँ, आ गया. इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए. इसको फुल. हाँ, इससे बस ठीक है. इट इज विजिबल नाउ. सबके लिए मेरा आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है प्लीज. चलिए, तो मैं आप सभी को इस न्यू ईयर, जो नया साल जो है, नूतन वर्ष जो अभी हुआ है और हम लोग अभी चल रहे हैं, और बेसिकली बैसाख से नेपाल में भी नया साल का हैप्पी न्यू ईयर होता है, जो हमारे हिंदू कैलेंडर को बिलोंग करते हैं. तो उसके आधार पर मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमस्ते भी करता हूँ. और टुडेज मैं अपने आप को आई फीलिंग प्लेजर टू गेट पार्टिसिपेट इन दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑन जियोहैजार्ड रिस्क असेसमेंट and sustainable development of Uttarakhand Himalaya. So I would like to thank the organizing committee and especially Lieutenant General Gurmi, Honorable Governor of Uttarakhand and Chancellor Kumaun University Nainital, Professor N.K. Joshi, Honorable Vice Chancellor Kumaun University Nainital, Professor Pradeep Goswami, Head of Geology, Kumaun University Nainital, Professor Santosh Kumar, Director of IOINDRR, all the dignitaries present in this brainstorming session, online and offline, and dear friends, scholars, and listeners. So today
I'm going to share my view. I'm not the area related which I have seen. अभी तक जितने भी स्लाइड हमने देखा है सब के सब जो है हाई लेवल स्कॉलर ने अपने अपने स्पेशलाइजेशन से आपके साथ शेयर किया है। मैं आपको एक जनरल शेयरिंग कर रहा हूँ, जो मेरे मन में आया उसके हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। So there is the risk assessment and sustainable development of Joshimath. Now the present status and future challenges. So यहाँ पर जो टाइटल आ रही है जियो हैजार्ड। जियो हैजार्ड आज के डेट में इट इज अ चैलेंजिंग एंड बर्निंग सब्जेक्ट and every area of the scientists, they are giving their focus towards how the earth is, in which condition and what will be tomorrow and where we are. If the earth is normal, if our land is in normal position, then सुकून की सांस आती है, otherwise it is very difficult to survive. It is a survival problem. So geohazard is an adverse geologic condition capable of causing widespread damage or loss of properties and life. So everyone, it is well known about how much damage we are facing day by day through this. So there are not only the land is concerned, all the things belong to the land like flooding, fire, earthquake, landslide, and all these things are concerned to the geohazard. And basically earthquake we are facing since few years. Every time we are in the position of how the earthquake is giving us the horrible condition. So geohazard affect human societies every day on every continent, causing each year thousands of casualties. And so many slides previous presenter have shown that, so I'm not going to give the same things repeatedly. So I would just like to show that how these things that the lands are, we are facing, the societies are facing the hazard. And over the last century, land use practice have drastically increased. So because of the unbalanced increasement, unbalanced development of the society, we are facing this geohazard. So impact of geohazard is directly concerned on the human society. So volcanic disaster we can say in the Asia condition. So there are the volcanic disaster is also at the high level. Earthquake precise prediction is not only, but it is globally, it is challenging form and it is a big hazard in concern to the modern society. So in the earthquake also in Asia, we can see I have a small click of the data. So in there are the affected area, the people killed and homeless, and the total affected, all these given in the Asia concern. And like the tsunami disaster, so Indian Ocean, so there are so many ways we have the information in relation to the tsunami disasters, and even in the Asia, the tsunami disasters also concern to the number of losses, and all these directly concern to the landslides. So in the landslides among the geohazards, it is the ground instability and the most widespread hazard. So modern days, it's these type of disasters are most destructive in developing countries, particularly in those having the high population growth. So again, through this, we have the number of this, this is the world data, but we can see that comparatively Asia and even the developing country, Indo-Nepal border, we are facing Uttarakhand and the Himalayan region of the Nepalese area, we are facing this type of event. So again, coming to the point that the Joshimath, which is very common, and now it is a burning subject and burning area where each and every corner of the scientists are giving more focus toward the why it is happening and what is happening in the Joshimath. So Joshimath is sinking,
and it is in the understanding that the particular area is sinking, not the entire the whole mountain area. The particular area is sinking. So Joshimath के बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे. I would just like to so focus that the Joshimath is not only the present Joshimath, it is very ancient, and the city serves as a tourist town as it acts as an overnight rest stop for the people visiting Badrinath, and it is the base camp, it is the base camp to reach the Badrinath. So Josinath Math and Badrinath is correlated, and Josimath को आदि शंकराचार्य that this is also related to the Kedarnath based, and through this the Joshimath is more highlighted. So again the Joshimath को कहा जाता है स्वर्ग का द्वार, और जोशीमठ से विशेष धार्मिक महत्व तो जुड़ा ही है. इससे जुड़ी है पौराणिक कहानी के अनुसार पांडव ने जब राजपाट का त्याग कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना था. So all the famous places, these are the tourist areas. So there are so many famous places, Joshimath. But what are the major problem concerning the Joshimath, and what is the challenges, the future challenges? So the basic only one concern is that the Joshimath is sinking day by day, and everyone is worried and have giving the focus that why it is happening. So sinking of Joshimath is primarily due to the heavy deforestation and soil erosion caused by human activities such as illegal logging and mining. The removal of trees and vegetation from the surrounding hills has resulted in the loss of the natural barrier that protects the town from the landslide and soil erosion. This causes the soil to lose its stability and makes the town more vulnerable, and due to this the sinking is concerned. So in 2021, a glacial burst in the state of Chamoli district triggered an avalanche and led to the massive flooding in Reni village, leaving over 200 killed and missing. So Joshimath, it is now confirmed it is facing major challenge due to land subsidence. The primarily study by the ISRO already we have seen, so I'm not going to repeat. So why Joshimath is thinking that there is a crack on wall and buildings were first reported in 2021 as Chamoli districts of the Uttarakhand experienced frequent landslides and flooding. So it was found that the gradual settling or sudden sinking of the earth's surface due to the removal and displacement of the surface materials. So according to the 1976 Misra Committee report, Joshimath lies on the deposit of sand and stone, and it is not on the main rock. So it lies on an ancient landslide. The report added that undercutting by river currents of the Raknanda and Dhauliganga are also playing their part in bringing landslides. So scattered rock in the area are covered with the old landslide debris comprising boulders and Nessic rod and loose soil with the low bearing capacity. We have already discussed previously. So the construction activities, land erosion, and due to which the at least 66 families have fled down, with while 561 houses have reported cracks and over 3,000 people have been affected. So we can see this unplanned construction, unplanned building, and very recently a snow disaster also. The people living in that area faced a snow disaster. A snowfall in Joshimath
and many other places in the Uttarakhand have been reported by many news, and it's very difficult to survive nowadays, and we have to give the proper solution. So what can be done to save the Josimath, and what are the sustainable development toward this area? So there are few recommendations from my side. So what I have thought that an urgent need is to relocate the resident to a safer place and then reimagine the town's planning to accommodate the new variable and changing geographical factors. A complete shutdown of development and hydroelectric projects in this region. The city is suffering from poor drainage and sewer management as more and more waste is seeping into the soil, loosening it from within. Hence, drainage planning is one of the biggest factors that needs to be studied and redeveloped. Only then it will be set up at and into its development. A Himalayan research laboratory must be established as a center for excellence and to avail the interdisciplinary research facilities so that any problem can be solved scientifically and also will support the society properly. Retired professionals of any discipline should be engaged in social and research awareness programs with at high level leadership support. So Department of Science, Disaster Science and Interdisciplinary Study is the major suggestion. And the University of Himalayan region must provide maximum budget toward the research and development on disaster related research in any discipline. Health disaster experts must be produced urgently to support the society at any moment. Sustainability of agriculture has been the main concern of Indian agriculture. Due to climate change and reducing land availability, it may become increasingly challenging to grow crops using traditional method of growing outdoor on expensive farmland. So Himalayan land can be the best for many farming, other production of medicinal herbs for human and animal health concern. One house, one farm. Aquaculture is a method used to produce food and other commercial products, restore habitat, and replenish wild stock, and rebuild population of threatened and endangered species. Hence, one house, one farm scheme is advisable to encourage the society towards aquaculture and aquaponic business. So state government should provide fellowship for internship among intra-Himalayan states level students of graduate level in any area of research. NIDM plus university jointly run the program for the PhD production in relation to this hazard and the Himalayan disaster system. So again, the NGO also should work within this premises and this NIDM and university in association with the NGO and INGO should work on the common problem. So with this background, I again thank you everyone and especially thanks to Professor Santosh Kumar, Director of IUI and NIDM, and Professor Pradeep Goswami, HOD and Vice Chancellor of University, Kumaun University. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, everybody. जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस पूरी साइंटिफिक एक्सरसाइज का जो मेन मकसद था, जो मेन उद्देश्य था, वो ये था कि हम कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस तैयार करें जो कि इस क्षेत्र में विकास की योजनाओं को या विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायक हों। ये सही बात है, सच्ची बात है। पहले भी कहा, पीयूष भाई ने भी कहा, कई सब लोगों ने कहा कि पूरा हिमालयी क्षेत्र जो है वो आपदाओं के लिए प्रवृत्त है। इट इज़ प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स। और उसके बावजूद भी एक दूसरा फैक्टर हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो वल्नरेबिलिटी है किसी भी डिजास्टर के लिए, किसी भी आपदा के लिए, इट इज़ नॉट
uniform all across the Himalaya. Vulnerability varies from place to place. And to turn a hazard into a disaster, it is prerequisite that that area is vulnerable. We very much require development. In my opening remarks, my welcome address, I stressed upon this point that कि यहाँ पर रहने के लिए, इस क्षेत्र के लिए विकास उतना ही जरूरी है जितना किसी भी अन्य ऐसे इलाके के लिए है जहाँ लोग रह रहे हैं. अगर किसी और क्षेत्र के लोगों को अच्छी लाइफ जीने का अधिकार है तो यहाँ के लोगों को भी जीने का अधिकार है. दूसरी चीज इस क्षेत्र को जो ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि हमारा जो राज्य है उसकी स्ट्रेटेजिक और उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बाकी अन्य क्षेत्रों से मान के चलिए, जैसे कि मध्य भारत के क्षेत्र हैं या दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, उनसे कहीं अलग है. तो किसी भी स्थिति में हम कहीं भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम डिजास्टर से डरकर या आपदाओं से डरकर या किसी भी आपदा के जोखिम से डरकर विकास के कार्यों को यहाँ पर रोक दें. हाँ, ये जरूर है कि हम अपने जो विकास की योजनाएं बनाएं, जो हम अपने विकास के और परियोजनाओं को यहाँ पर क्रियान्वित करें, वो कुछ ऐसे करें कि उससे हमारे जो डिजास्टर का इस क्षेत्र में जोखिम है ओवरऑल वो कम हो. या हमारे ये विकास, अगर आप विकास की डेफिनेशन को देखते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं तो यू वोंट फाइंड एनी डिफरेंस. ये दोनों डेफिनेशन एक ही हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लंबे समय तक चलते रहती है. तो बात जैसे थोड़ी देर के लिए अगर आप नैनीताल में ही ले लीजिए, नैनीताल में तल्लीताल से मल्लीताल आवागमन करने का अगर जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि या तो आप माल रोड से आइए या फिर आप ठंडी सड़क से आइए. माल रोड धंस रही है, ठीक है, ठंडी सड़क में लैंडस्लाइड का खतरा है, वो भी ठीक है, लेकिन रोड तो चाहिए. अब बात ये है कि रोड कैसे बनाई जाए. यहाँ पर कई लोग हैं जो लोग यूरोप गए हैं या दुनिया के और हिस्सों में गए हैं, जापान गए हैं या ताइवान गए हैं या कोरिया गए हैं. ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा आपदा के लिए प्रवृत्त क्षेत्र हैं. जापान मेरे ख्याल से दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा आपदाएं आती हैं. लैंडस्लाइड्स भी सबसे ज्यादा आते हैं, भूकंप भी बहुत ज्यादा आते हैं, ताइवान में आते हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में वहां रेल का जाल बिछा हुआ है, पटरियों का जाल बिछा हुआ है. और रोज भूकंप आने के बाद भी, जैसे पीयूष भाई ने बाम का और कैलिफोर्निया के अर्थक्वेक का उदाहरण दिया था, एक चीज आपने देखी होगी, वहां इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती हैं. 6.1 का हमारे यहाँ अर्थक्वेक आया या 6.9 का हमारे यहाँ अर्थक्वेक आया तो कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो गई. ऐसे अर्थक्वेक जापान में आते रहते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं होता. तो बात क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज अपॉन इज दैट कि देयर प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट इज डिजास्टर रेजिलिएंट और जियो हैजर्ड रेजिलिएंट. तो ऐसा ही कुछ हमें अपने क्षेत्र के लिए भी सोचने की आवश्यकता है. इस पूरे साइंटिफिक एक्सरसाइज का मकसद यही है. मुझे एक चीज लगती है बार बार कि हम कोई भी विकास की परियोजना बनाते हैं तो उसमें एक मैंडेटरी एस्पेक्ट ये होता है कि वी हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. ये मैंडेटरी है. अब मुझे लगता है कि उसके आगे एक और भी जरूरी चीज है कि इफ यू आर वर्किंग on sensitive areas, hazard sensitive areas, so it is the time that along with environmental impact assessment, we talk about disaster impact assessment. हमको ये भी करने की जरूरत है. हम सिर्फ अगर किसी विकास की परियोजना की बात कर रहे हैं, हम मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को हार्नेस करने की बात कर रहे हैं या सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की बात कर रहे हैं या विंड एनर्जी को हार्नेस करने की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू पुट इन इंफ्रास्ट्रक्चर देयर. हमको डैम बनाना है, हमको टनल बनानी है, ये सारी चीजें हमको करनी है. लेकिन बात तब है कि जब हम उस एरिया का, अभी somebody emphasized upon the fact that we need to have
a comprehensive vulnerability analysis of that area. Comprehensive vulnerability analysis when we talk about, तो उसमें हम दो चीजों को देखते हैं कि number one, it is not going to add to the vulnerability of that area, and at the same time we also try to formulate our these development projects in such a way that these ultimately reduce the vulnerability of that area to the maximum extent. जितना ज़्यादा हो सके उतना कम कर दें हम उसको. कई बार ऐसा होता है, अगर आप लोग, पीयूष भाई बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उत्तराखंड में, या कई लोगों ने किया है, प्रोफेसर उपाध्याय ने किया है, प्रोफेसर सीसी पंत ने किया है. अगर आप देहरादून से चक्राता की तरफ को जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ज़माने में वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का प्रोजेक्ट आने वाला था, किसी कारण से वो नहीं आया. लेकिन आप उस पूरे क्षेत्र को देखेंगे तो वहाँ हैवी मशीनरी को ले जाने के लिए सड़कें बनाई गई, सड़कें चौड़ी की गई. लेकिन जब सड़कें चौड़ी की गई तो जितनी सड़क काटी गई उतनी ही उसकी आपकी स्लोप की लाइनिंग की गई, जबरदस्त तरीके से लाइनिंग की गई. धौली गंगा में जहाँ पर बांध बना हुआ है एनएचपीसी का, उस बांध के जहाँ पर डैम बना हुआ है उसके जस्ट अप स्ट्रीम में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया. And fortunately, at that time, I was there in that region only. I was associated with the disaster management system of Uttarakhand at that time. So I visited that place, and NSPC was working there. One of the alumnus of our department, हमारे Patni ji, was working there at that time. I had an opportunity to visit that place with him. And when we went there, the whole team of geologists of NSPC was there at that site. And I was very curious. I was really frightened to see the extent of that landslide. And I asked him, this was my query. मैंने पूछा कि सर इतना बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हो गया और इसके जस्ट 50 मीटर के नीचे आप डैम बना रहे हैं, तो ये तो बड़ा खतरनाक है. तो उन्होंने कहा कि नो, नॉट एट ऑल, ये तो होते रहता है. दिस इज गुड फॉर अस. I was very much surprised as to how this could be good for this project, for the safety of this project. And he said that, Malika, how you are going to treat? He said that we'll treat it. Then I asked again, how you are going to treat it? He said we will just leave it for some time. Let it come down. Let it come down. ये जितना आ सकता है आने दीजिए. जब ये आ जाएगा, अपना एंगल ऑफ रिपोज बना लेगा, तो उसके बाद हम इसकी लाइनिंग कर देंगे. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसे डिजास्टर प्रोन एरिया में डैम वगैरह बनाना जरूरी है? नहीं बनाए तो क्या करें? तो उन्होंने बड़े मजे से मुझसे पूछा, घर में लाइट कहां से जलाएगा? These are the things. आप उसका देख लीजिए. आप अभी सुबह प्रोफेसर पंत ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दिस इज द टाइम दैट नाउ वी डू नॉट गो फॉर बिग सिटीज, वी डू नॉट गो फॉर बिग projects, developmental projects. Rather, we look for some alternatives. We can go for smaller towns, satellite towns, और फिर वहाँ पर पूरा एक assessment करें, disaster impact assessment करें, environmental impact assessment करें, पूरा एक analysis करें कि एक छोटे शहर को बताने के लिए उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, उनके पानी की ज़रूरत कितनी होगी, उनकी बिजली की ज़रूरत कितनी होगी, उनको सड़कें बनाने की कितनी ज़रूरत होगी. The other day I was discussing with Dr. Piyush Rotela, and he simply asked me a question कि you have seen so many places in this world, not physically, हाँ, TV में तो सभी ने देखे हैं. And he asked a simple question कि दुनिया में कितनी जगह पहाड़ों में इतनी चौड़ी रोड है जितने हमारे यहाँ होती हैं. And that made me to think, to realize that whether we really require wide roads in Himalaya. The other day there was news in local newspapers, most of you have gone through that news, that now there is a plan to widen this Nainital Halwani road. Most of you have traveled from Nainital to Almora. Earlier that was a narrow road, but it was not that much affected by landslides. Now you see they are widening the road. And it means what they have done is that the very critical state of equilibrium, there they have disturbed. And now there are recurrent landslides
all across that entire stretch of the landslide. So then I thought, yes, what is the requirement, what is the need of widening the existing roads when these are serving the purpose very well? Okay, we are facing some difficulty, that's okay. In summers particularly, we know that there are traffic snags, so there is congestion in these roads. But there could be alternatives. To reach Nainital, who has asked you to rely only on that Nainital, that Kadunam Nainital road? Why don't you take alternative road? एक नई रोड बनी है अभी, पतली रोड बनी है, नैनीताल से पटवा रांगड़ होते हुए फिर वहां से नीचे को. एक आपकी रोड कालाढूंगी वाली ऑलरेडी है, एक आपकी भीमताल से होते हुए आती है. Why can't we make a provision that all these roads will be one way? Only one-way traffic will be allowed in these roads. If you are coming to Nainital, then you come via Haldwani. But if you are leaving Nainital, then you go via Kadunam. What is the problem in that? So if you make such kind or put such type of alternatives, so I don't think कि आपको ऐसा विकास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि विनाश का कारण बन जाए. अल्मोड़ा वाली रोड में कई गांवों में उनके स्टेबिलिटी को खतरा पैदा हो गया. जोशीमठ वाली जो रोड बन रही है, जो बद्रीनाथ वाली रोड बन रही है, सभी लोगों ने देखा है, there are many stretches where the road is passing through loose material. And if you see those road cuts, there are many places where the road cuts are just at right angle. बिल्कुल वर्टिकल बना रखे हैं. और आप वहां पर देखिए रिवर बॉर्न मटेरियल है, सारे का सारा ग्रेवल पड़ा हुआ है, वो नीचे नहीं गिरेगा तो क्या होगा उसमें, वो तो होना ही है. तो ये चीजें समझते हुए जो आज का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा था, इसी बात को लेके रखा हुआ था, इसी पे हम लोगों ने विभाग में डिस्कशन किया था, इसी बात को, इसी प्रपोजल लेके हम अपने कुलपति जी के पास आए थे और यही उसका मकसद था. इस सेशन में मुझे इतने बोलने की आवश्यकता नहीं थी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीचर आदमी बहुत देर से चुप बैठा हूँ तो मन नहीं लग रहा है. जो रिकमेंडेशंस थी इस सेशन में ये था कि वी ऑल विल सिट टुगेदर, वी विल हैव इनपुट्स फ्रॉम ऑडियंस एंड फ्रॉम एवरीबॉडी, those who are connected online, and then we will compile these recommendations, good recommendations, not just recommendations which look very beautiful and बहुत ज़्यादा cosmetic की हुई gorgeous recommendations. We do not want that kind of recommendations. We just want to make recommendations which are functional, जिसको कि adopt किया जा सके. अब अगर आप कह दें कि नहीं साहब सड़क बननी ही नहीं चाहिए, तो ये तो बात नहीं चलेगी. ये बात कैसे नहीं चल सकती है? अगर आप पहाड़ के गांव में देखें, एक गांव में अगर सिर्फ 10 परिवार भी हैं, तो उस 10 परिवार के लिए एक परिवार के एक सदस्य की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है. ये जरूरी नहीं है कि किसी एरिया में अगर 100 लोग मर रहे हैं तो तभी आपको कंसर्न होने की जरूरत है. आप अखबार में अक्सर पढ़ते हैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और डिलीवरी के टाइम पर उसको डोली में या खाट में लेटाकर 15-15 किलोमीटर दूर लाया जाता है. थिंक ऑफ दैट लेडी, क्या होता होगा, कितना कष्ट होता होगा. पहाड़ में दूर दराज की जगहों में घास काटने के लिए घास नहीं है, पेड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं. वी नीड रोड्स. व्हाई डोंट वी नीड रोड्स? वी नीड रोड्स. व्हाई डोंट वी नीड डैम्स? वी नीड डैम्स. हमको है पानी की जरूरत, हमको है ग्रीन एनर्जी की जरूरत. लेकिन बात यह है कि हम कैसे साइंटिफिक तरीके से चल सकते हैं. अभी एक बड़ा टिपिकल सा चीज आपने देखा होगा, ये पहाड़ में भी हो रहा है कि देयर आर वेरी स्लोप्स विच आर वेरी कंड्यूसिव फॉर हार्नेसिंग दिस सोलर एनर्जी. देयर आर वेरी एरियाज विच आर वेरी कंड्यूसिव फॉर हार्नेसिंग द विंड एनर्जी. लेकिन क्या है, जब आप विंड एनर्जी लगाते हैं, विंड मिल लगाते हैं, बहुत ऊंची होती है, बहुत बड़े उसके पंखे होते हैं, वो घूमते हैं तो वो भी शॉकवेव जनरेट करते हैं. तो क्यों लगा रहे हैं ऐसी जगह पर? दूसरी जगह पर लगाइए ना. या कोई दूसरा इंजीनियर से कहिए, मैकेनिकल इंजीनियर से कहिए कि भाई कोई ऐसा कुछ बनाए कि जिसमें कि आपका फैन छोटा हो, स्ट्रक्चर कम भारी हो, लेकिन वो एनर्जी आपके उतनी हार्नेस कर ले. आप छोटे छोटे बनाइए, क्या प्रॉब्लम है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल थी हमारी, वो ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ दी हैं. Those who are associated with the disaster management of this region, they know very well. Those who have analyzed the past disasters of this region, they know very well what happened. Had the people of Uttarkashi region, which was most affected by 1991 earthquake,
अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे होते तो वहां इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती, किसी हालत नहीं होती जितनी हुई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां पर हो क्या रहा था। डैम बन रहा था, पीयूष भाई आपको मालूम है, डैम बन रहा था। डैम बनने में क्या है, खूब सारा सीमेंट आया, खूब सारी सरिया आई, ठेकेदार ने ठेका लिया, उसने मुंशी को काम सौंपा, मुंशी ने वो जो जितना भी सीमेंट था और जितना भी सरिया था वो सस्ते दाम में गांव वालों को बेच दिया। ये फैक्ट है। और गांव वालों ने सस्ते दाम में खरीदा और उनको ये लगा कि भाई हम पाथर का मकान क्यों बनाएं, यहाँ हम तो गरीब हो जाएंगे, लेंटर का मकान बनाएंगे तो बहुत अमीर हो जाएंगे। अब इतना तो समझ में आ गया कि लेंटर डाल देते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि लेंटर को सस्टेन करने के लिए, लेंटर को रुके रहने के लिए दीवार भी उतनी भारी चाहिए। नीचे बना दी अपनी वही ट्रेडिशनल दीवारें। उन ट्रेडिशनल दीवारों में भी जो कॉर्नर स्टोन वाले कंसेप्ट हैं आपने देखे होंगे, वो सारे छोड़ दिए। खिड़कियां सरिया की बना के रख दी, वो लकड़ी वाली सरियाओं का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। उसके ऊपर जो एक डोर बेंड आता था वो लगाना छोड़ दिया। पूरे का पूरा छत के बाद एक चौरसी आती थी तो चौरसी पूरी सीमेंट की बनती थी, वो सीमेंट की चौरसी छोड़ दी और उसके ऊपर लेंटर डाला। एक ने 4 इंच का डाला, दूसरे को लगा कि मेरा वाला इससे मोटा होना चाहिए, उसने 8 इंच का डाला, किसी ने 9 इंच का डाला। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, खूब बनाया गया। और उसके बाद हुआ क्या, जब अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने में दीवार में तो ज्यादा वो था नहीं, दम था नहीं, दीवार गई और पूरे का पूरा लेंटर नीचे बैठ गया। तो ये परेशानियां ये हैं, ये हैं परेशानियां, एक्चुअल परेशानियां ये हैं जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम क्यों नहीं चाहिए, हमको चाहिए भाई, हमको चाहिए डेवलपमेंट, क्यों नहीं चाहिए। जापान जहां रोज अर्थक्वेक आ रहे हैं, जिसके इतने नजदीक ताइवान जिसके पास 3 प्लेट्स का जंक्शन है और 3 की 3 एक्टिव्स है, घूम रही हैं, वहां पूरी की पूरी रेल लाइन है, लंबी लंबी टनल्स बनी हुई है, सब कुछ चल रही है, वहां कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ एक सड़क है वो टूट जा रही, गुलाब घाटी को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो कमी कहाँ है, कमी तो हमारे पार्ट में है ना। रिकमेंडेशंस काफी आई हैं, इन रिकमेंडेशंस को हम कंपाइल करेंगे। आप सब लोगों ने जो इनपुट दिया है, वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू for giving your suggestions and recommendations. We will now sit. It will definitely take some time in compiling these recommendations. We will put in our best. We all in our department will sit together and compile these recommendations. And once these recommendations are finalized, we will circulate these recommendations to all of you to have a look. And if you wish, you can make further recommendations, or if you wish, you can edit those recommendations. We will send it to you by email. And finally, once you okay these recommendations, then we will finalize these recommendations. So I now request my senior colleague, Professor Santosh Kumar, for closing remarks. Thank you. Thank you very much. Am I audible now? It is working. All right, no problem. This is working. Yeah, yeah. Oh, all right. Yes. Thank you. So now this brainstorming session has come to the end, and my task is to extend this closing remark and vote of thanks officially. But I would like to share some of my views as a solid earth scientist. We know that our Earth, planet Earth, took almost 4.6 billion years to make it habitable. It means to attain this state of developing the habitat on the Earth, the entropy is zero. You know that everything is in order. Environment, Earth's environment, and what we talk about, the 5 spheres of the Earth: hydrosphere, atmosphere, lithosphere, cryosphere, and their interaction to produce
biosphere. See that when we started, or when we started thinking about the development, so definitely we are going to increase the entropy of the Earth's surface. And objectively, it is very difficult to protect the environment if you think about the development. So whatever the today our distinguished scientists and the experts, member of the expert panel, they spoke, almost they share their experiences, whatever they have done during their entire career or these professional activities, what they did, they, they spoke about that, and I tried to summarize. During our inaugural session, our chief guest, Honorable Governor and Chancellor of Kumaun University, Lieutenant General Gurmeet Singh Ji, he actually emphasized on the climate change and for the development of early warning system based on data mapping. Actually, the topography is mostly the threat to the, what you say, this life. And further he emphasized that no construction should be allowed in such hilly regions without having any scientific planning. Second point he raised, the human life, environment and life, and we actually have to work on, or better in view of need of our stakeholders. And then he emphasized on the holistic and sustainable development of environment and economy. And promotion of he emphasized on the promotion of ecotourism, healthcare, active participation of the people while making this planning for any developmental activities, and government and people must work together for the sustainable development. And he also called upon some creation of the innovative thoughts and ideas and scientific discussion which must be viable for the overall growth of the environment and economy of the state. Then Professor N.K. Joshi, our Honorable Vice Chancellor, he welcomed our guest, and he spoke about the need of this brainstorming session. And further, Professor Pradeep Goswami also, he spoke on the design of this program, brainstorming session, why we have, we choose this topic, and many other aspects he told about. And just now he also spoke in this recommendation session what we have to do actually to bring the things on ground level. Dr. Piyush Rautela ji, actually I was not actually present for a while, so I missed this early part of your lecture, sir. When I entered, he was talking about the need of this traditional house and 5 rules of making this earthquake resistance houses in the hilly terrain. And the first one is settlement at right place. It means we must choose the firm ground, and ground must have some duration to get it stabilized. So foundation needs to be stabilized. And then proper layout with least opening in the house. Then proper joints in the materials. And finally, he told that load transfer, it means there should be some provision of the dissemination of the
shear forces which are caused by some natural hazards or natural calamities. That can be actually that those structures must have the ability to resist all those forces which are caused by the natural processes. And breakdown of the and actually the reason is this: we are actually breaking down the our tradition, and more dependent on the government. And finally, he told that how to way forward the traditional wisdom. Dr. Ashok Singh, he spoke about this Uttarakhand disaster, and he took the case study from Josimat, and most of the works are done by some other scientists and researchers. He pointed out many things, and also he emphasized on the having the single window for the data generated by many dissemination of the database from single window from this organization which have generated a huge database in different aspects of landslide and natural data resource management. Now the scenario is changing, and he told that role of scientific organization, educational and administration have become very significant in this regard. And then he outlined what are the challenges are before us, and there is a need to have use of database for the upliftment of society. And then he told about the liberalized geospatial data sets, and DST is responsible for managing this geospatial data set. In technical session, after lunch, Professor C.C. Pant, my senior colleague, he talked about the environmental problems of Nainital, lake, basin, and he gave this historical background of the development of this Nainital township. And almost he emphasized and concluded that whatever the rocks are present in this Nainital basin region, they are very much fragile, and very prone to natural breakdown, even at a very low energy level. And he has shown a lot of maps, and based on the previous studies from the department, our department, and his own work, and he compiled all those things. And very important aspect was the bathymetric studies, and the rate of sedimentation is very high, he concluded. And this is the time to develop, you see, new township, he emphasized, in the nearby region of the Nainital, just to accommodate not very large number of tourists, rather a small number of tourists in nearby regions, and from where we can visualize the beauty of the snow-capped hilly area of this Himalaya. Then our dynamic colleague, Professor B.S. Kotlia, he spoke about, he has done a lot of work on the paleo lakes and paleo climate, and he told about this disaster looming large of Nainital. And practically what he has studied very nicely, he told about all those aspects, and very important that a very detailed investigation of the Balianala and the ignorance by the people, or maybe the planner, whatever he has submitted these reports to the government and to other agencies, they have not taken seriously while planning or designing this township of this particularly of this Balianala and around region. And very important that removal of this green area between this from 2006 to the 2017
how the settlement is developed during this 11 years of this 11 years of duration, and a removal of the green belt, and that has caused a lot of damage to this town, beautiful town. And then Sukhatal region, he talked about the Sukhatal, which provides almost 40% of the water to this our Nainital lake, and that is almost, you see, now this earlier it was around 7 meter, you see, the water column, and now it has come to this recently, what he observed that around 50 or 56 centimeter of the water column. Then virtually Professor Anand, sorry, Professor our Dr. Anand Sharma from this IMD department, he actually emphasized on the atmosphere and the weather, and he made distinction between this climate and weather. And then further he told about the anthropogenic influences that are causing global warming that is related to climate change and Earth's troposphere. He also told, you see, warned that 5 degree C change in the temperature that may lead to the catastrophic this event. But already this our Earth has achieved 1 degree of this increase, and that is very much even vulnerable, and you see led to this vulnerability and risk has already increased, and hence it is likely to influence the human life. And he told that we have to make the society resilient, and the natural hazard should not be converted into disaster, and there is a need to develop the early warning system based on the comprehensive vulnerability analysis, high density network by developing high density network, particularly this radar network. And the very important thing is communication, so that we can inform well in time to the society about this natural hazard. And then virtually Dr. Anand K. Pandey spoke about the landslide localization in in regional landscape and shallow subsurface site response, with the implication on understanding this Josephat subsidence. And initially he started with some basic idea of the landscape erosion, and he parameterized some of the things, and then he discussed about the steady state erosion versus transient state basin. And then whatever he has and his team, along with Dr. Piyush Rautelaji, they have carried out a very extensive study in this Josephat region, and they brought out a lot of information, and they have almost close to the finding. They have come to this conclusion that there are some previous activities, natural activities, that has caused high stream power sediments, 20 times increased the power that has actually blocked or stuck the channel, and that is actually called as a landslide zone. And they also, actually he also emphasized on that it is possible to develop the early warning system of 20 minutes before the event, and that is sufficient time to control this damage. Then Dr. Tapas Ranjan Martha, he spoke about satellite data and geospatial model of landslide disaster assessment. He presented an overview of landslide in India. Then he talked about what are the factors which controls this, which cause landslides, and other factors like geological setup, anthropogenic, and then landslide. He has shown also the landslide inventory map of India, then ranking of the landslide disaster. And then further he took the case study of the Chamoli rock and glacier avalanche that occurred on 7th February 2021. And then he narrated what are the regions of landslides in permafrost regions and landslide
dammed lake in Rishiganga, then Kedarnath, Okimat, and landslide damage assessment he talked about, and then finally he just mentioned about this Balianala landslide. Then Dr. Syam Narayan Lav, he gave the fundamental and conceptual basis of natural hazards, geohazards, and then he classified this different type of geological hazard, and then impact of geohazard on human life, and what is the status of Josimat. He collected many religious aspects of the Josimat, and then major challenges in the Josimat, particularly the land subsidence, and then he provided a number of recommendations. So I thank all these speakers and distinguished guests who actively participated in this brainstorming session. And I must thank also two of my colleagues who actually also participated in this event, Dr. R.K. Sahu and Dr. Rupesh Rastogi ji, and my actually many of the you see students, they already left. I must thank them because actually they created a very good environment when before lunch, and they most of the time they were clapping in such a harmonious manner, and that actually encouraged us to speak more and more and discuss about this. So finally, I must extend my sincere thanks to this media person and also the members of the organizing committee and the HRDC, UGC HRDC, who provided a very good ambience for the successful of this event. Thank you very much.